There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been finding ways to get away, to see you again, see you again. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong, and I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been finding ways to get away, to see you. Hello everyone, hello निशांत, वेलकम टू स्ट्रीम ब्रो। पहला व्यूवर तो तू ही होता है ब्रो मेरा। लाइट नहीं थी आज, इससे थोड़ा लेट आया। अभी लाइट चले जा रही थी। अभी भी होप सो लाइट ना जाए। लाइन चले गया था क्या? लाइन okay. हेलो रौनक, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। कल आया था, लेट आया ब्रो, आया था। लाइन मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बोलना, लाइन क्या होता है यार निशान। हाँ लाइट नहीं थी। Oh my god, losses. Dot cappy. See, told you. क्या हुआ? कौन है भाई तेरा फैन? ये हम लोग खेले हैं इनके अगेंस्ट, न्यूक खेले थे इनके साथ।
कालू के साथ जिसमें तो क्लच मार रहा था। हाँ दोनों टॉक्सिक हो गए थे याद है। टीका लगाया घंटा चल ज्वाइन करेंगे। आरजी में रजिस्टर कर दिया तूने? नहीं कर दो भैया। Even Cal is hosting a tournament. हाँ वो भी कर ले। सब कर दे बैंगर सब मारेंगे। डॉज हो गया ये तो। बैक टू सिंगापुर सर्वर वाया रे केपी आ रखा। Useless, too easy. At the end of the game, he said useless, too easy. It can have a different meaning to Indian players. करेक्ट। अरे मैं रजिस्टर नहीं किया उस टूर्नी में बिकॉज मैं सोच रहा था फिफ्थ अगर निको बोल देता तो मतलब सिक्स्थ अगर निको बोल देता तो मैं उसका नाम डाल देता। तो कुछ बताया उसने? तो कुछ नहीं कह रहा है। कुछ छोड़ ना फिर से मैं पूछ नहीं रहा। I think he wants to play for a CDS team only. हाँ तो ठीक है रहना चाहिए ये कुछ। हेलो नो नेम वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रॉयज। ठीक है फिर मैं कर देता हूँ। ब्रोकन ने अपना ब्रोकन है तो सही है। हाँ और कोई नहीं है। मतलब सेवेंथ नहीं है अपने पास। सेवेंथ भी होना चाहिए ना। एवेंट आज एक बंदा है करण नाम का कोई। वो मेरे स्ट्रीम देखा था जब मैंने स्ट्रीम कर रहा था तब। तो आज स्ट्रीम कर रहा था तो? नहीं आज नहीं कभी पहले जब कर रहा था तो तब रिक्वेस्ट भेजी थी तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो फिर आज ऑफिस में था मैं तब उसने मैसेज किया कि खेलेगा एमएम। मैंने बोला नहीं ऑफिस चल रहा है। तो अभी फिर मैसेज किया खेलेगा प्ले मतलब मेरे को ऑनलाइन देखा तो मैसेज किया। तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि फेसिट कह रहा है। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि तू ऑफिस कब से जाने लग गया। बोल फिर पूछा कि एज इन मैंने पूछा एज इन। तो कह रहा है कि अरे तू ऑफिस में कब आ गया। तो मैंने बोला एज इन तो बोल रहा मतलब कितने साल का है। मैंने बोला 30। कहता है टीएफ झूठ मत बोल रहे। बोला झूठ क्यों बोलूंगा। फिर बोल रहा है तू केपीआई नहीं। क्लिक पेट हाँ तू जो स्ट्रीम कर रहा था बंदा वो हो ही नहीं सकता है। कितना मैचेस कैंसिल होते हैं कैलिविजन में? कैलिविजन नहीं था रे सिंगापुर था। मैंने बोला हाँ आई डोंट लुक माय एज। You have told this story before. You have told this story before. It happened right now. With exact words. But it happened right now. That would be some different guy. Then it must be a deja vu. Must be. See, like, I remember the exact words. See? Like I could predict what you are going to say. Literally the best player in the world. Now that's cooled off a touch.
स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं, देख यार एनआईपी हाँ चाहिए यार। क्या यार Opening. कैरी करते क्या मारा इसको ड्यूक पे You भाई। said the same exact as in last time as well. अरे आज तो रेवन भैया आ रहे हैं वापस। Raven is on a marathon now. Oh my He has god. already won 3 games in a row. Oh my god. देख रहा है निको? I mean, देख रहा है सैम? Yes. क्या देखो? This is exactly the same thing. Mm. Might have happened with me twice. But this is some new guy. He invited me. I said, office call. He said, okay. Then now he invited me. I said, face it. Maybe he's made a magic. Maybe it comes with joining Nip, but now Rain over on the other side of the Could map be thought a this was deja great vu space to be taken over. They confirmed the 4-man boost, but they disassembled just as quickly as they assemble. The fact that ZOTAC also falls. You can show him your birth certificate. No scope's gonna miss. Bro. I'm not that villa, sir. अरे भाई ब्रो ने राउंड निकाल दिया। And then he dies to the hands of Hampus. Rops shaves him off the party, falls away. तो क्यों hopeful है NIP को लेके? अरे स्टार्टिंग में अच्छा खेल रहे भी एंड में हकने लग शुरू। NIP के लिए। डुअल्स हार रहे बहुत गंदा। सैमेक्स इंग्लिश मैन साला हिंदी बोल। ऐसे हिंदी बोल वो कह रहा है यार सैम तुझे। नमस्कार एसिडिक। लॉल। तो स्ट्रीम कर रहा है क्या वाले? Yes. अरे मैं क्या देख रहा था कैल The very least found himself in the middle of them all. Everybody's hunting. कैल डैड आई वांना प्ले डॉस लास्ट मैच cause of important work. Raven. Roland with the most ridiculous first I don't know why Cal is so easy even without sound. अच्छा जी। shiver down their spines. Because of the chair, bro. They call him the best that Sweden has to offer. लॉल। I remove the chair and check. Smashes that first helmet Does it wide. feel the same? Kerrigan cooling off, and Brolin's just waiting. आधा महीने में दुनिया पलट देगा ये। They stop him. रेवन। गया तू अब मुश्किल है। अब उसको तो अगर मैचेस मिलते रहे और तू उसके ऑपोजिट गया तो फिर there is no hope. There's literally no hope. भाई अभी अभी 1100 में आ गया भाई वो। इतना क्या फीड कर दिया तुमने आज इसको? Sam, which was the tournament that you were talking about? It's by Ken. कैल। It's in Cal डिस्कॉर्ड में डाला था उसने। कैल का मैसेज है? कैल का नहीं डाइस ने डाला है। Guys, कहाँ है guys? You can also see it on Calhub chat. कैल चैट भी देख सकता है और डाइस ने हमारे ग्रुप में डाला है। Insider में? इनसाइडर में पता नहीं किसमें भी पढ़ा मैंने। General. General. I don't see. Which teams will be left for them बोलेगे जनरल में ना। to see in the flesh? We'll see. For now, कारी आ FaZe जाओ easy money. लो। सैम ने भी खेला अभी। अच्छा सैम ने जब मैसेज किया था मुझे। Yes. टीम My रावण team was perfect. The map was perfect. Still we lost somehow. I actually don't know whose shot was किसने मारा? twists with that Raven, he carried. or Brolin dropping a As usual. Like, how is that अरे the भाई same वो round स्टार्ट of हो गया CS? उसका अब भाई मैंने जो वीडियो का लिंक भेजा था कैल चैट पे वो देखा था मैंने वो रो रहा था कोई उसमें। भाई 32 मारे हैं भाई 11 डेथ में। भाई और सही में इसकी टीम ज्यादा अच्छी थी। डाइस था मुजा केआर एंड जोरो वहाँ पोकर जोजो ओन्ड शेडी। Shots into the bottom of connector. सब्स्टिट्यूट दो ही डाल सकते हैं हम। Nails it. भाई साहब तो फिर मैं किसको किसको डालूं? यूनी को डालूं या एनएचके को डालूं? Brolin gives him an opening by firing some shots. Hello? जूनी रहता ही नहीं अवेलेबल उसको डाल के करेगा क्या? एनएचके डाल दूं? हाँ स्काई को डाल दो। ठीक है। अब तो निको स्काई रिप्लाई हो नहीं कर गया, रहा। ओले हो गया, जैपर भाई हो गया, एमके हो गया। सैम हाँ सैम तो है ही। यूनिफ्रिक को कोच बना दिया मैंने। क्या है वो?
क्या मतलब? The 30-second squeeze sets itself नहीं, up. Full belt of accept कर utility लो from भाई. ZOTAC. कर लिया. A little nervous about that flank. Bye. Nothing there for the time being. Fact Kerrigan TV gets a little and bit more fact op proactive. mid. Plopsky's gonna throw util, and down he goes. The feet Brother down, versus not Raven. gonna work for Twist, but Kerrigan, ooh, he I comes don't two know, off the man. play and gives ZOTAC the chance. He gives him the choice. You can leave. और ये कह रहा नो साउंड खेल के मार रहा है बे. Fourth for FaZe. सीरियसली क्या अबे. मजाक बकचोदी कर रहा खाली. ऐसे ही बोल रहा Must है be वो. joking. No I think so. sound. स्ट्रीम तो नहीं कर रहा था ये. इतना बड़ा हो गया ये. No. Rob stays alive. I can't help but feel like Rain is stealing the show. एक तो तुम हैक करते हो, दूसरा तुम झूठ बोलते हो. छोड़ो. Taking कर his लो own ना. liberties. He's voyaging out in through the bathrooms. He's floating क्या around पासवर्ड the site. He चेंज just किया stays था मैंने alone यार, and फिर is भूल winning गया these मैं. duels. On Rain for overpass, Rain is a player फिर फेज ने कम बैक कर दिया भाई. laid the groundwork for how to be aggressive on CT क्या यार side. बोले तो Rain पासवर्ड and क्यों Kerrigan भूलवा दे will रहा all है be the मुझे blazing भाई. अबे over चल from that चने. line. Now have innovated, have developed ओ भाई क्या नेट लगा. further. यार रेन और क्या मूवमेंट भाई. The new blood gets dunked on. Rain instantly curls back up alongside Robs. The fuck. A snake pit set on the CT side of this A site. Let's see if NIP can tangle the web a little bit further. They've been doing such a good job of going unnoticed for long portions of the round. We got some unconfirmed damage, but it's just that. It might matter, but they haven't found their opponents in Rain. Brand new position. Trying to get tricky. Brokey, he We plugs did some accept a res. match, right? No. A Rico pluck कर off दे the सैम. basic connector. कैरल में गेम चल रहा है क्या? Rain Yes. gives himself a little wiggle room. Also has support from Robs. ओ भाई. Got the game. And Twists. Who got यार the game? एम्ड वाज हार रही है साली एनआईपी. Man, I swear, Rob मेरे को shoots क्यों bullets नहीं like आ it रहा है? costs $400 each. रिफ्रेश कर. Conserving them as he can. And this one, the life just kind of falls flat. Twists on the side The of fuck? smoke. Oh, finds Brolin. He could feel him. साला भी नहीं Smell होता. him. And बाप रे. FaZe gonna tie up बाप रे. 5 rounds each. ZOTAC Four again man just है, looking to अच्छा. hang on with this op. And this is a ठीक big है. question mark, I feel like, when it comes to मैं NIP's T कैप्टन side. नहीं We हूँ look ना. at Brolin's high rating. We, think मेरे of को DJL's Steam impact ID in the नहीं calls, मिल but रही मेरे. ZOTAC not always weaponized, but Yeah. clearly sharp. I mean, even these frags, man. Yeah. It's so hard to take his op away. Robs will try and succeed in doing so. Tied Yes. game as 5 hits the scoreboard for FaZe. Absolutely, uppers get exposed on T side. It is incredibly difficult to be consistent, be a two-way player on some of these maps, and T side gets harder by the day. So that will shine a light on the weaknesses of ZOTAC, but there is still so much to say once we swap over about what he can do and what we know him to do, Just two and mid edge. further what we expect Me now too. that we've seen it. Let's That story will be told in just 5 rounds, but for now, NIP will have the save and potentially allow FaZe to grab a lead. What? Man. Fast one from Rain. Finds Happus immediately. Think of that round. यार रेन तो बहुत जबरदस्त खेल रहा है यार. To the playground to वाह no. कसम. And this anti-eco falls as flat as possible. Yeah, they could have killed all 5 with how precise that shooting with those M4A1Ss. मुझे ऐसा लगता है एनआईपी के पास कोई स्टैट्स नहीं होती टी साइड. FaZe's members, their 4 players, their hot shooters are starting. We want video how Oli Counter really more plays again, CS:GO. Even than what we saw on यार Rain. तुम मैं लाइव दिखा दूँ मैं कैसे खेलता हूँ. Feel हाय comfortable with the व्हाट द quota फक. rounds that they've gotten so far. ऐसे ड्रेवन हैकर है नहीं ये ब्रो टैलेंट है इंडिया का. कोई भी चीज इतनी दिन अनडिटेक्टेड नहीं. अच्छा जी ये तो तू कुछ भी बोल रहा है सेट. They'll clock in, but will they continue to work? 4th सेकंड लैंड टूर्नामेंट में पकड़ा गया. उससे पहले वो पकड़ा भी नहीं गया था भाई. डोंट से कि इतने दिनों से पकड़ा नहीं जाता चेट. वो पकड़ा भी नहीं जाता लाइफ में कभी अगर लैंड टूर्नामेंट नहीं खेल रहा होता तो. You can't say that. मैं ये नहीं कह रहा ड्रेवन हैकर है बट An advantage for NIP, but Plopsky, he doesn't realize that door is wide open and he goes You right can't into say the anything. crosshair of Rain. Then all of a sudden the pop-up from Brolin. Oh, he's not counting that. Challenge अभी तूने बोला कि मैंने इसको लैंड में हरा के आया हूँ ऐसे. inside this position. डैम नाइस रेन. Nope. It was the bottom player to take out Plopsky. He was looking the other direction. गाइस लाइक कर दो यार. लाइक में कौन जैसे कि नो वाचिंग या लाइक्स नहीं है. कम ऑन. मेरा स्टीम प्रोफाइल कोई निकाल के दे देगा क्या? But how about this? What if Robs comes up?
thinks maybe I'll he do can it. surprise them, Sam, and nobody really thanks. knows what's on the other side of that ladder. There is a chance he goes up. Now, he has a rotation to go back, of course, through the stairs, but there's no one in the B site at the moment here for FaZe Clan. I'll send Roki, you he instant could get message. lurked upon as well. Yeah, Will he be thanks. aware of the threat that's oncoming? Roki doubles back, gonna play this one a little safer. Now Esatag's gonna be calling to his two other teammates, the Thank you, other Sam. cohort of NIP on the other end of the map. Well, thing is, I mean, it looks like, okay, we got some utility now here Shishir dot coming towards A. These Shekhar. are the ones who are blind here. Robs is making an 67 executive decision to come back to this site. It looks like this little bit of utility is going to User do ID. what they want. Get this Ole. rotation going. 15 क्या seconds, and the plan is about to अपना be dived. And profile link Esatag, दो like ना. ships in the night, will pass by Broky. क्या बता Steam Bomb profile plant link. off of it. Rob's still सैम मेरा भी दे दे यार He's still gonna have this pinch on the retake. The CTs aren't able to collect themselves. कुछ बता नहीं सकते As Esatag peeks into those tunnels and कुछ काम kills नहीं him करता ये with लड़का. absolutely no chance at that one. And with it, it feels like Rob's, that's the बट lightning वही round ऐसे gone चीज for कैसे FaZe मिलेंगे as नियर टू NIP इम्पॉसिबल will make their way through. अबे Think उसने about पॉसिबल किया है तो और कोई Corsair पॉसिबल नहीं कर सकते यार almost दिस finding इज them with their backs It turned. comes He's down defending to कि ये तो ये बात होगी यार comes down to him having his knife कि out किसी in के that बस का नहीं है so आगे many चीट करना chances for them to rotate back. अबे वो भी तो अपना भी दे देना सैम. वो भी जब उसको रिपोर्ट होती थी उसके लिए भी यही वॉच होती थी यार कि नहीं इज वेरी It would गुड have been more of a fair fight. But कितने again, रिपोर्ट खाया था I वो want भी to point out, they're opting to push Monster so often that it demands of the T side to dedicate a solo player to यार इस लड़के के इसमें मोबाइल नंबर क्या दूं मैं? इसके किस पास तो नंबर मोबाइल ही नहीं है. MK के एमके पास. का Just give a Um, fake mobile number. You can also give one of your alternate numbers if you want. दो रे यार के पीछे पर बहुत नंबर हाँ ना, मैं तो रिचार्ज शॉप चलाता हूँ. अबे किसी का भी दे दे भाई घर पे फोर सेकंड कौन सा चीज यूज कर रहा था यार वो Guys, so noob. फेस वाला Grey. In their lobbies. We'll see about that in game. How did Okay. you take it out? Sam? From your Steam profile. Now there is an option to enable the links. How? That's what. Also, if you open it on Steam overlay, it will automatically open the links. हाँ, No Steam need. over है ना. That is Yeah, nice. Steam over. Oi! How is this one not playing on सब opposite कुछ छेद direction? दिया मैंने How did we win this? That's why. Ganga moving in the opposite direction. Don't switch, Sam. Switch, Sam. Are we going long or are we taking short? We should go short. Hello guys. Oh shit, I don't have in-game bind. Me neither. Suicide one. Saw me LT. I came back. Two suicide. बीबी help Window. अच्छा ना नाइस क्या चटका मारा मैंने पहले वाले को मिस ट्रिपल किल बाय ट्वीट्स ओह They are. इसको अपडेट करते रहना यार Hello guys. My armor is sketched. Hello. Let's push mid only. Come with me. एक मेरा Oh shit. Bug. Then KP come. चल तीनों चलते हैं
pushing mid. Still to the long. LT देखना तुम्हारा. they One for long. spot. Keep watching LT. Okay, I'm going back now. One long peek me. एक कार आ गया. Low HP. Car dead. कार डेड. Last was long. Last was long. He could have a farmers. थोड़ा अजीब खेल रहे हैं यार. Sam can drop. I'm pushing again. हाँ फिर से तीनों चलते हैं. Don't have molly. मैं डाल ये दूँगा. pushing ये में केपी डाल दिया. केपी मॉली डाल दिया लेफ्ट साइड. अरे Smoke failed. अरे यार तुम कहाँ देख रहे थे? मुझे तुम्हारी तरफ से मार गया. मेरे ब्लॉक हो रहा था, मैं विजन ही नहीं आ रहा था. Only .exe चाहिए. If he is sitting just doing his possibility, his cheat must be really good and get frequent place to stay undirected. Yes, that's true. But कौन है जज करने वाले bro? Window outside care. Car inside. Nice round bro. हाँ यार मुझे अपडेट देते रहना है इसको. अबे RTT फेज. क्या हो रहा है? टक ही नहीं हो रहा है. Drop up get you. Thank you. You can take now. किसी बंदे ने आज गलती से ये Come be someone. लॉन्ग आ रहे लॉन्ग जला ऐसा तो क्लोज है. मारा. क्या मारा स्मोक में मैंने उसको. could be blue box. Sure. Checking blue box. स्मोक डालूंगा डोर का बताना. नहीं है, नहीं डाल दे. डाल दिया. Top mid. एक ही पड़ गया यहाँ अगर चाहिए तो. ये लॉन्ग क्या रहा. अल्टी राइट. Should be outside B. न्यू टनल चेक कर रहा था आउटसाइड भी नहीं होगा. Can flash you in. Yes. Can you drop? I can W actually. More. No. It's okay. Take long yellow with orange. I'll flash. I'll take B. Losses आ रहे हैं. मेरे भी यार. मेरा मॉली फेल हो गया. I did not see him anywhere. Looking tunnels and holding. Top mid. तेरे पास है क्या? क्या लॉस आ रहे हैं मेरे साले 6. शॉट है ना तू? मैं लॉन्ग हूँ. I'm watching shot. येलो कौन है? Two I made. येलो वो है. 1B UT. तो वाला लॉस भाई. लॉन्ग 2 Right, 2 I don't know now. 3 लॉन्ग 3 I लॉन्ग ducked for a while. 3 लॉन्ग. Yeah, I'll watch B. Hey, shot. शॉट 2 One guy should be mid. Okay. बहुत गंदे लॉस आ रहे हैं. Hey, side. One of you can push from now.
Ramp one, ramp one. He flashed me, bro. Long one. And उनका फ्लैश डॉज क्या है, मेरे 16 लॉस पड़ गए वहाँ. क्या हो रहा है? 20 लॉस आ रहे हैं सर्वर में मेरे. let's go a shot. तू एक्सेल यूज कर रहा है? Can you push either blue? हाँ हाँ. लगेगी गोलियां यार. ये सुसाइड वन, हाइब्रिड वन. तू क्या था? M4. Two है. Oppenheimer still. राइट साइड, राइट साइड. Eco this. Take shot again. They flash now. Exhaust. 2 flashes. One tunnel. One LT. Dead. Nice one. One mid. Yeah, they're coming, they're coming. Oh. We could have stayed, bro. A shot in. Pretty good. City. लॉन्ग वाला वेट कर रहा है. ऐसे भागा नहीं है. पैंट उतार दी हो इसने. Opponent is playing like bots. Like easy. अबे मुझे साउंड भी नहीं आ रहा है. कोई चलाना और मिड पुश मत करना. I'll drop one. Long clear. LT1. Yes. एक शॉट आ सकते हैं. फेल किया सबको. एक शॉट इंटर. 2 एक शॉट. Long flash. दो शॉट. Scan jump city, bro. Fight technique. A shot in. One a shot in. Right, one more A shot. A shot. B. I'll come from there. I had kit. I have kit. डोर क्लोज है. Do you have flash? नहीं कुछ नहीं है. प्लेटफॉर्म में ऊपर है. Okay. If you swing, I'll swing with you. रेडी? मैं स्विंग कर रहा हूँ. 1, 2, 3. क्या था एक. 90 damage था यार ये भी. मर जाता बेचारा. वॉच पीजीएल पेजेस. ओले कभी कुछ और गेम खेल लिया कर. मैं तो बोर हो गया CSGO से. एक हार एक जीतो एक हार. ये भी होता है मिशन लॉल. कॉपीराइट तो नहीं यार. कॉपीराइट ऐसा आ तो नहीं रहा. B is looking clear. Shot was B is clear. long. 2 high mid. One left, one right. लॉन्ग पुश्ड.
99 in 4. Lol. I'm getting lucky. It is. मिड लगाता हूँ, आप तो ए लगा ले. All of it. Go long. Go long, yellow. With Hold this possession. अरे बंदा. अरे बाप रे. कुछ साइड ऊपर ना. They use car flash. Be careful. Flashbang. Car flash. They were already in. No, this guy flashed. Throwing a grenade. Bro, why would he flash like that? What is that? Shot कोई नहीं है. Don't leave B. Mid, mid. Two mid, two high mid. Going a shot. Tag. Both a shot. Last tag. Last tag. This guy was also tagged. They're all getting tagged. Yellow. Should not have splashed, YouTube bro. Twitch doesn't give copyright. YouTube gives copyright. What have anyone done to receive a copyright? अरे मैंने Twitch का करा था तो copyright नहीं पड़ेगा. मैं दे सकता, रुक. डाला मैंने M4 डाली. M4 डाली है Sam. I'll get it later. Throwing flashbang. Incendiary fire. Flash again. B. Smoke. I smoke for you. Why you playing from window? Throwing smoke. LTI. Flashbang. Where's the M4? मेरी M4 सिटी पे ही थी. Smoke. एक Xbox है. Xbox jumping around. One shot. Might jump CT, might jump. We lost the round because of blue. Because it did not. We had one off the day on the round. Mid to B. B. One more. Both tunnel. Even you can't play most songs on YouTube because of copyright. Yes. Copyright strike पड़ेगा तो भाई मैं 3 दिन तक stream, एक हफ्ता आएगा stream नहीं कर Both will पाऊँगा. fight with confidence. He pushed the smoke. So far. अरे Yes, so bad. नावी का स्टिकर स्कोप में डाला था ना कंटेनमेंट ब्रिज में. हाँ शायद. It's easy to lose to names. Echo this one. A clear gun 3 man. मैं पुश करूँ मैं मिड. Laying down smoke. Long flashes. यार बताओ ये लॉस तो मैं हेड पड़ रहा उसको. एक हाई मिड आया तो साइड पे ऑपर है. Kill this. Flashbang. Throwing fire. आया बाहर निकला. लॉन्ग पुशिंग. कार डेड. लास्ट लॉन्ग है. लॉसेस आ रहे हैं बहुत यार. वो लग ही नहीं रहे शॉट्स जैसे रजिस्टर होनी चाहिए. हनी के बॉल लॉन्ग पे. Easy peasy lemon squeezy. बेचारा ओले बेवजह मर गया. अबे मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ. मुझे साउंड ही नहीं आ रहा. आप देना मुझे. He had the info. Side spotted करो. मैंने ही किया था. रेड शॉट नहीं लग रहे कह रहा हूँ. 16 लॉस है. Get this done. Incendiary out. Throwing fire. Flashbang. Throwing smoke. ये शॉट. I made him.
आया मिड टू बी वन Mid out. 2 mid, 1 back doors. Pokalu. Buy your KP. I don't have molly. I'll give shot. Let's get this done. Throwing fire. एक हाई मिड एक सुसाइड Laying down smoke. सुसाइड है हाई मिड लेफ्ट साइड वन लॉल क्या मारा Mid. एक शॉट वन मोर I mid. One shot. कोई स्कोर बताओ यार मुझे क्या चल रहा है Shot Shot hard. crossing. They can jump. Down. अरे हक दिया, मैं भी हक दिया. ये पांच HP है. They're lucky day. 5 HP, 6 HP. एल्टी जा रहा हूँ मैं शॉट का Push मेरा UPI शॉट again. कनेक्ट ही नहीं हुआ. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Said जंपिंग करके गया वो Throwing flashbang. Throwing flashbang. hello. अरे Ding, अरे ding through wall. No. Grenade out. Laying down smoke. अरे यार इनको नहीं मजा रहा Come mid right side. bomb drop B bro. I hate it Cannot do shit. ना हो पाई भाई. If you win this round, you'll win the game. साउंड बताना मुझे ईशा आठ एचपी बता है Again. Good abuse. लेकिन होली कैल के बिना कंटेंट नहीं मिलता हमें Oh, they have 5. I knew that So it's feeling different when shooting at them. Let's do LT fast get you and kill one. We must move. Eagle is out. Mid one. Bullet to come in. एक प्लेटफॉर्म है दो बी के अंदर आ गए तो 2B, you can come here shot. ये चले जाओ Push. Push full line. Gush, Arey Ram guy yaar. is ding. Ram guy is 90. One CT. I'm One city. one mid door coming a shot one guy coming a shot Coming shot. Man, तेरे For next time. Full equal by next. बहुत अनलकी हैं हम लोग यार. अगर ऐसे हारते रहे. Let's go make a mess. Long volley. मिड फ्लैश दूंगा जाओ They are blocking. मिड फ्लैश डाला Flashbang.
आइडिया check A long. Wait. Yes, we'll take you. नहीं spawn है नहीं. You have spawn KP, go. You have all the flashes though. I'll Drop drop the them. We flash. shall rule today. Smoke. I'm throwing a flashback. अबे तेरे साथ कोई नहीं गया. I'm throwing a flashback. Flash left. I'm throwing smoke. One pit. Very low. One pit. Full lane. Half wall. Burn. One long wall, one pit. One CT. Too long. I did not like this, bro. दो long थे बे. Headshot. अरे यार टाइमिंग बताओ इनके एसएमजी लग रही है. पाँच पिंग है ना. 41 damage. They're only deleting only. 49. They're taking a lot of time to kill the others. नहीं मेरे को भी डिलीट किया भाई. मेरे को तो पहले बहुत डैमेज कर दिया था. डिलीट नहीं. Let's go ruin someone's day. लेट का फ्लैश देना मुझे के पहले. मेरे बोलते डाल देना. Two guys playing B. Double for it. डाल 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 डाल. डाल दिया. नहीं हो रहा भाई मेरे से. राइट साइड है एक. रेड है वो. अच्छा दोनों आ गए. ये लो. Shot. वो शॉट है रे. वन इज लो ये लॉन्ग. Smoke. बॉम्ब उनके पास तो है नहीं. लॉस के जैसे ना लो हो जाता हूँ मैं बहुत ज़्यादा. One guy was B. रजिस्टर नहीं होती फिर गोली. और ऊपर से एजी ऊपर से लॉस. टू लॉन्ग स्टिल. Reloading. टू लॉन्ग ओके. Could be C. C4 के साथ होने चाहिए. बेटा मर गया रेड वाला. This guy is also red. Long, right side. किसी को ले सकते थे. वो पता नहीं था उसको. I'm buying off. मुझे लॉन्ग फ्लैश दो. मैं देता हूँ. We can still win this. मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मर Let's कैसे रहे. bring some pain. Smoke. Flashback. Throwing a flashback. Help him bro. कोई जरूरत नहीं यार. हे भगवान. पिट 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 पिट. Smoking. Throwing fire. Two guys shot. You guys have smoke? I have Only yellow has smoke. Can you do the crossing? No avant-garde though. Smoke. Molly side. Let's go. Dead trap. watching shot. Plant. One was city. Plant bro. I am blessed. One shot. One shot. Shot expect कर लिया यार मुझे. Oh, you killed shot. एलिवेटर लास्ट. Switching ramp. नाइस वन.
फिर से लॉन्ग पे Don't bike it. फ्लैशेस की बरसाते करो यार, लॉन्ग पे 2 फ्लैश के बाद खत्म हो जाता है हमारा। Go, go, go! I'm throwing smoke. Throwing a flashbang. I'm throwing flashbang. Flashbang. Mid push. Yeah. Mid all. Mid all. Upper go. Fix by फंस गया। You have smoke, use smoke. I'm throwing smoke. Device upper. Watch out. Short one. Watch long, watch long, watch long. Watch long, bro. He has op. Upper long. एक ही बचा है। अच्छा क्या? Long clear. He will save. मिड पे मॉली कर दे सैम कूदते ही। ऑपर है वो पिक कर रहा था। अच्छा तो कोई और And you wouldn't believe what happened. Like I अंदर won't be able to explain it. Otherwise, I would have killed them without getting any damage. हाँ सेम सेम। अरे मेरा लॉन्ग का स्पॉन ही आ रहा है आज, लॉन्ग ही दो। Thank you. Drop, guys. कहाँ है तू? दे दिया तुझे? कर दिया चल तो लॉन्ग से। So that we may be free. They can buy. Smoke. Smoke. Throwing a flashbang. Flashbang out. Throwing a flashbang. I'm just behind. Flash now. पैसे नहीं आते यार, पिट पिट पिट। अरे वो डालते रहे रे। Oh god. जाते हैं तो तेरा फ्लैश रुक जाएगा ना ओले। Don't take long, Ole. We'll either take late long or go a shot. These guys are not flashing. One side. Yeah, missed it. Smoke. Smoke mid to B, smoke mid to B. Smoke. Right up. Okay, he does. City off. One shot. Send. Take late long, Ole. It will be easy. यूजलेस फ्लैशेस आ रहे बे, वन भी नहीं है अभी तो। अबे हमारे फ्लैशेस खत्म हो जाते हैं। हेलो ब्रो। तब तक तो ब्लू बॉक्स पहुंच रहा है। उसके बाद कोई फ्लैश लेट है ही नहीं, तो कैसे फ्लैश लेट मिलेगा? भी नहीं है और कोई आ भी नहीं रहा है बे। We'll take late हाँ long, तो वो guys. तो स्मोक करके And then गया tap ही for नहीं। shot. शाम तक Hold right here. Get ready with car flash. I'm Get ready. ready with car. Flash now. Flashing. Dead. एक और है लेफ्ट साइड। Dead. नाइस शॉट। Don't have smoke. One B side. Just one B. Smoke, guys. I'm throwing I smoke. don't have. Flash side. Yeah. Never. ब्रो Side, side, side. अबे यार क्या है बताओ? क्या हुआ लॉन्ग लेने का फायदा? One A, one B. लग रही है यार। अरे कार पे रखा। निकाल रहेगा। The other day rushed B all by himself. Plus B. अच्छा लग गया। And I wants us to rush B now. Let's go rush B. स्मोक नहीं है मेरे पास।
मर जाएगा यार। क्या पे अपना एक फ्लैश ड्रॉप कर नीचे। Do a self flash. डाल जा जा। अरे वो डाल, अरे रे गेफी रुकना नहीं था मैंने रे। बोला स्मोक नहीं है। वो डाल तो रहा था, सैम ने बोला तो स्मोक लिया। कौन बोला? सैम? हाँ मैंने नहीं सुना सैम बोला। Time, there has been space created. We do I'll at go least for have dinner now. some अभी control थोड़े में over मेरा the लॉस आ ball. रहा है It is अभी। left so far back. I mean, FaZe are just wondering how do And I we will get play this kill to after make the dinner. execute possible. This is it, I But think, with NIP you. have not given them an opportunity. Yes, yes. Good night. Bye. Bye bye. क्या एड़ाते रहते हैं यार ये। पांचवा कौन है अपना? इनके ना। एनआईपी जीती आ रही, क्या हुआ? हार गई होगी। एनआईपी जीत गई यार सेकंड में। Had all the tools, now the execution. They're not scared of the crowd. They are delivering. What a monster map. अबे that was ट्विच for से them. कॉपीराइट पढ़ See सकता है as क्या? he मैंने तो played इतने बार प्ले किया, वैसे अभी तक phenomenal. कॉपीराइट That नहीं was पढ़ा। just beautiful from NIP. And there's so many good things to say about Inferno when we get there. And इन्फर्नो में I don't know दोनों what टीम else to अच्छी say. है। I mean, that was quality. That was quality, and there was a chance for Nib. Chance. They grabbed it and they pushed it forward. Inferno to separate two great teams. Isn't that how every major series should go? Absolutely. We'll be back soon enough, folks, because we've got Inferno up next. Inferno is undoubtedly the perfect third map, deciding map coming into this series, but Overpass man लंगोटी online है क्या? managed to inch No that one idea. out. A first for Hampus' squad, actually managing to seal a map at a major playoffs, and that's what I love to see coming out of NIP. We were kind of doubting लंगोटी maybe coming boy. off of Nuke. Is नाम their तो lack of देख confidence going लंगोटी to affect boy. them? No, they come into this one fighting. For the entire squad, this is the first map they have ever won in a playoff of a major. This is the first map they have ever won बहुत in a मेहनत playoff of a करवाते major. हैं। Even Rez, who had been there before, didn't manage. Broken नहीं दिया ना? Angrily, and then he refollowed. Listen, Sabs, it's risky. It's risky. The last Inferno, the last ये लोग भी तो स्ट्रीम कर ही रहे हैं। I don't know, नहीं पढ़ना I told चाहिए। you Brolan was a big game player, because he really stepped up when they really needed him this game. He got a lot of देखते मैच। impact. He was अब रिस्क ले लेते, देखा जाएगा। बैन पड़ा तो He started a little bit slow, बैन जो कह रहा but हूँ। he really got there in the end. Copyright. I've seen so many overpasses from him. पहला ही होगा मेरा, एक स्ट्राइक पड़ा था पहले मुझे एक मैच के लिए, बट फिर वो थोड़ा ऐसा हो गया शायद। आई होप ना पड़े यार। गया मेरा डायमंड पिन। डायमंड पिन गया मतलब? भाई आई एम एनआईपी फैन। जब से फॉरेस्ट लोग थे इसमें, मैं चाहता हूँ एनआईपी जीते। Because there were a few rounds just before NIP pulled ahead and got into the driver's seat, where Hampus wanted to play a very passive game, very passive defense. ब्रोलन ने छेद दिया भाई ओवर पास में। Knowing what's going to be thrown at you. And this is where you have so much pressure as an individual. You can get just caught off guard. And that happened to Brolan a couple of times. But he saved NIP in a bunch of those. And it's this adaptations we were talking about being so instrumental for both sides of the equation. You know, we saw FaZe having some success, taking towards those A hits, then NIP adapting, and I feel like Brolan was a key instrumental part of one of those, as Maniac just mentioned, the multi-frag ability that he was able to get from some really, really cheeky positions. Yeah, and it's so hard when you play like the A side the way that they do. They basically just saved utility. They weren't overpeaking. The new Brokey had the angle for the jump spot. And it's so risky, and it's not easy to be in a position like that and just play basically without information, and you know your rotate's gonna be late, and when that execute and push comes, it is now or never. You have to find the kill. If one guy dies there first on the A side, the round is over. It's just done.
Tees have that, and it's so hard to retake A site. Well, let's take a look at one particular, and we've got round 17 to put under the spotlight, where we see Hampus making a bit of a hero play, backed up, of course, by Bro. Prefacing what Hampus was about to do in that CT half. Hero play from Hampus. Look, force buy from NIP, clever boost with the M4 on the top of Broland. Got 1 kill, but then the trades come in fast. Because they don't have that deep information we were talking about, this should be a T round. You can see how they constrict, but Hampus with the quick deagle shot puts 2 down and saves NIP. This round tells the story of what was to come. A defense that sometimes Shashank Shikhar. Here it was Hampus, the man went on with 30 kills. 30 यार इसका email ID क्या था How many रुका times in the last 5 to 6 rounds he had the perfect read. He was in position. He bails them out of round 27 when he rotates CT spawn. He was SS058955 है शायद पता नहीं. Huge scout for Hampus. I also want to give a little bit of credit for Carrigan and his अरे मैं team कौन सा because skill देखता हूँ. they actually utilized a round where they basically faked the default and went for that contact monster play. Shashank Sheikh. It's kind of giving that feeling of like safety to the NIP players. Okay, they're just playing a default. Let's just calm it down. And they got caught off guard, and that's what Carrigan is so good. I thought it was over by then. I know. But NIP pulled it back. They with that brawl on play that you just explained, Sky का number दे दूँ? which was huge for them winning this map. What would you say was kind of the most instrumental factor then of NIP being able to close this one out? Because we saw some incredible adaptations coming out from Carrigan on his side of FaZe as well. What do you think was the key for NIP to really be unlocking this map? I think very funnily enough they started extremely ID fast. They saved themselves a couple of rounds, but I think they realized अब पूछ क्या कह रहा था तुझे भेजना है स्काई का. it wasn't going to be enough. SHA NKK SHA I think Roland did it as well. Got that kill. क्या बोल गया तू? Sometimes a bit forward. भेज रहा हूँ तुझे लोग. Long A side with the AWP, you had to punish Kerrigan. You had to close the door on him. And again, I have to mention Roland on the A side, Hampus on the rotate. These two 58 kills together. Yes, game ID. Much further than that. No, I think it's a great call by NIP because they were struggling. They were Sky का है SS058955 Discord. Fell back and let FaZe execute because we have to remember FaZe is an incredibly skilled team. And it kind of negates that skill a little bit. Email ID check कर लेना उसके अलग है थोड़ी. Let a team execute. They have to run forward. They don't have that, you know, kind of prowling ability to get picks and find the duels that they need. So I thought that was a great adjustment from NIP, and we will see how they adjust on Inferno. Well, as all perfect series, it does come down to end on Inferno, the third and final deciding. अरे यार बहुत मुश्किल होता है ये मॉर्फिन मार रहा है भाई मुझे. स्क्वाड आईडी भी नहीं डाला मैंने सैम. भाई क्या से? आलसी आदमी. मुझे मारेगा तू? कल का प्लेयर. लाइक क्यों स्ट्रीम निकोगे? कल मतलब कैल. क्या? चश्मा लगा के खेल रहा है तो. बैड निको है क्या आज? अरे ये बॉट का बच्चा भागी जा रहा है. बैड निको है आज. इन्फर्नो फेसलैंड जीते भगवान लैग भी होएगा. इस चीज कुछ नया निकाला है इसने. मेरा थोड़ा इंटरनेट गड़बड़ चल रहा है आजकल. बैड निको. आज मेरा नया राउटर भी लगा है. बट फिर भी ये इंटरनेट. ओह अरे वाओ भाई कंट्री में इंडिया सर्च करना पड़ रहा है. अच्छा मुझे अब लगा कि इतना खुश क्यों हो रहा है. क्या हुआ? दूसरे को लिखता तूने केपी को कंफर्म क्यों नहीं किया है अभी तक. हैम्पस गाइस 1 बुलेट. चिल लेना मत पूछ अब भर दिया मैंने. क्या लिखा तूने? एनएचके का भर दिया ना. अरे वो नहीं वैसे पूछ रहा हूँ. क्या करेगा पूछ के छोड़ना भाई. जानना है मुझे. बस एक बॉस्टन मेजर जैसा सीन ना हो जाए. कैरिगन जा रोएगा घर बैठ के. बड़े प्लेयर हैं यार. भगवान फीसलैंड को टू कॉम्बिनेशन करवा दो. कल कितने बजे मैच है? का? इजी डिलीटेड. किसका मैच है कल? कल है ना वो टूर. अरे यार ये घटिया. वो कौन सी टूर्नी है? तूने केपी को खेलने का कंफर्म क्यों नहीं किया? ब्रो मैं भूल गया यार. मुझे याद नहीं था यार. बोले सच बताऊं तो मैंने दिन में मैसेज पढ़ा था. कुछ नहीं बोले. मैं खुद भूल गया और मुझे पता भी नहीं मैं खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा. सच बताऊं तो ऑर्गेनाइजर का वैलिडेशन. अच्छा हां सबके जाएंगे. गाइस लैगी तो नहीं हो रहा. लैगी बुर्गी लाई गेमर्स. तू बुर्गी रे. गो चेक हिज वीडियो. किसकी वीडियो भाई?
हां चिल्लो हाँ लाई जाके गेमर्स मेरी में वीडियो हूँ। गाइस लैग तो नहीं हो रहा? मैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन करूं? आने दे रहा है, कह रहा है पता नहीं खेल पाऊंगा नहीं। मैंने कहा अबे ना है ना, मैंने कहा पॉलिटिक्स आंसर मत दे मुझे। क्या बोल रहा है? कह रहा अरे मैं भूल गया था, बस और थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है मेरा खेलना। मैंने कहा सीधा ना बोलना पे ये पॉलिटिक्स आंसर क्यों दे रहा है मुझे। भयंकर पॉटिंग का सर्वर। एयरटेल का इंटरनेट पता नहीं क्या हो गया, कितना खराब क्यों हो गया? फनी। हम दोनों का सिंगल हैंडेडली इनको खोलना पड़ेगा यार। क्या हो गया? अच्छा अभी ब्रेक है क्या? तू कौन सा मैच है कह रहा, बता दे भाई, मेरा कल फिर रिहर्सल भी है। कैल एक्स गेमर्स विदाउट बॉर्डर्स बता रहा हूँ। कल है क्या वो? राउंड विल स्टार्ट एट 10:30 GMT कल। कल है क्या? यस 10:30 मतलब रात को, सुबह? अरे रीजन सच में नहीं ऐसी पता है। था मुझे तो सर्वर याद नहीं रहा कि मुझे बताना भी है। और दूसरी कल रात को तो भाई, क्या रेजोल्यूशन रेशियो कल नहीं लगेगा? मतलब एक्सक्लेमेशन परसों रेशियो रात को 10:30 बजे। हम्म, परसों रात को 10:30 बजे। परसों है ना? रात को 10:30 बजे? यस भाई जी जी। एक्सक्लेमेशन रेशियो क्यों टाइप क्या? मैं नहीं हूँ, लैग का कुछ बता देना। हां थोड़ा सा मेरा लग कहाँ रहा है है तू? मुझे लैग हो रहा मेरा शो है। है। गाइस क्या करने का है जल्दी बोलो। तो मेरा लॉस 21 तारीख को। हाँ परसों परसों। कहाँ अरे शो है AFK हो भाई? गया यार अपना बंदा। यहीं लोकल में, देहरादून में ही है। ये हरवाने के लिए आया लग रहा है हमको। कितने बजे? हम लोग अबे तो चले क्यों जाएंगे। रजिस्टर कर रहे हैं? ये लेफ्ट साइड परसों तो मुश्किल है, परसों तो कंफर्म शो है। क्यों रजिस्टर अरे कर रहे मिडिल। हैं वही तो अरे पूछ मेरे रहा हूँ ऑरेंज मैं। कहाँ था? रहने दे उसका, रहने दे कैल वाले का। अरे यार हट बॉट का बच्चा पीछे आ गया। और क्या ही क्यों बोलूं मैं ब्रोकन इसको? है तो? रिव्यू नहीं देखा? अरे तो देखना। अरे देखूंगा अब यार। अभी अब मुझे तो अपने क्या गेम हो पे गया, एक मैच ना हुआ तो। और क्या पता मेरा शो जल्दी खत्म हुआ तो मैं भग के आ जाऊंगा। अरे वो घूबे के चक्कर में हार गया है। फालतू में चुप चलेगा मैं इसके भगता साथ होता आया ही नहीं। भर दे, नहीं खेले तो नहीं खेले, वॉक ओवर मिल जाएगा अच्छी टीम को कोई। गोभी कहीं का। साला इन लोग के साथ भी खेलना छोड़ दिया, बुलाते नहीं है। और एक दिन हरा दिया इतना गंदा कि बुलाते नहीं, जो कर लोग। जोकर को हरा दिया इसलिए नहीं बुलाते? हाँ जोकर लोग के साथ खेल रहा था ना, फिर उन लोग अच्छा को छोड़ा और फिर सोलो क्यों किया और वो लोग मिल गए। करने दो सो हम और स्क्रीन फिर पिक मैं कर रहे जीत हैं गया। साथ में। तो स्क्रीन मिल गई होगा आदमी। फिर वो लोग बुलाते नहीं अब। तो फिर लेवल 5 गिर गया? लेवल 5 नहीं नहीं, तो फिर खैर सर्च कर ले। पहले का नहीं भाई, पागल है क्या? छी जहर जगह है कैल, तुम पियो जहर। एक बनाना हाफ HP। तुम्हारा पीना बनता है, मेरा ना कोई सर है ना पैर है। बनाना मिडिल। कह रहे ना पहला यार मतलब बच गया यार ये। आई मीन मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनता। इस लैगी तो लेकिन नहीं हो रहा। रात को कौन सब लेता है बेकार गेमिंग लगी है। टूर्नामेंट? जी यार वही ना, एक कल है नेक्स्ट 27 को है। क्या घटिया सर्वर है। एक कल है, क्या है अनिकेश? क्या करने का इच। बैड निको अपन जाता है खुल कर आता है ऐप्स पे। कौन आता है इस नाम बैड बताना निको उसका? का स्ट्रीम देखेंगे यार। डिलीट होने आएगा और क्या। रेवन पिछला गेम भी जीत गया, देखे थे। ऑफ कोर्स। अबे अनस्टॉपेबल स्ट्रीक चलेगी अब। निको रेवन की टीम में है। निको रेवन की तभी तो खुश हो रहा है। नहीं नहीं यार, वुल भी जीता है, क्या बात कर रहा है, स्टिक टूट गई उसकी। गाइस एक साइड पे है और एक पिट पे है। वन साइड वन पिट। 20 मारा रेवन ने। वो भी छीट ही रहा है भाई आजकल, वो भी बहुत मार रहा है। वन पिट वन साइड। कौन? वुल्वी की टीम भी अच्छी थी, वुल्वी, येलो फ्लैश, ब्रॉक, स्ट्रेंजर, सारे अच्छे थे। डेड। रेवन की टीम भी अच्छा ठीक खेल थी। रहा है यार, निको अच्छा खेलने लगा है। निको अच्छा ही खेल रहा है भाई, पर वही है जब तक स्ट्रीम करेगा लॉस ही खेलेगा। वहां से फ्लैश आया था उसके लिए। नाइस रन गाइस। जब ये स्ट्रीम करता है मैं उसको कैल में लेता ही नहीं हूँ। डोंट थ्रो दिस अराउंड गाइस।
गाइस एंट्री देख रहे हो? क्यों जा रहे हो? टूर्नामेंट में तो बहुत अच्छा और खेला कब था लाते इसने हैं भगोड़े? पीस की टीम से। सर ऐसा कैसे राउंड दिलवा रहे हो यार? अभी अगर मैं मर जाता तो वो तो अलग। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। गाइस क्लच मिनिस्टर को देख लो, एक वर्किंग लिंक दे। इन्फिनिट गॉड ऑफ वॉर कहाँ से डाउनलोड करूँ? ब्रो मैंने तो स्टीम वाला खेला है भाई। ब्रो आई सॉ योर वीडियो ऑफ योर्स, आई एंजॉय ऑफ यू। थैंक यू यार, तो कितने अच्छे बच्चे हो। जब मर रहा तभी बोलूंगा ना। पहले भी दे रहा था वो। मैच स्टार्ट होने वाला है भाई। मत हो जाओ यार स्टार्टिंग में। भाई बैन ना पड़े मुझे, बस कॉपीराइट ना पड़े। एपस केयरफुल गाइस। टूर्नामेंट की बात कर रहा था एक कल है, नेक्स्ट 27 का है और नेक्स्ट शायद 3 को है। अबे कल तो नहीं कह रहा है, ये तो परसों कह रहा है केपी। क्या केपी कल है परसों है भाई? परसों ये तो कल ही कह रहा है अनिकेश। कौन? अनिकेश पॉल देख ले अपने उसमें तेरे क्या चैट तेरे में? प्रोफाइल में भी आ गया होगा। प्रोफाइल में जा, टूर्नामेंट्स वाले सेक्शन में, अब उसके नीचे आता है टूर्नामेंट। अच्छा मेरे टूर्नामेंट में देख गैलेक्स गेमर्स विदाउट बॉर्डर आ रहा होगा, देख ले वहाँ राइट साइड इन्फो होगा। टूर्नामेंट स्टार्ट इन 1 day 10 hours 47 minutes सैटरडे किस 9:30 भाई जी। 9:30 टूर्नामेंट स्टार्ट है, लेट वीटो कर सकते हैं 5-5 मिनट। देख 11 सवा 11 तक तू आ पाएगा तो। अभी तो ये सोचना पार्टी में हूँ, वहाँ मैं शो करूँगा, पता नहीं शो भी पता नहीं कितने बजे स्टार्ट होगा। निको का नेट गया लॉल। वही मैं सोचूं इसका आवाज क्यों बंद हो गया। हेलो लैग टू गाइस। इसका तो एयरटेल ही है, इसका एयरटेल ऐसे क्यों चल रहा है? उसका स्ट्रीम चल रहा है। हेलो मैं लैग दूं। हेलो आवाज आ रही है गाइस? अरे यार बायस पीरियड खत्म हो गया भाई। वगुबा मार रहा है भाई, वगुबा। इंटरनेट ने दुखी कर रखा है। क्या मैं वैसे लो हूं, मुझे ट्रेड कर सकते तो करो। तेरे को पीछे वहां बिहाइंड बॉडी आर्मर है किसी पे? भाई वहां देखा पीछे क्या देख रहा? एक ही बी होगा। जेवन के पास हेडफोन नहीं और वो माइक पे बोल पा रहा है। क्या तो झूठा है भाई ये। क्या करने का? हेलो मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना गाइस? ओके बी फ्लैश एंटीना है। दो बी सैंड चलेगा अकेला ये पे आजा। दो बी कैसे पता चला अभी? शॉट ब्लॉक जितने नहीं देगा भाई इनको। नाइस मर गया यार ब्लॉक। यार कौन है ये कुछ भी स्पैम करता है? इको निकाल लिया। सिर्फ इंटरनेट इससे मॉडरेटर नहीं बनाया तो ब्लॉक कर देते हैं। दोनों है क्या? दोनों आउट लाइब्रेरी है गाइस। भगवा आ रहा है पीछे थोड़ा सा। अरे रेवन जिंदा था, कैसे जीतते हो? मेरा लैगी हो रहा है बहुत ज्यादा यार। क्या है इसका नेट नहीं चल रहा है भाई, सिम भी गई है। वो अपने स्ट्रीम में स्ट्रीम दिखाता है ना, उसके बजाय मैच का आईपी ले और स्ट्रीम दिखा। निको का नहीं, इतना बोरिंग नहीं देखना। निको कौन सा कॉपीराइट लगा रहा है? का नहीं मतलब, अरे कहने का मतलब कि तो तेरा फुल व्यू चलेगा ना। नहीं फुल व्यू तो ऐसे भी चला दूंगा। व्यू टू व्यू दिखता है, अच्छा नहीं लगता वो। और अभी जैसे उसका स्टीम फंसा है तो उसके व्यूवर्स तो ऑलरेडी नहीं देख पा रहे होंगे, तेरे व्यूवर्स भी नहीं देख पाएंगे। इससे अच्छा है कि तू अपने में चला। अरे तो मैं अभी ट्विच का लगाऊंगा, अभी तो खाली टाइम पास लगा रहेगा। हाँ, तो उसमें बड़ा बोरिंग हो जाता है देखना। हेलो व्हाट? येलो अच्छा। तेरा स्मोक दे यार, तेरा स्मोक दे। 20 तक हो सकता है।
फिट मॉली क्या गाइस आ जाओ बालकनी क्लियर नाइस वन अरे भाई क्लियर है भाई ठीक है चलो स्टार्ट हो गए चलो भाई चलो भाई मैच देखा मैच असली मैच देखे क्या लग रहा है एनआईपी जीतेगी नहीं मुझे लग रहा है जीत जाएगी भाई ब्रोलर ने जो मारा है ना harping on how much of a problem he would be, how much of a liability he could be in a structural. अगर एनआईपी जीत गई तो फिर नावी जीत रही है हाँ वो है 60% of his kills went with the AWP prior to the playoffs. It's not like he's been shy. नावी तो कुत्ता बना देगी He's एनआईपी done it. But now we're on the city कुछ नहीं side. बोल सकते यार एनआईपी पहली बार मुझे थोड़ी स्ट्रांग लग रही फ्लैशेस और टीम वीक है एनआईपी का बहुत ज्यादा कोई वाई ब्रो सिटी साइड बहुत अच्छा खेल रही थी न्यूयॉर्क में भी अच्छा खेल रही थी सिटी साइड नाइस शॉट वन पिलर अभी तो गेम में है क्या अबे मैच देखता है ना कैल मिलने दे तेरे को फिर बताएंगे मैं कैल सर्च ही नहीं किया मैंने आज रेवन है इसलिए रेवन भी है ऊपर से मैच भी चला था यार एनआईपी का मैच देख लेता हूँ if stuff happens. So it's लाइट नहीं थी वैसे तो दिन भर using trigger points to elevate and creating a game plan before Mic on stuff happens, and that's what STAG is good at, and that creates a comfort when you're playing. इनके माउस के कलर कितने अच्छे लाल पीले One, I repeat, I have seen so many teams at this major for some reason sticking to their guns. 3-2 setup, 3 on A, 2 on B, in the dark, no idea what's happening. Mentally speaking, it puts you in so much doubt. You have so much uncertainty if you don't know what's going on. How did Hempus beat Kerrigan on overpass? With movement, flowing around the map, being that third man on A when he had to. रॉन्ग इन्फो भाई अरे यार गलती क्या है ये राउंड तो कोई बात नहीं उसको दे दे ड्रॉप पलकन को मैं दे देता हूँ हो गया सब पे ये ले दिया ये भी आ रहा है यार घटिया लोग क्या लेवल सारे का ऐप मुझे ऐप समझ लेवल 10 था एक लेवल वाले आर्ट स्मोक ए शॉट फ्लैश है ना ए शॉट फ्लैश भाई कुछ भी मार रहे ए शॉट फ्लैश दे दो गाइस इसको सीटी डबल स्टैक शॉट शेल्टर स्पेल गाइस मिड में फ्लैश हां दे रहा हूं अब एक शेड वन शेड रुक वहां भी देखने दे वन मोर हां होगा तो बालकनी एक हाफ एचपी ए पे आ रहा है बड़ा वन ए रेड एक कुबा क्या मार रहा है बे ये साला कभी कभी ऐसा होता है वगुआ के आईडी से भी इसका भाई खेल रहा है ब्रो डू सम बीऑफ्स आज बीऑफ्स करूं यार मौका तो मिले अरे पागल की तरह बीऑफ करके थोड़ी जाए यहाँ पे नहीं हो यहाँ पे एक और एक मतलब मैं साइट ही समझूंगा अरे बता ही ना चलो भाई मैं भी आ रहा हूँ What happened, bro? My 3 है फिर sandbag off Not going B, right? वही रेवेंडर अकेले मार दिया एक तीसरा भी होगा फॉरवर्ड 2 A shot पर्पल city 1 hey city pushing bro what purple is AFK I think अरे AFK नहीं हूँ बात कर रहा हूँ हेलो आवाज नहीं आ रही क्या अरे कंस्ट्रक्शन लेके रख guys info please where you spot info
I did not say no Mirage, bro. मैंने बुलवाया उससे वो. Stop barking. तो भगोबा तेरे को खेलना पड़ेगा. सीटी सीटी इधर आ, मेरे पास आ, इधर आ. को भाई पिस्टल राउंड निकाल दिया दे अबे C4 तो लेने जाओ. Pretty good these days and having much bigger wins than NiP overall. But NiP on One the more other below. side are winning 56% of their rounds, which is basically unheard of on most maps at this point. And they've got that to look forward to. That's after this pistol, but can they Below still one. survive the conversion? Care backstab, bro. Care backstab. 2 times on overpass. FaZe win pistol only to lose versus Force. And they say what goes around comes around. Ampus, you're up to the plate, son. He's going to try to push in, lines up 2 players. Broky's now in with the Desert Eagle. And if we talk about that star-studded roster on FaZe Clan, it's Broky, Twists, and Ross. Yeah. That's who it's supposed to be. And in this round, with this kick back into the head of NiP, it is those exact 3 players. Yeah, we talk about Hold big on. map. We just went from Sriracha to the bomb in one go. That was a huge round from the pistols here on FaZe, and just like NiP did to them on the second round of overpass, FaZe denied the conversion. Steal back momentum. Useless when they game needed the खेल most, रहे हैं and we वो. see key players come into play. Still costs on this one, though. Wait a MP9 second. start to shred the Wait players a apart. second. We're far from the bomb. Plopsky, he's diving for it. It's planted cold. Kerrigan moves into position. He's got the P250, but it's desperate. Are they going to allow the plant to go down? No way, FaZe moves like that. No way. He's got it. Oh my GG. Flashing a shot. अबे कहाँ खेल रहा तू यार? Just robbed away a round by waiting outside of the apartments. Plopsky वाह क्या राउंड निकाल दिया रे. jumps on it and ends the tag. He kills Kerrigan, who is simply too far away. That situation distills. Have you ever seen something like that? A push down mid in a spot where the TTs are so far away. Like there's no way for them to get back to it. They all, in perfect coalescence, get those frags and make it back to the site. Of course, Kerrigan's over in TT spawn. The rest of his teammates have left entirely, and he only has a P250. Those are not the mistakes you can afford to make in map 3 of the quarterfinals as the favorites of this major. Absolutely. Or at least the finals. And again, this Can we side rush could be below? a dream. The T Alcus. side will be a nightmare. That is one that's going to send just a shiver down FaZe. But I'll just give look past flashes, it. you tell. As difficult as that probably is, just look past it. This is how it was meant to go. No Go, force go, buy go. win for FaZe. The pistol gets converted. The rifles are here for NIP. It's a 30-round game. It's just one hell of a start. It'll be a good coach talk for FaZe for sure, but they didn't call attack off this. They'll let that ruminate. They'll have to stew in it. And they're back to a similar buy. Ooh, That's a tag tag. clears close. What a cute flick right there. Nice Up boost into the outside of the smoke, Below. but there's no opening. Not yet. Roland spams away. Uh-oh. It's getting too hot. Twist be cooked up. And the rest pureed. And the sauce is made. And it's made of FaZe. 3-0. They have already survived tragedy and they get 3-0 start. That's it. But just like you said, they mentally FaZe might have moved into the idea that they won the second round. But if they hadn't, they know they'd be playing from 3 in the first place. Hit that reset button. Holy hell. Focus on this one. First guns up from FaZe. Solid HE right at the feet of Kerrigan inside underpass. Great util has been the name of the game for NiP. It has to be said, DJL really making a name for himself with this roster. Minute 20 on the clock. FaZe pause. This molly is for Asatag to push him back out of position. Cap though. Oh, wait. Happus. What is that smoke? It's not what they needed. That's for damn sure. And now
now we're going to get aggression as well towards Banana. Brolin looks to lock in. Twist comes around the corner and hopes to bring this one back for FaZe. He's going to give chase to Plopsky, but the question's where'd he go? Yeah, the molly landed in between him and his teammates. That slows him down. The rotation comes in. Twist still on up to the plate. He gets that through the smoke. Oh, but Plopsky's able to come out. That's a trade frag at least. Brokey with the op goes high, and Plopsky dies to it. The opera connects. Spam damage from Rez and an upgrade to the A1S. ZOTAC nowhere to be found, and it looks like Twist at the head of that push from Banana will put FaZe on the board. Yeah, that was Twist in his little race car there running up Banana. Pedal to the... भाग दिया नहीं ये क्या होता है? Dash no joy. अरे अभी बोलो यार, बॉब की आवाज में चलेगी तुम्हारी आवाज. लॉन्च ऑप्शन में नो जॉय. उससे क्या होता है? उससे होता क्या है? गेम स्टरिंग बंद जो लैग हो रहा है बीच-बीच में वो सही कर रहे हैं उन लोगों ने. बट इसका यार नेट वाला इशू है, इसका वो वाला मेरा इंटरनेट का इशू है. वो स्टरिंग वाला था. नेट होगा. अबे मेरा नेट खराब चल रहा है. अच्छा ये है बट बहुत टॉक्सिक है. हां ये का कंसोल में डाला था क्या? हां जॉयस्टिक कमांड है बट काम कर रहा है. पर अभी लोगों ने अपडेट दिखा दे. तो मल्टी Having rounds lost like that is part of this game. Full strength buy here from NIP, but it costs them every single penny. Looks like they want to try and turn FaZe away from Banana early. Belong better. Just a 2-round lead, but it's a start for NIP. Yeah. They're playing back, they're playing passive. Or are they playing pensive? Is there a chance for some late grenades to catch off the T's who look to take over the top of Banana? And one thing that's hallmark to the FaZe T sides besides Rops moving into the apartments, typically by himself, is them taking over space on the arch. And we look to this setup right now. Hampus peering into mid with just his rifle, about to get smoked out of position, and there it is. The wrap smokes come through, and he'll try to delay. Frag. Oh, lands. Hampus peeks into it. 1 kill. Kerrigan, nice answer, but it twists again in front. Another on the site. A second. ZOTAC's got that first and second. Nicely done inside of the bomb site, but is it enough? A 2v2 and a critical early turning point, perhaps. No late moto smoke. This speeds up the retake tremendously. Smoke goes out from Brokey. Must have picked that up in sight. Yeah, they got one. ZOTAC hands busy with the op, wasn't able to lay down that utility. CT start to get this rolling, and then Brokey pops up. He's got his op, and he's got Plopsky up close. Kills from Brokey, and 2 rounds for FaZe. Wow, ring around the rosy and leave it to Brokey. A clutch opposition, sometimes stronger to just have a rifle in that spot. I think he recognized how dangerous that could be, but didn't want to stand in a standard spot like cold and potentially get pre-fired. Trust his instincts here. Beautifully done. Well handled. And he was smoked out of help from his teammates, so that could have very easily been a one-on-one situation. But the rotators from B get shoved out. Twists earn a second. Pistols for Nip. Man, that was new from FaZe. I haven't seen them do that often. They threw their R-trap smokes and then hit lane really, really quickly. We have seen them take slow arch control or go for the full wrap consistently. Now there's CTs everywhere where the T's are fighting. Twist just tried that reload close. Kerrigan looks to run away. That's bomb. Oh, the bomb. They have to get it back. They picked apart the mid setup 3-on-3. Molly on the bomb, yeah. That'll at least stop the CTs from going any further, but this is still a retrieval mission. I don't think they picked up any utility, so the smoke is very good. CTs will look for a timing to spam. It's all about that. Brolin's gonna try to go through, piece together the picture. Oh my God! He's got it with the USP. Potentially a second critical error in the opening 6 rounds. And Brokey, quick movements, just trying to dodge, dive back into the fight. Brokey's got it. You heard about him, and now you see him. It's an open plant. Don't sleep for too long. Brokey's in the server. With Latvia on the map,
And FaZe on his back. He just grabbed that bomb and ran. Play hide, bro. Hide. That Tech 9 shot into the snap to Hampus. You thought you had it, but that's a recovery from Broken. What on earth? Critical round to take back. We're tied early on, and this start is electric. Why can't you hide? Fire goes ahead. Twist, he got caught sleeping at the wheel last round. He rounds that corner so close to dual Berettas with his name on it. But now it looks like he's looking for revenge, and we've already seen great things from him. Oh, there it is. Clean as can be. Brolin with the answer, though, and he's been the response for FaZe. No, important to talk about. All the limelight stolen from Brokey. That mid-round play, though, with the USP, the rifle spamming behind it, Brolin up front taking that responsibility. Here he finds a gap again. Rez up in the treehouse. That's a frag. Instant refrag into the head from Rops. Clean as can be. Hampus drops one. Rez comes back into the action with a hold on short side, and NIP's defense doesn't die. Yes, sir. Rez makes an appearance. Lane player with the rifle. So much to think about. Inside a mid, inside a boiler, up on the T-apps, and he starts off up high. That gives you so many options later on. You get that first frag, then you can be in a normal, natural position, and it's somewhere brand new. So well done. Look as he flicks his mouse across the pad. Gives a little bit of breathing room to NIP, but these are the rounds that get wild. Incendiary down mid. CT side again, press into Banana, a little bit of vision. Just trying to pepper, trying to push FaZe back a notch. Crazy start. Frag goes deep. Damage onto Rain. Let's go be shot then. They have smoke. Smoke it. Want to make sure they keep this lead. If it's one of the two now over on B. Why would you throw two smokes, man? GG. Shove the T's back. No choice but to respect it. No window flash available. They can't even close flash into the smoke to take over B. They can wait this out, however. That's always an option. Estak gets a bouncy Kerrigan out of the sky. The fact that they recover after that ridiculous loss into the buy, clean up, and now get the anti-eco and continue dominating. Terrifying here for FaZe. Just gonna see what he can squeeze out of this one. 1v5 unarmored Deagle with 0 kills to his name here on Inferno. Contact found with Brolin, and that's the end of him. NIP looked to stabilize after a ridiculous back and forth. Yes. Yeah, when the dust settles, a lead here for the CTs. Confidence knowing they've got the second half. T-side, that's where they specialize. That's what they love. FaZe, did they even see themselves going to a map 3 in this situation? Did they think they were just going to pop into the server and dominate, get through this quarter? Well, if they did, they were dead wrong. And now, not only are they tied on maps, but they're down in rounds. Desk was split on the predictions. I'm glad I didn't have to make one. Frag, good position. That's Twist down to 40. He's been key at cracking open the heads on these entries. Well, this will soften him up. Brolin's been successful in stopping him. Brolin jumps, and that's a critical error for Brolin. That was a huge gap. Did they even molly logs in that spot? Well, Twist was low, but all right, immediately. FaZe get fast. They press for mid. They're going for the arch side. They walk right into Hampus. A double kill from the Swedish IGL. Plopsky over towards Banana. Nessa tag lays right into FaZe. You thought an open kill meant NIP. it all gets taken back. God damn. Pelo by pelo. Now of FaZe, NIP, CT side, certainly rolling. A move like that could rock a less sturdy team, right? They didn't account for that kill to come from Brolin. That wasn't a fight that he agreed to. Instead, he thought Banana was clear and they were going to establish. As soon as that kill comes in, FaZe, maybe they wanted to wait a second. Hampus, the fact that he can swing on mid with his M4 and trust himself is already insane. Now the op is the one on lane and they're putting pressure on him. FaZe pick the prime spot, but they can't get through the captain of NIP. Roland, easy test and Brokey. You
cannot understate the consistent impact of Brolin in these games. Not one small mistake gets punished. FaZe don't even convert the rounds. The amount of times he saved them on those A-site holds on overpass. Oh, well. All right. There's an answer. All right, let's change the narrative, says Robs. It's just one blip. There's the second. What? Deagle also rocks him. Res left. He's They been know where spotted. he plays. Yeah. Oh, okay. Right back at it, sharp as ever. Twist looking for a little bit more. He's at least piecing together this picture, and they're giving him a little footing, but he will be chopped down inside that bomb site. DJL's starting to get a little excited because NIP's CT side is starting to thrive. Yes, yes, and the Swedes, they stay calm, they stay composed. I mean, we're talking about a NIP that might be, you know, the best version that we've seen since the original lineup at this point. How versatile they are, and they are much more resilient in 2022 CS that has gotten harder than ever. This The team's quality of play. second land. Yeah, the quality of play coming out from this roster so early on. There's a sight to behold. Twists ahead of the pack, chases into that. Saw the utility getting used. Ooh, actually, man, that was a really solid disengage. It rocks the CT setup. They get a kill on the other side of the map. That's Rob saying, hey, don't go to... Oh, nice! No way! 7 bullets straight to the bottom of stairs. क्या flashback आता बे? That's gonna put things back onto Twists to lean into this B site. Zotac, he got punished trying to peek into the balcony, of course. That's absurd. Residual damage here on Brolin. As they put him up. FaZe have not been able to wrap Arch a single time. Hampus grows with confidence. Again, floating with the rifle is just improving the map for everybody at the moment. Plopsky and Brolin, former teammates looking to work together to defend. Oh, that's good damage. Remember, Brolin, he's still here! 1 kill! The fact that he brings one with him, something flash into the head of Kerrigan as he crosses over. Another smoke towards CT, but the CTs themselves are here. And those shots so close to denying Brokey his plan. FaZe inside of the site, they've got a post. Can they hold on? Kerrigan jumping up, caught out by Plopsky in this forward position. They didn't see it coming. And what's left of FaZe is gonna have to lean back. Nice smoke. Utility here in abundance from NIP, and it's gonna be a problem. 2 T's, both smoked but out. It's a bit to the left. Oh. I think Rob still has a bit of vision. Plopsky takes down Brokey from Nice round यार. Oh my god. क्या खेल रहे हैं यार? Nice round यार. Nice Totem round. pole is cooked. The retake utility is just enough, and that little outpost position from Plopsky catches out Kerrigan, who starts to feel less safe, sitting in emo on low HP. Jumps up and looks for a new fight, and that's the kill that allows the retake to occur even faster. Now we've got a retake to their name, a fast round, damn near won an eco. It actually did in denying the conversion for the FaZe clan. 8 rounds, 8 to go. On fire as well. 5 straight here. FaZe, you gotta answer. You gotta answer before this is too late, before suddenly what feels like a major you're supposed to be contending for slips through your fingers. No reason to look at that trophy if you can't even get over the first hurdle. Molotov goes over and zotac has to fall back. Arch has been problematic, but right now it looks relatively open. Yeah, it's finally been exposed, but in response, actually, this is very tricky from NIP. They rotate 3 into the site, so they took a small risk on B. They've done such a good job of conditioning. They actually are trying to encourage the A site to be taken over. Double pit indicates here that they're ready to deal with anybody like Rops who might come out late. They've got support in this spot. Moto smoke comes down, 45 seconds. Plans are laid out. Last util goes in. Rob's 1 kill. Hampus, he's looking to lock this in for Pit, but now we've got FaZe back into the kill feed. zotac dodging death as he dives down inside of sight. Oh, but he gets rocked by Twist from behind. Beautiful bait from Rain. And now we take Plopsky into the clutch. A 1 versus 2 with bomb planted.
And Rain has been so quiet, but at least he served up that distraction so that a guy like Twist can shine. Sight volley coming down. A frag grenade to follow. Twist already behind that tall box. Beast with the double, and they both got this locked in. Tempest ने हक गया यार. Oh, that little bait by Rain. He's the guy who will always lurk the smoke on Arch, and he finds a rotator before the sight hit comes in. So that's something they know they have to deal with later. And then Robs gets a kill, their lane players gets a kill. And honestly, Twist is one of the very best players in the world at entering when it comes to lane, which in my opinion is like the hardest place to entry on basically any map with the crossfires available to the CTs. And we had 2 pit, 1 sight, and they almost got the trades required to be able to close that out. And even though NIP are up on rounds, the rounds in which FaZe are actually able to win have been really good. This is just to show you how damn well NIP are playing right now. A new look over on B. And just like we saw, Kerrigan on Ancient pushing A with Robs, Kerrigan on Monster on Overpass pushing himself, Twist continuously taking space aggressively by himself over on Banana. Always trying to call them out on one half of the map at all times. Oh no! Wait, was that a T smoke that landed inside of mid? No, CT. Okay, I hope so. Oh, CT Molly. That looked like a weird bounce. Anyways, it's it's नहीं वापस आ They're रहे. coming back for it. Esatag open lines. He knows if he gets flashed, he's screwed. They give him a dry peek, he's in. Puts down another one. This one a little bit wider. Oh man. This is so late. 35 seconds left over. We get more utility coming out of pit now. That's 3 apartments CTs B. completely smoked off. Esatag misses his first shot, and that had to be hit. A second off of the mark, a drive-by from Kerrigan. Everything falls onto Hampus. He's able to get the player off the porch. They know he's here, and he knows they're coming. So a second kill is critical, but Rain into the library, silences Rez, puts him down to bed as Brolin and Plopsky just can't find openings. FaZe find 5. Yeah, this is big. The fact that, again, Twist goes to B, even though NIP have done such a good job on that part of the map, pushing him back, he has either gotten a kill, stayed alive, sometimes died with 1, always got something out of it, and continues to not be scared. That opens options. And what happens? NIP rotate 3 over to B because they can't continuously fight. They're tired. They've been doing it so much. It's just that FaZe always, again, play like they're winning, even when they're down on rounds. And that's what allows them to come back slowly. Quality rounds here won by FaZe on T side. Enormous entries. And of course, Esatag could have put up a defense there on the A site, but the important thing to notice was FaZe picked A when there were 2 there. Esatag had chances. He did. Bad खेल दिया उसने ऐसे टैग. Arch opened up. That let Rain to go deep. He said that this is it's not the first stadium that he's played in, but it is the first one he feels like he's earned. Playing at the Blast Fall Finals, getting wiped out there, but guaranteed to be able to play in an arena like this. The major is not guaranteed. The playoffs here are not by any means. There was an enormous smile on his face when he realized that he put in the work to allow his team to get to this point. Twist shut down. We've seen him with success on these entries, so for him to be rocked at the start of this one. Yeah, this is a huge move. Now they'll begin to cheat over. They want to stay on their tails. You can see watching mid having no idea what's going on over on Arch. Man, NIP are making decisions right now, and none of them have to do with supporting the B players on this rotation. They'll boost up into quad. Will this be the play that saves the day for NIP? Good luck. Incendiary into the pit. Kerrigan, he's going to decide to wrap around. Okay. They feel swarmed, and Rain, he's got them both! Over the top of the boxes, he's going to send NIP into a save call. Clean entries here from FaZe, and that was off the back of the 4v5. That was, yes. That was. Fixate in on that intention, take that B site, swarm from all directions, and even if Rain doesn't crack both, they were there in numbers. When people talk about hard rotations, one thing that needs to be understood is that, okay, it's simple. You get your Arch offer to rotate over to B, but you think it's going to be B and come back. No. The difficult part is not how you route to that rotation. It's when you do it, because the rotation is so long.
The fact that if STAG leaves his spot, goes and supports the B play, leaves Arch open for a timing, certain timings in the round, then FaZe are going to be able to win. So we saw some communication trouble there from NiP as they were deciding what happens on the A site. And it looks like it has no knock-on effect over towards B, but it does. We have two players there trying to hold 2 rounds in a row where there's 2 site players on the site that should be stacked higher. And oh, okay. Rez just goes picking off one more at the end of the round, and the op doesn't even get recovered. They can't even cross over to it. Too afraid. Wow. All right, Robs. Back in the game here with 6. NiP still have the T side to look forward to, but this game is so much more than past results. As much as they matter, and as much as NiP proved that they can withstand the pressure, we are at the paramount level of pressure. Map 3, tournament life on the line, the entire grind, the RMR. There were no free spots at this major. The entire Legends run. The expectations, as much as NiP can say everybody has doubted them, they have started to earn a reputation for themselves to be a serious threat. Their reputation is they're the threat you don't expect. Yes. But clearly, they're being taken seriously. Amp is quietly up to 15. Off of his presence on the Arch plays, has done fantastic work from NiP. Another clash set for the top of Banana. Oh, Brolin jumping MP9. Okay. Yeah, come get some. Okay, Brolin. He runs it down Banana. 2 kills for him right off of the tag pause. They unleash the kid. And FaZe left shattered in round 15. It's Robs and Brokey left. I can't believe that. I mean, his feet were not touching the ground when he got that first kill. He said, go forth, my son. But there's more to it, right? Brolin doesn't jump there if there's only 2 players. They start out 3B, ready to take the fight down all the way to steps. ZOTAC pressing up close here, also with an SMG. Rob's trying to fake out that smoke. Woo! And a clean execution that only costs him 14 HP. With that, a 2 versus 5 from FaZe. Is it really that unthinkable? Look how careful that smoke was. Gave him a gap to stand in and ready to peek, and he's now looking for more. Look at this. This is the stars of FaZe trying to join forces. Oh my god. And Robs gets a second, but that one costs him a ton of HP. So you'd think he's setting up Brokey, but that frag was right on Rez. Who has the gap? The Shadow! Robs with 3! Holy fuck. Into this 2v5, and Robs has done it all. Brokey's nothing but support at this point. Plopsky throws out that smoke, trying to give him space to work, and Robs says thank you. That's the invitation. He He's can gonna phase hide. this. 15 seconds. Brokey on the outside. They can jump Mike. They know that. Switch guns. Brokey onto the A1S. Plopsky goes over the graveyard. Brokey tries to hide. He gets that first one. A single kill away from keeping this as close as they can. And it's Brolin, the boy wonder. GG भाई. 2v5 to send them a message and to set NIP to the second half with a 1-round lead. That's it. Wow. That's all. It starts with Robs. Dropping a smoke with the accuracy he has with a rifle into Arch to give him the tiniest gap to allow him to take out ZOTAC. An unbelievable start to this. And that's enough to scare rotations. They come back to lane. They put the pieces together. Sight smoke gets abused. Rez's footsteps coming across it. They spam him down and leave the rest to Brokey. Another clutch for this man. Kerrigan feeling the pressure just as much as his teammate playing. 7 rounds, hard fought all the way through. That's a round to remember. Pistols start to trickle up mid. Flashbang already to the side of it. They've got a trap here. 3 CTs in position, and they keep this one clean. Clean as can be. Clean as FaZe need. Robs in with another. And it is Rez in the 1v5. If NIP truly think that they can push their limits and get into those semifinals, then they need to make sure they can dance with the very best. And FaZe right now, they're spinning on their heads, as a CT pistol win would tie us up at 8. You can grab 56% of your T rounds. But you better believe a stat where the pistol comes into play
is going to taint that a little bit. That might be a necessary one for FaZe. We see Hampus talking now. It's ideas that win matches. And on T side where they're more important than ever. Such a perfect trap, those three players. Oh man, there were, when you killed one player rounded of bullets, there was another. It's clutch time here. And as FaZe look to hope to hang on, isn't there just this poetic element where we saw Rain and Kerrigan kick off this series on Nuke, and now finally in the third map before the end of them, the way that NIP would want to cut down this first challenge, and it's Rob's Twists and Brokey at the top. As the analyst said, their performance is inevitable. And it's here in the second half of map 3 that NIP are going to feel the full wrath of FaZe. Don't forget for a second, tied game. Sweden looking to plant a flag. Seven years since they've been able to win a major. Chance to get through one of the best teams at the tournament right now. Rain under pressure. He's got 3! Stops them in their tracks on the cusp of that site up fourth. This half-armored buy is nothing. That rock, that pillar, that core of FaZe Clan. He's been here since the start, and he'll be here to the end. He locks in that B site as FaZe take a one-round lead. Yeah, it's a lot of money left on the table. All of the FaZe players live. Spacing out their tag timeouts here, and Nip will take one before they establish. They had an investment. I don't know if they can buy again. They'll sit and talk either about this upcoming round or the next. They cannot let FaZe get comfortable. And again, they've got back to this point because they always played like they were winning. They can visualize that trophy. Up close and personal too, those Tech 9s, that Deagle, and he withstood all of the damage as well, tucks right in and finishes it easily. Some frustration here, as they could feel it. I mean, they've won an eco, they've won a half buy in the past. That was entirely possible. There's always a chance on Inferno. That's why this map always delivers in map 3s. Deagle's in for NIP and Plopsky. That's a cut down. Rob's now, he's been severed from his next rotation. He has to just fight his way out of this. Rotation comes in, Hampus goes down, and the smoke now at the bottom of steps. Twitch will support. Recovery. Damage through that smoke as well. Gonna confirm they are down there. I mean, they should be. It's their spawn. Oh, now he's going after them. No room to breathe. Props up your neck. He chops off Plopsky from that apartment's push. Yeah, and they get that sweet revenge. They may have killed Brokey, but it cost them all 5 of themselves. 2-round lead. ये तो खेल क्यों नहीं रहा है अभी सच में? 10, 2 of the strongest Inferno teams we've got. 3-round start for FaZe. Yeah, and 7 in a row. We saw that total shutdown of a CT side on Nuke. That's what got us here to map 3. Oh, the FaZe fans are getting loud now. NIP are gonna have to withstand that. They got further than they did in Stockholm with at least a map win, but no home field advantage. They'll need to lean on one another. Rez into the apartments, Plopsky's trying to join him, MP9 pushes through. That was an invitation for Rox to chop down another. And then the fights go the way of Kerrigan. He's just flexing the FAMAS on the front of Banana. An answer though, Hampus. He gets one of these players peeled off the B site, rotates already over, but no smoke on that cross, costs S a tag. And Hampus, well, he'll be on 58 HP as the onslaught continues. He'll need all 5 kills in this one. The 1v4, too much to ask, you'd think. If he doubles back to Banana, Robs has got that locked in, and FaZe continue closer. Yeah, Robs just hit 21. Robs just hit 21 frags.
That was a guy we had nothing good to say about basically in the beginning of this series, but also somebody we knew does not stay asleep for that long. Devil Walk put it on the desk, somebody to watch out for inside of the halls. Almost always puts on a masterclass. Other players have a lease. He owns the apartments. Get back to the happy Hampus. Perfect guy to put the hero AK on. He's a trickster. And he's looking to just pry over top of this, look for some contact, look for a mistake, It's anything, hard, but Twist isn't going to move. It's hard to walk up with a slope on mid. They've got an opportunity to catch a rotation back. They aren't throwing a molly his way, but he finds the duel just as it goes. Twist is going to be kicking himself. How many guns do they think are available now? Rain here peeking. He's alone, but he got full vision of Banana, and now the rotation comes back. It's as if nothing happened on A. Still fighting versus man, disadvantage. Robs takes Twist's place, 2 CTs leaning over on that arch side. Somebody better keep eyes on apartments, because Hampus could use that one AK to jackknife open this round. Brokey cannot afford to miss. Robs is going to be under pressure. Crossfire set, and it's good. Robs locks this in. A single kill means nothing in the grand scheme of things. Round 20 belonging to FaZe. Esatag can run, but he can't hide. Kerrigan locks this in, and now we have FaZe on fire. Yeah, well, that's 5 straight just in the second half. They closed out that first half with a streak as well. They just have not lost for so damn long. Nip with another substantive buy, and I think one thing that at least we can say for them is they haven't had many attempts with all the guns and all the utility. They've tried to get creative, bring the ingenuity, but usually with half of the tools that normally you'd have to work with. Now they're at full strength, now there's no excuse. FaZe have shown what kind of CS they're going to bring in the 4th quarter. When it most certainly matters most. Rops, the red carpet rolled out for him before he ever arrived. 24 frags. We saw a tactic there, a play that worked. A thin silver lining. And again, it's ideas that win matches. There's no shortage of them here on T side, and right now they'll play it extremely slow. It looks like FaZe are playing directly into that as well. They'll counter smokes in mid. They're playing inside of brackets with high activity, even waiting for any kind of arch wrap. Halls is wide open. There's 2 CTs back on the site. Nip know this, but what do they think the setup is? Oh, they just dismantled it. Twist is going to be left on an island here, but he decides to run in. Okay. He takes 2 players down. Esatag answered by Robs, and Brolin deep mid with 40 health left. But is that spotted? Yes, it is. Brokey plucking Hampus from the sky as they leave boys, Brolin इनका NHK हो गया भाई. He runs in, and Brokey's just hiding. Brokey's hiding and waiting for his chance to strike a second time. They're getting punished right now. Getting owned. They're skipping their under balk incendiaries. They want this duel, but they're actually not good enough to take it. They need to take space as opposed to these opening fights, and maybe give themselves the chance to go into the execute, but clearly FaZe are really well prepared for the T side that is oncoming. The way that Rain was disrespecting all of their action over on the B site, standing atop the barrels when they come back to A. We've had multiple cameos between Robs, Twist, and Brokey, all taking turns playing under porch, which has been a pristine spot, has granted them a number of opening kills. Now for FaZe, it's just about staying in the lead. Underrated, but fantastic tracking from Brokey. Could have been shoved out of that position with pit control given over to Nip. Comeback हो सकता है यार guys, come on, ये को निकालो. And it's another half buy. Not ideal. It's 2022, and we have to ask, does Nip Magic still have that extra essence? This is a round they so desperately need.
FaZe would be foolish to write them off. Good amount of utility, but we've seen it multiple times already. Getting past brackets, even just looking for footing inside of the A site comes at such a cost, a human cost of all of the ninjas. They simply cannot break through this CT side. FaZe, from Nuke to Inferno, are looking rock solid on the defense. But there is an opening here. No longer is Twist in his corner. No longer do they have that closer threat, but a lean back, in fact, from FaZe. They get those 2 steps closer. Do they just want to take this? They're going to press hard into the pit. It twists. Oh my god. With a quick flick of his wand, they're all gone. Mix them up. Easy pickups on this half by Brokey with a lending hand. FaZe 2 rounds away from semifinals. Oh, what? We don't throw one-ways now? We don't care? We just swing on pit? Oh, he's just ego peeking him. Going back in for more. We saw Robs go all the way down to mid. That's something that Kerrigan has given the keys over to his teammates to do. Take that space. Trust yourself. You're hired guns because of your individual level. And right now, NiP are trying to scale the mountains. But the Rice picks are losing grip. This could be their last full buy. Esatag on and off. He's got to be that X factor. Roland has been torched down to 3 HP. Rain opens up on Hampus. डिलीट हो गया यार ये. हाँ सैड यार, बुरा लगता है मुझे NIP आती तो. The Cal info the game is equally interesting right now. हाँ सही में OT चले गया. स्ट्रॉन्ग बाई क्यों नहीं लिया इसने? You don't do strong buy? Why? Mine's overpass. Okay. Asian खेलना है. Okay, Asian, here we go. अरे बुरा लग गया भाई मुझे. Sorry guys, I've got screen. My bad. Asian लगा guys game. Oh my god, yeah, and I hugged their in T side. That's good. Not good. कब Good सीखेगी for T S side. T side कभी सीख ही नहीं पाई NIP. They did not have the firepower to match. हैं? They did not have the firepower to match phase. Actually, फायर पावर भी है उनके पास, वो भी नहीं है. 8-3 का स्कोर था, उसके बाद उनका कुछ वो ही नहीं था.
आई थिंक जीत गई फेस। एनआईपी को डिवाइस की जरूरत तो पड़ेगी यार। वो इसी टैग ने हक दिया वहाँ, उस राउंड के बाद से कमबैक हो गया। टी साइड बिल्कुल डम खेलते हैं यार, टी साइड बहुत गंदा खेला है इन्होंने। डिसअपॉइंटेड गेम। भाई कमर ही तोड़ दिया उन्होंने। It's so easy for the second captain. So easy for the second captain. अच्छा मैप का Players. The players. Indian can be forced into it. मैं strong buy कर लिया। Strong buy is very good. He did not play a lot of cal. That's why. But Stan is playing. But इस बीच खेल रहा था वो। Dodge कर। Stan connects. Stan connect हुआ था? He always connects it. Should be coming anytime. Dodge करेगा ये। Now I can only play. Silver से है। I did not pick Shady just because I know that one noob will be forced into my team, and Shady might get tilted. Who? Shady. I picked Ninja over Shady, and that's the reason. मैंने सर्च में क्या लगा था? वो 3 बंदे छोड़ के चले गए। Now Raven will join us. रेवन ने कमबैक करवा दिया यार इनको, मैं इसके पूछ। लेके 42. Second Doti. And yes, Facebone. Yeah, I know. अरे ब्रो क्या मारता है यार। कितने हम ओवर टाइम खेलने वाले हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई, सेमीफाइनल और फेस जीत गई। बहुत मीम बना रहे थे ये। इजी फेस कितना स्कोर क्या चल रहा है गाइस? ब्रो हाउ इज गोइंग टुडे? ठीक चल रहा है ब्रो। डबल ओवर टाइम खेल रहे हैं हम। चलो गाइस अभी टी साइड जीतते हैं 2-3 राउंड। सेमी साइड क्या स्कोर रहा बताओ? उसको हर राउंड स्टार्टिंग में तीनों राउंड में पिक मिला है स्टार्टिंग में। अरे वो ना लेट आके बनाना मतलब मिड पे देख लेता है वो पागल। कोई बात नहीं, वो पिक नहीं मिलेगा आपको तो अपना रखना है। लेट पिक लेता है वो, ध्यान रखो। लेने ही मत दो उसे, दो ही मत उसको, उसके बाद खेल लेंगे। आप जीप स्मोक किया हो? वाड़ से एंगल आके बैठता है मेरे पे। डिवाइस क्लास दिया अभी। क्या?
बॉयलर अप AWP ब्रो मैं वो हूँ Someone's typing मोहब्बा कितना noob है. गाइस बालकनी की फ्लैश कर सकते हो तुम फ्लैशिंग शॉट बालकनी एक स्ट्रांग बॉय तो आ गया. बालकनी गाइस बालकनी वन बालकनी. स्ट्रांग बॉय टाइप कर रहा है क्यों नहीं? एक सेकंड रुक जा वगोबा. गालियां पड़ ली वगोबा को. ओ वल्कन राउंड निकाल रहा है. बालकनी डेड फिर नहीं ये सब खाली है. अच्छा ये सब कुछ नहीं है. क्या बहुत जल्दी है तुम्हें भाई. Listen guys, either fucking commit or don't go at all. Please don't do this. भाई उसने ऐप से फ्लैशेस Sorry for semis. ऐसे लैंड जैसा खेलो मत, ठीक है? या तो घुस जाओ या तो घुसो मत. ऐसा चुप के बीच में पेंडुलम जैसा झूलो मत भाई. ओ माय गॉड टिल्ट है भाई. भाई 2 राउंड निकालो जल्दी सिटी साइड फ्लॉलेस खेलेंगे. भाई 35 मार दिया भाई. उधर से प्रॉक खेल रहा है भाई. प्रॉक बताओ खेलता भी नहीं है सीए ज्यादा. He is a godlike player on infront, especially T side. फ्लैश मिलेगा. अरे यार ऑपर आया. गॉड मारा भी. फ्लैशिंग बना ला. एक मिनट पीक ले रहा है. हाफ वॉल AWP. Pislot. तो स्ट्रांग पे खेल रहे हो क्या? नहीं फेस इट. अलंकार यार प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. सेकंड टीम कौन सी है? इट्स अ गुड शॉट. अगर वो मिस करता बचता भी नहीं. ब्रो आई थिंक अभी होएगा. Hide is shot. अरे ब्रॉक ने लिपटा दिया वहां. स्पिरिट वर्सेस समथिंग. Spirit versus Furia. He's not B player. Brock A player. एक B एक A. क्या लगता है वो गोबर राउंड निकालेगा? No. A वाला पीट खेल रहा है. भाई वो गोबर मार अच्छा रहा है. Unless Raven can give him exact calls. मिनी पीट खेल रहा हो. वो देख मिनी पीट खेल. कुछ ही बोल दिया. मिनी पीट की कॉल तो दे दी उसने डायरेक्टली उसको. He was mini pit. आई पीटी है ऐसे. उसने पिट से मारा. 45 सेकंड. ब्रॉक है यार वो. ब्रॉक के मूवमेंट तगड़े हैं भाई. What the fuck? Skill is nothing in front of luck only. भाई बहुत बढ़िया है. भाई आई टोल्ड यू वो गोबर राउंड निकाल दे गए. थैंक गॉड बच गए भाई. क्लच मिस्टर सिपिक्स. भाई राउंड निकल गया बेचारे लोगों ने. भाई मैं क्या यार आज निकाल. ऐसे इंफिनिटी ऑफ दे दे. अरे यार थोड़ा लेट बोला भाई. लोड़े सबको भाई करना है कैट के चट. भाई लेट बोला यार तुमने. बोल ही रहा ना भाई कर दिया. ऑफ करेगा Raven game sense was 1 point. 2 point bro. इधर आएगा. हां मैं होल्ड कर रहा हूं उसको. शॉर्ट साइड फ्लैश कर रहा हूं. अरे तेरी मां की. वेट गाइस लेट्स रीग्रुप एंड गो बी. अगर तुम मैं सबको सही लगती है बात तो मैं छोड़ दिया हूं. मैं टी स्पॉन हूं. रेवन डेड. क्या हाफ फ्लैश दूं? हाफ वन. अब रेवन की कॉल सुनना चाहता हूं मैं. मैं यहीं अटक जाएंगे ब्रो. आजा वो ठीक है. वेट आर्च चलते हैं. डब्ल्यूपी खेल रही थी वैसे एक. नॉट श्योर यार नाउ. साथ में पीक लेते हैं. वो ब्रॉक या तो पीट या तो बालकनी के ऊपर. It is correct. Buff only plays pit or balcony. Was doing the exact same thing when you played against them. Way back in grassroots.
वहां जाके स्मोक कौन डालता है बे आर्च पे? टकरा के भी डाल सकता था। इसका नाम ब्रॉक वर्सेस एवन चल रहा है भाई। Oh my god, अरे सैम यू आर देयर। हां यार बी जैपर आ गया है, जैपर। अंडर मत खेलना ऐसे। अच्छा नो जस्ट वेटिंग फॉर हेवन। डबल नेट करते हैं लॉक्स पे ठीक है। रेवन जीतने नहीं देगा भाई इनको। You want to play arch? Purple. Raven is trying hard in kill now Zapper. यार एक जगह कहां खेलना है वो OT double OT. शॉट किल टू हाई टू सीटी खेल। वेट कर रहा हूं। अगर ये रेवन राउंड गेम हारा ना अगला सर्च ही नहीं करेगा। मिडिल सब। One boiler. He will disconnect first to search. He is trying for the leaderboard now. I think so. ठीक है। बट डिस्कनेक्ट जल्दी करके कुछ फायदा थोड़ा होता है, गो नहीं कर सकते तुम। He gets ready. He refreshes the browser. मिडिल। नहीं। मुझे फ्लैश एंटर बोले रे भाई ब्रॉक तो यार ब्रॉक का मूवमेंट बहुत अच्छा है बे। His aim is to. हाँ एम भी और अब तो 5 पिंग भी है ना वो। अरे भगवान डाउन निकाल रहा है भाई। आर्च इधर नहीं साइड 2v1 प्लांटिंग रेवन घंटा निकालने देगा उसको। इस लड़ के वर्ड्स भी तो टफ है। लो है अपना बंदा। पहले वो लो है बल्कि जाना बल्कि। अरे भाई लड़के ने शॉट मारा है। नाइस। डबल करना है क्या या एक एक नाविगर से भाई गया। हां भाई ये तो खतरनाक है। 3 से करता स्मोक शायद बच जाते। You can watch the current game on Firebase. Good round guys. Very good round. बोलो एक ले लो। आर्च में खेल रहा हूं। ओके अरे नहीं बी चले जा। 9 हो गया यार। What the fuck निको का 34 बचा? हाँ अभी तो 38 हो गए थे भाई। डेट कर मॉली बचा। सैम? Yes. Interesting game. That's why. नहीं आ रही किसी को। Oh shit. रिकनेक्ट कर। फ्यूरियस आ गया भाई। Furious is 2700 elo. मैं भी स्मोक कर रहा Oh fuck. अरे आज फ्यूरियस कैसा आ गया भाई? आई विल मॉली काउंटर के खेल को। मिडिल एमवीपी साउंड बनाना के डीप बनाना साउंड है गाइस। मिशु अच्छा खेलता है, इसको बोल मिशु को ले। अबे मिशु लेना था। मैं आता हूं। हेलो Hello, can you hear us? न्यू बॉक्स के ऊपर फ्लैश दूंगा। दे। रुक जा। नाइस। Hello Zapper. दिया। एक और दिया। नहीं ब्लाइंड है यार। चले जा। डार्क है कभी हाफ है हाफ। आर्च देखना। डार्क है। दूसरा पता नहीं। एक ही दिखा। आर्च खेलेगा यार, रिटेक खेलेंगे इस साइड। वो डार्क वाला लो साइड कूदा। आई कैन फ्लैश साइड। अच्छा ये साइड। इसको मार। हल्का लास्ट किल लो है। कहां है? हां गया हो डार्क था ना। डार्क था। अच्छा ये तो इंफ्रारेड है क्या? इंफ्रारेड डार्क है। हां डार्क। डिफ्यूज कर रहा हूं गाइस, डिफ्यूज कर रहा हूं। अरे प्लांटिंग अच्छा फक ऊपर बैठा ट्रक के ऊपर। नो नॉट इनफ टाइम। मैं भूल गया। हेलो अरे आवाज आ रही बॉम्ब है में गिरा हुआ था, चमक रहा था। मैं भूल गया कि अच्छा बॉम्ब गिरा हुआ था ना, चमक रहा था तो मुझे लगा अच्छा प्लांट हो गया। उसको प्लांट कर देना चाहिए, करने देना। भाई 5000 लगाया। निको की क्या वॉचिंग आ रही है भाई? भाई गंदी। अभी तो 38-40 पहुंच गए थे। हां भाई मैं देख रहा हूं। Interesting game. भाई रेवन तो भयंकर कर रहा है भाई अचानक से। हर गेम में 40 मारेगा क्या ये? अभी मार रहा है क्या? हाँ मारना शुरू कर दिया उसने भाई। अब 40 and counting. हर गेम में मार रहा है भाई अब। They might know your position यार वो पे। आर्च कोई नहीं। अच्छा यू जस्ट डॉज कर रहा है क्या? No, he's just taking his time. ओके
2 एप्स एक है आयरन मैन एप्स कार्ड की साइड ओले का दोस्त को ले लिया मैंने वॉर। अरे भगवान। अच्छा इंडियन क्या है इसके कंपैरिजन में? उनके उनकी टीम क्या है भाई? माइनस गोबर पास। हाँ उनकी टीम क्या है उनकी टीम? फ्लैशिंग ए शॉट। उनकी टीम में इंडियन क्या भी है यार। यस तेरा बेस्ट प्लेयर कहाँ है स्टैड? मोटो स्मोक गाइस आई विल फ्लैश Stell dodged the last. वन डिंग So yeah, ban. जीत गए फाइनली है ना। हां आर्च वाले को देखना एप साइड मैं राइट जा रहा हूं बहुत ही बढ़िया आर्च नाइस जीजी भाई फकिंग बीच फाइनली जीत गए भाई। मैं था भाई। अरे मेरे तरफ से ऐसे ही गॉड लाइक होल्ड रहता है। डस्टो खेलेगा क्या? हाँ खेलेंगे। ट्रेन खेलेगा वाले? ट्रेन भी खेलेंगे। शेडी लोगों से पूछ। भाई गाली दे देंगे। D2 दिख रहा है शेडी सीधे। शेडी का D2 अच्छा है। What happened? Who won? हाँ D को जीत गया। रेवन कहाँ हारेगा यार अब वो पलट फेर कर देगा लीडर बोर्ड का पूरा। वो smoke through wall through he killed piece. अरे ऐसा ही है भाई। अब वो सब थ्रू मारेगा। मस्त ही होता जब वो कॉल आउट देता है यार। स्मॉल पिट मे बी साइड आल्सो। Ting ting ting. एनआईपी का टी साइड कब ठीक होगा यार? फुद्दू कहेंगे। नबी का तो चांस ही नहीं था यार, वो तो फेस गलती से हार गई ओवर बस। अभी बट ब्रोला टी में तो ज्यादा टी मारते साइड नहीं तो तो जीतते। टी साइड तो एनआईपी बहुत ही फुद्दू खेलती है यार। सिटी साइड तब भी ठीक लगता है नहीं उनका बे, देखने में। तू शायद स्टैट्स नहीं देखा है बोले। वही तो ऐसे देखा। बोला कि एनआईपी का इन्फर्नो का जो टी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है अक्रॉस ऑल द मैप्स। पता नहीं इस वाले मैप में तो मेरे को बिल्कुल कोई स्ट्रेट ही नहीं लग रहे थे इनके। फुद्दू की तरह जा रहे थे फुद्दू। फेस का न्यूक देख के मजा आया मुझे भाई। क्या खेल रही थी फिर। ओवर पास में तो क्या इन्फर्नो में तो ये लोग 2 राउंड ऐसा कुछ थ्रो कर दिया एनआईपी वाले। थ्रो क्या कर दिया, चूती की तरह खेले। वही थ्रो तो नहीं करता कोई। हाँ वो थ्रो ही था वो लास्ट वाला। ऐसे टैग तो पुश करके मर गया एक बंदा। ऐसे टैग तो हगा ना ऑप्सिस आर्च पे हो चिच्ची। नहीं है ना बेचारा, ऑपर है नहीं ना, करवा रहा हाँ ऑपर है ही नहीं वो बंदा। डिवाइस ले सेकेंडरी ऑपर है वो। कोई कोई मैप में करता है। डिवाइस चाहिए उन्हें। अगर प्रॉपर चाहिए तो डिवाइस चाहिए। एंशिएंट अगर होता तो ये लोग 6.0 खाते ब्रो के हक देता लगा देता। एंशिएंट तो और मुश्किल होती है लेकिन एंशिएंट निप भी अच्छा, एनआईपी भी अच्छा खेलता है। हैम्पस कैसे खेल रहा था बे? हैम्पस फेंक के मार दे रहा था। मन में बना दे रहा था मॉली से। ब्रोलन कितने बार तो बनाना में ऐसे ही मर जा रहा था यार। ट्विस्ट कुछ भी मार दे रहा था। मैं समझ नहीं आया 2-3 बार उन्होंने पता है कि हाफ फुल मॉड्यूल नहीं डाले हैं। ट्विस्ट बनाना कितना फास्ट लेता है। वही नहीं ऊपर से उन नाइपे वाले हाफ फुल मॉड्यूल नहीं डाल रहे थे फिर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उसको। 3 बार तो 3 खेल 4 खेल। हाँ डरता नहीं है कोई भी टीम के अगेंस्ट बनाना। 3 बार मार के गया भाई उनको। वो खाली पूछता है एक फ्लैश मोड। बहुत फास्ट घुसता है बे। बहुत ज्यादा। हेलो सुपर सुपर को भेज दे क्या डिवीजन 2? किसको?
3 on We salute the dead. खड़ा हुआ है। मैं भी इसके ऊपर खड़ा हो जाता लेवल 8 है भाई वो। कहाँ होगा नीचे वो? हूँ। लेवल 7 लेवल 7 है। अभी तो बहुत टाइम है इसको नीचे जाने में। अरे लगा नहीं। अच्छा लग गया, मर दिया मैंने एक और। सुकुजी भी AFK है भाई, सुकुजी। मैं सोचा था कल एक नया ट्रेंड चालू करूँ, पिस्टल राउंड में AFK हो जाऊँ। जब नाइफ में होता है मैं पिस्टल में हो जाऊँ। फिर बोल ले, मुंह खोले फिर। ऐसा चलो। छेदूंगा ना सबको। मुंह खोलेंगे तो। I hope you fight with Ryan only. किससे? राय? उसको तो मैं म्यूट ही करके खेलूँ। मैं भी। हेलो गाइस। ये लो। चलो गाइस मिशु का इलो ले लो। मिशु का इलो ले लेते हैं अभी। Hello my good friends, I am the very good boy Shady. What the fuck? How are you this fine evening? अरे आज ज़ैपर का फेवरेट प्लेयर नहीं है क्या स्टैन? भाई स्टैन ना बहुत बेकार प्लेयर है। स्टैन भाई। चल मेरा भी इसने माइंड फक कर दिया था डिस्कॉर्ड जो किया ना वो MM में उस दिन MM बोल रहा हूँ सारे जो फेसेट खेल रहे थे। ऐसी। SG में पागल हो गया। बताओ भाई क्या प्लान है? स्टार्ट है। हाँ मैं फ्लैश मूव लिया हूँ, बाकी देख लो। टाइप 2 कर दिया भाई तूने। तुम्हारे पास कौन सा P250 है भाई? स्किन दिखाओ। नहीं मत दिखाना इसका स्किन। नहीं यार स्किन थोड़ी ना देखते हैं। क्या करूँगा भाई? नहीं दूर से देखो इन्वेंटरी जाए। चलाता है क्या तो अच्छा P250 चलाता है? भाई अरे LT जाएगा वो। सुनना LT स्पॉन है उसका, LT को क्या P250? अरे सुनना मैं शॉट स्मोक दूं क्या? हां 2 LT जाओ। चलो भाई। डालते डालता हूँ। हेलो मिड पुश मत करना, उनका पुश करोगा। मिड पुश करो। वॉक। अरे गेम लैग हो गया। आगे रुक जाना। लॉन्ग लेना क्या? दो लोग पकड़ मुझे कार फ्लैश दो। 2 लोग को जाना पड़ेगा लेकिन। हां बताओ। एक लॉन्ग है, जल्दी फ्लैश दे। डाला बी मारा गाइस, बी मारा। कहां चले गया? बी मर गया। बी तो मरेगा। एक डोर है पूरा स्पॉन से। एक डोर है विंडो। ओले खाली जिंदा रहे। हां डोर आउट भाई। अबे यार गया। मर गया भाई। लॉन्ग डेड है। नाइस। एक रैंप पे लास्ट। बढ़िया भाई निंजा की अबे उतनी जल्दी कहां निकला बे? निकल के मार गया साला। अच्छा लॉन्ग फ्लैश चलो। जल्दी कौन है मेरा? शेडी मरेगा एक ही देगा। मिड से खाओगे तुम लोग, मिड रश होगा तो। नहीं भाई चलो। वो है क्या शेडी? भाई कुछ कह रहा है। हां एक था, मैंने कॉर्नर स्मोक दिया। तू दिया क्या? ओके स्काउटर हो सकता है। स्काउटर है। मैं टैग हूं। जा पे एक ले ले इधर आ। SMG दे मुझे। मैं पीछे बैक साइड देख रहा हूं, तू जान के साथ। और स्मोक ले। डीप सिटी स्मोक किया है मैंने। मैं भी टैग हो गया भाई। सिटी फ्लैश दे रहा हूं। 4 स्मोक चाहिए। वाओ 4 स्मोक्स। भाई सिटी फ्लैश है क्या? नहीं कुछ नहीं है। सेफ खेलना, मैं लूं। एक शॉट टैग दूं। लॉन्ग देख रहा हूं मैं। लॉन्ग गन दो ना तुम्हारा है क्या? अरे साइड है। साइड हाँ साइड यार, भरोसा कर लो। एक शॉट है। तो भाई एक शॉट लास्ट शॉट। ओले मैं लूं। हां दोनों है। हां स्विंग करते हैं। मेरा तेरा क्या ट्रेड? तू मेरा ट्रेड ले ले। मैं समझी हूं। मारा ना साइड वाला, क्राउच करके। हां साइड मर गया लास्ट शॉट था। लॉन्ग भी आ सकता है। लॉन्ग या सिटी आ गया। दोनों पे एक के मिल जाएगी बस। हां सिटी है। हां सिटी था। बेंच मेरे को अच्छा हां सिटी है। चल अब मेरे को भरोसा है। हां परफेक्ट। हाइड रहे ओले तो लॉन्ग ही देखी और सिटी आ रहा शॉट। हिट नहीं है क्या? सिटी से साउंड आया लॉन्ग नहीं है। वहां कैसे पहुंच गया बे वो? इतना फास्ट। ओपी भाई मेरा हो गया क्या पूरा? से भाग के गया, मुझे पता भी नहीं चला। एक के दे दो जापर भाई। बॉयज मी शेडी me go with scout, me die, you guys go B, okay? चलो
फोर्स बाय था ना मेरा स्पॉन है सिर्फ। फ्लैश एक ही दे रहा हूं कर रहा हूं और मैं भी आउट नहीं हो रहा हूं, मैं पीछे लगा। मिड का फ्लैश दिया लॉन्ग नहीं लिया बड़ी उन्होंने। लॉन्ग शॉर्ट है बोले शॉर्ट रहेंगे केयर करना शॉर्ट मत जाना अकेले एलटी साउंड एलटी साउंड LT2 है एक्सबॉक्स भाई एक्सबॉक्स है और मत दो गलती है। मैं पिट बैठ चुका हूं, ठीक है। चलो आओ शॉट लेते जा जा रहा हूं लॉन्ग केडी के एक और LT है केडी में एक लॉन्ग फ्लैश करके घुसता हूं हां सेल्फ फ्लैश पे स्टार क्लियर नहीं है। LT एक और है हां साइड होल्ड कर रहा हूं मैं सिटी में। टू साइड आया है अपना चलो छोड़ो उसको छोड़ो राइट कोई नहीं है आ जाओ पुश कर दिया लग रहा है। हां शेडी लॉन्ग देख बूस्ट दे दो मुझे चलो बूस्ट दे 3 HP भाई बूस्ट दे बोला साइड पे आ जाओ साइड पे आ जाओ। एक सिटी था एक ही बंदो भाई मैं भाग रहा हूं आप पीछे आ जाओ। बोले भाई भाग क्या मैं लाल हो गया हूं तो जाओ भाग जाओ दोनों लाल है हो गया भाई मैं नाइस शॉट अरे शॉट था ना एक्सबॉक्स पे किससे मारा भाई वो 250 रख उस गरीब को नहीं छोड़ दो एग्जिट हुआ केडी बढ़ा रहा है बोले लॉन्ग जा किधर है भाई ये एग्जिट किधर Short है? केडी प्लेयर ब्रो कौन है? केडी नेगेटिव केडी क्या केडी मैं देख मार दिया केडी क्या आया है? केडी बोलते हैं लॉन्ग स्पॉन है क्या बोले हां लॉन्ग दो है तो दो फ्लैश है मेरे पास। बोले ऑफ लेके जाता ना हां बोले बस को- तो अच्छा। ठीक है सुनो और कोई फ्लैश मत दो बस मैं एक दे रहा हूं एक शॉट स्मोक कर दो कैटवॉक स्मोक कर दो नहीं नहीं स्मोक क्यों करना है? कौन ये ऑफ लेके जा रहा है? हाँ नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ओले को खाली एक ही फ्लैश दूंगा मैं दिया लॉन्ग लिया नहीं उन्होंने आ जाओ लॉन्ग आ जाओ लॉन्ग कॉर्नर कार केयर मैं दे रहा हूं रुक मिड का फ्लैश क्या कार मॉली किया मैंने और फ्लैश कर रहा हूं। तो शॉट मॉली करता हूँ मैं डीप सिटी स्मोक देता हूं डीप सिटी में डबल दे देते ना अपन। कार क्या डबल दो मैं वो पुश करके सिटी वाले एलिवेटर को मार दूंगा अच्छा ठीक है। एंड मैं जा रहा हूँ शॉट है हां एटलीस्ट दो है डीप सिटी डाला मैंने अबे है ही नहीं अपने पास दो स्मोक। अरे फ्लैश दे सकता हूं सिटी में ऑपर शॉट है शायद। साइड के लिए फ्लैश है मेरे पास भी। एक राइट साइड अच्छा मॉली है मेरे पास सिटी फ्लैश कर रहा हूं सिटी चलो सिटी मारते हैं साइड एक साइड से मार रहा है। एक एलिवेटर है एक साइड बॉक्स एक शॉट है शॉट और एक कहाँ है एक सिटी है दो सिटी एलिवेटर ठीक है एक और ऑपर भी है शॉट का प्लान दे भाई शॉट कर रहा है। लास्ट सिटी जंप शॉट करेगा योर प्लान रैंप फ्लैश है छोड़ दो ना इसको योर प्लान। अरे शॉट यार इंट्रो हो गया था। अरे जबरदस्ती पिक कर रहे हो भाई नहीं उसको सपोर्ट कर रहा था मैं तो सपोर्ट करने आया था हाँ, भाई वो और मुझे पता भी नहीं था एग्जैक्ट कहाँ है ड्रॉप देना मुझे एग्जैक्ट पता भी नहीं लगा अच्छा नहीं है मेरे पास नहीं है वो देना रियन देगा रियन वो देगा ना ये फ्लैश दे दिया एक शॉट स्मोक डाल दो हां डाल दे वो वन वे हो जाएगा बोले देखना मिड पुश के C4 दे यस आ रहा है और एक फ्लैश और एक डाला जरूरत ही नहीं है भाई इसको ये मीशू फ्लैश किया था मीशू सीटी से फ्लैश दिया हां देख के बड़वे स्मोक में होंगे स्मोक में भी हो सकता है हां स्मोक में अरे लॉल यार गुड ऑब्जर्वेशन यार मीशू ने फ्लैश किया वाओ क्या चलेगा अभी फास्ट लेने का ट्राई करूं क्या चल मैं स्मोक डाल दूंगा तू फ्लैश डाल अपना मैं एक्सबॉक्स डालता हूं फ्लैश में डाल लॉन्ग फेक कर रहा हूं मैं लॉन्ग फेक कर रहा हूं मैं फ्लैश के लिए डाल के मैं थोड़ा राइट में देख रहा विंडो के लिए फ्लैश करूंगा बोल के सुन ग्रीन जो भी मेरे पीछे उस स्मोक पे मॉली पे स्मोक डालना मैं फ्लैश दे रहा हूं जयपुर को तू दे रहा फ्लैश ठीक है लॉन्ग ऑफर अबे कहां है बोले तेरे स्मोक नहीं डाल दे हट यार ब्लाइंड है वो ब्लाइंड है मारो ना उसको कहां पर है राइट में बोले राइट में कार नाइस एलटी है ना ऊपर डोर स्मोक करने दो आराम से अरे डोर स्मोक करने दे भाई मेरे किया क्या आ जाओ भी आ जाओ डोर स्मोक हो गया विंडो के प्लांट निकालो एक शॉट है अभी भी मैं टनल जाता हूं
कवर दे दे। उसने मॉली फेल मैं टनल हूँ बोले मीशो आएगा मैं तुम्हारे पास डोर 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 और एक डोर। अबे शॉट बेंच। अरे साइड। अरे भाई अरे क्या होगा अरे कौन मरा टनल पे? ये बेशरम बोलता है विंडो देख रहा हूँ डोर पिक करता है फिर क्या मारा था भाई यार, एक वो मार देता है ना अपना। यार मैं बैठ यार हट दिया अरे भाई वैसे हो गया कॉमेडी तो करनी है। अरे यार पता नहीं क्या हो गया मैं इतना भी गंदा प्लेयर नहीं हूँ गाइस। विंडो बन गया डोर पिक चला क्या इफेक्ट है भाई। लॉन्ग लेट लेना है तो ले लेना। क्या इफेक्ट तो है। ये पिक हेड पे फ्लैश डाला और एक फ्लैश दिया लॉन्ग पे। एक लेट फ्लैश दिया मैंने। हो गया और नहीं है मेरे पास। क्या शेडी किधर है? शेडी इधर है, मैं इसलिए दीवार अरे के इस तरफ है। निकले नहीं हो क्या? नहीं ये ऑफ लगा के बैठा है क्या सीन बोल भी नहीं रहा है। काट फ्लैश दो। तोड़ दो मत जाओ मत जाओ रुक जाओ भाई अपना मुझे कहाँ फ्लैश देना? मुझे रुक जा ऊपर है ओले कहाँ फ्लैश है? कहाँ फ्लैश है? एक अल्टी शेडी में देखो गोले का संघर्ष चल रहा है। मैं जा अरे एक और है लॉन्ग ऊपर। हटा रहे हो क्या शेडी? नहीं रुक शेडी रुक जा थोड़ा रुक। मैं मिड बस होल्ड कर रहा हूं मैं कुछ साथ में जाएंगे। एलटी आउट एक एलटी है। एक्सबॉक्स पे अटका हुआ है यू कैन मॉली। नाइस ये बी प्लेयर था। हां बी क्लियर होना चाहिए। बी क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। जा बोला ना लॉन्ग है फ्यूरियस। हां तो दोनों ए पे हैं। यार हीट करता है जबर। इजी यार। क्लच निकाल दिया येलो। टनल आएगा प्रोबब्ली ऊपर। एक ऊपर है। हां फाड़ दूंगा आएगा तो। विंडो एक आउट है शायद। आ गया। विंडो ही है ड्रॉप साइड आ गया। अरे निकल लेते हो बे भाई हार्ट अटैक दे रहा है यार। बाइंड है क्या तुम्हारा? तुरंत नेट निकल जाता है भाई वो छोड़ रियोन तू ये बता क्रॉस हुआ हम पुश करें भाई सारे यूटिल खत्म हो गए लॉन्ग का। ये बार रिपीट किया लेकिन एक वर्ड नहीं बोला है तूने। ऑफ दे मैंने स्पॉट नहीं किया ब्रो मैंने स्पॉट नहीं किया। एक्सबॉक्स मूव कर। मुझे कार फ्लैश देना फिर से रियान। तू मत जल्दी लेट है तू। मैं दूंगा। मिड पुशिंग फ्लैशिंग मिड। क्या एलटी लॉन्ग फ्लैश दिया मैंने। डाला। आ जाओ लॉन्ग आ जाओ। एक है लॉन्ग एक है एक लॉन्ग है। लॉन्ग पुश कर रहा है। लॉन्ग डोर के अंदर। अरे सुसाइड हाफ एचपी नॉट हाफ एचपी। अरे यार पहले उसको मार दे लॉन्ग। भाई जोन ये गन नहीं है अरे राउंड है। नहीं दिया था यार भाई जब मैं बोल रहा हूँ मिड पुश है। ये कौन मरा है? ये कौन था? वो टकला कौन है? रुको देख लो। ये राउंड इसका वापस का मेरा स्पॉन है जैपर का। कौन था यहाँ पे? भाई क्या चल रहा है ये? एक ही फ्लैश दूंगा बाकी लॉन्ग पे भसड़ मत मचाओ। अपना मिड बिड देख लो। मैं एलटी हूं। हां लर्क में हूं। यस सर। डाला। अरे एक मिड ऊपर है। ओले लॉन्ग फ्लैश देगा। मैं यहां हूं टनल। छोड़ दो। गाइस एक सिटी ऊपर है। शॉट फ्लैश है क्या किसी पे? ना मैं देता हूं। अच्छा स्मोक है यार यहां पर। डाला तेरे पीछे। सुन ना एक मिड पे था एक लॉन्ग है। लॉन्ग से पीछे आ सिटी रहा है। कूदने का मन कर रहा है। कूदोगे क्या? रुक जा पहले लॉन्ग ऊपर है अभी भी साउंड आया। मैं एविंगर दे सकता हूं गाइस। तो एविंग कर देना। तो इस साइड चलते हैं। दे हां एक शॉट चलो ऊपर क्रॉस लगा है क्या? फ्लैश कोई कूद जाओ सिटी मार दो। रैंप ऊपर मैं सिटी पे हूं। हां एक मिड डोर के पास ऊपर है। बी पुश कर करना होल।
पिक कर रहा है। मुझे कौन पिक कर रहा है बे? नहीं मैं रियोन को बोल रहा हूँ। अरे रुक जा ना भाई, हम सिटी पे हैं, वो बी बनाता है। अरे मिड डोर पे बैठा है एक। रियान तुझे रुकना था रे। अरे रुकते ना तुम लोग, जाना नहीं था। कोई बात तुम नहीं, लोग बी बनाते इससे अच्छा। अब बीच में फंसा हुआ था बेचारा। बोला नहीं यार, बोला नहीं। अच्छा ठीक है, फोर्स करना पड़ेगा। हाँ सिंगल लॉस। तुम शॉर्ट एक शॉट दो, एक शॉट दो मुझे स्मोक में जाता हूँ शॉट। मैंने एक ही निकाला है, ठीक है मैं ट्रेड खेलता हूँ। अच्छा साइड ही घुस जाता है। मैं दे शॉट दे रहे हो जाकर? हाँ दे रहा, थोड़ा लेट है। रुको रुको चलो एलटी एलटी पे लो होगा, एचडी केयर करना। नाइस। मिड जाओगे क्या? अरे बेंच एक ट्रैप पे आजा जल्दी आ। एक ले लो एलटी पे। अरे थोड़ा स्लो डाउन कर लो ना। अबे मैं साइड आ गया। रैम फ्लैश डाल रहा हूँ। अरे थोड़ा लेट हो गया। एक शॉट प्लांट ले लो। शेडी तू आराम से लर्क कर, इसको मत। एक मिड से आ रहा है, एक लॉन्ग ऊपर है। राइट वाले मारा दो। एक लॉन्ग ऊपर शॉट प्लांट दो। एक सीटी है शायद, एक सीटी है। हां सीटी और लॉन्ग ऊपर। एक्सबॉक्स नहीं आएगा ना? अरे एक्सबॉक्स हो गया। इधर है, क्लोज ऊपर है ब्लू। मारा ऊपर। ठीक है इस पे शॉट प्लांट है। वन अच्छा ठीक है। ऑफ उठा लेना लंडोरी। ऑफ पे डबल पिक कर लेना उसको। बेटर हो अभी। ओ शॉट रे। ऑफ उठा लिया ना? मैं ले रहा हूँ ओ भाई इसको दे दे। हाँ येलो और एक इसको भी दे दो बे ड्रॉप। अच्छा पूरी इकोनॉमी की मार चुदी पड़ी है बे अपने। तू क्या गए पैसे नहीं? कुछ नहीं, मेरे पास यूटिल नहीं है। पिक कर रहा हूं यार। बोले उसके साथ रह, तू आराम से जिंदा रह। तेरे पास खाली यूटिलिटीज है। हां मैं दे रहा हूं, तुम मुझे फ्लैश दे। ये भी लो। शायद एक ही क्रॉस किया, समझ नहीं आया। कॉल देना। अब दो क्रॉस। वो निंजा पुश करता है, मैं टीबेस के डाल डाला। गंदा हो गया मैं खुद। दे एक्सबॉक्स स्मोक दिया क्या कोई? डाल शेडी एक्सबॉक्स स्मोक कर। एक्सबॉक्स डाला है किसी ने? था मतलब। एक मिड डोर है लेफ्ट साइड। 2 मिनट है। अभी लॉन्ग फ्लैश आया बे कुछ का। नहीं मेरा फेल। अच्छा तेरा है क्या? एक बी है। शॉट लोगे? 2 मिड है और एक वहां है। शेडी में तेरा लॉन्ग होल्ड किया हूं। हां जब बोलेगा छोड़ दूंगा। एक और है डोर है एक और। चलते क्या बी एक और है और एक मिड और है। रुक जा, मैं लॉक स्मोक दिया, मिड टू भी स्मोक है तो डालो। नहीं है। रियोन मिड आउट है। अच्छा नहीं है। एक क्रॉस किया मिड। लॉन्ग छोड़ रहा हूं शेडी में। छोड़ दे। बी नहीं जाते, सुनो ना ये शॉट चलो। स्मोक है। मत ऊपर को मार सकता है तू। पिक कर रहा शेडी। वो नहीं पिक कर रहा, मैं होल्ड कर रहा हूं। फ्लैश दो एक जरा ऊपर से। फ्लैश के लॉन्ग आ गया। देख मैं बोला ना बेंच यही आएगा। गया गेम खराब हुआ ना। तुम लोग बी जाओगे बोले, फिर तुम यहाँ पे स्प्लिट करके खड़े हो। अबे क्या है? कार फक सब अलग क्यों? सुन नहीं रहे। शॉट क्या बोला? ये लॉन्ग कार ऊपर मर गया। सीटी ऊपर। सीटी एक लॉन्ग फ्लैशेस दे देना। एक लॉन्ग एक सीटी दो सिटी। लॉन्ग भी हो सकता है। सीटी आ रहे हैं। 2 ही की इन्फो है। एक शॉट ऊपर। 2 सिटी हैं। अरे ये क्या है? अच्छा 2 शॉट एंड लास्ट दोनों शॉट लास्ट दोनों शॉट। फ्लैश है तुम पे। यार तुम अबे लेकिन ये राउंड क्या था बे? तुम लोग बी क्यों नहीं गए? बी का कौन था इतना? इन्होंने बी मना किया, फिर एशियन में बोल रहा हूँ फ्लैश है, रियोन मिड कूद गया। अरे कोई एक कॉल दे रहा है ना, उसका कॉल सुनो और चले जाओ। मैं फालतू लॉन्ग छोड़ के आया। मैं डेड श्योर था कि मरेंगे हम लोग। रोटेशन दिख रहा था, तुम भी गए नहीं कोई। माय बैड यार, मैंने गलत कॉल दे दी। एक काटो मत बे किसी का। एक बंदा कॉल दो ना यार, एक बंदा दो। बाय करो। मेरे पे 2 फ्लैशेस हैं। एक की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दे दो, सुन लो। हां भाई एक एलटी ना लॉन्ग लेट आउट होना है कि इंडियन क्या भी खेलता है। एक फ्लैश आउट होना है, थोड़ा वेट करो ना सारे। 2 लोग को आउट होना पड़ेगा। रुक ले
अभी मत, अभी नहीं रुको। एलटी पुश टी बेस देख रहे हो ना? साउंड मत दो, रुको। जब स्मोक फेड होगा तब जाएंगे। ऑलमोस्ट हां फेड हो रहा होगा तो डाल। राइट साइड एक। दो लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं। और एक लेफ्ट एक्टिव हो रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई। एक्सपेक्ट की बात ही नहीं है, मैंने एलटी पुश बोला, दे नो इट्स क्लियर। ऑब्वियसली तुम लोग उधर हो, फिर भी तुम लोग वही कमिट कर रहे हो। एलटी पुश का मतलब समझ में आता है, उनको पता है उधर कोई नहीं है। तो ये बात बोलता ना भाई यार, ये तो पता होना चाहिए। मैंने कॉल दिया एलटी पुश, फिर कमिट क्यों कर रहा था ओले? हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है। चलो भाई, हर चीज अब मैं समझाने नहीं बैठूंगा, मैं इन्फो दे रहा हूँ, जिसको समझना है वो समझ जाओ। ये क्या बात होती है? ये बोलना भाई, उनको पता है। मैं एक फ्लैश ले रहा हूँ, मिड टू चलो फुली को करते हैं ना। हां करो। चलो एलटी जाते हैं, एलटी टू। मैं एक्सबॉक्स स्मोक करूंगा और वो करूंगा। एक स्मोक लिया कोई? ना मेरे पास नहीं है। बस चलो उसको मार देंगे भाई। सिटी मिड करते हो, स्मोक तो देना जरूरी है। कहां पर है? डाल फ्लैश डाल, मिड फ्लैश डाला। फ्लैश मिस हो गया। राइट साइड। नाइस किल यार। बी ऊपर फ्लैश से ऊपर टकरा गया कहीं। नहीं, फ्लैश पूरा आगे चला गया, आगे फेंक दिया। मिड गया ही नहीं फ्लैश। बाय करता हूं। भाई तुम छोड़ो, तुम मेरी सुनो। एक लॉन्ग के बाहर होल्ड कर दो, 3 एलटी आ जाओ, मत बोलो। मैं एलटी आ रहा हूं। हां, और एक मिड होल्ड कर लो। कोई एक मिनट में आ जाओ। लॉन्ग पुश नहीं करना है, मिड पुश नहीं करना है। 3 एलटी वाले प्लेयर मैंने मिड पे ऊपर एलटी केयर। हां, तू लॉन्ग देख रहा है। ओके, एलटी केयर कुछ तो वन वे बनाया उसने एक्सबॉक्स चढ़ने के लिए। किया मैंने ऊपर एलटी। एक्सबॉक्स पे किसी ने स्मोक फेंका है। गाइस यूटी पुश हो सकता है। अब तब से क्या बोल रहा हूं। जोत बाय। छोड़ो, जीजी नेवर माइंड। 3 बोला था, 2 आए, दोनों एक में मर गए। नो ट्रेड। साथ में खेलो थोड़ा। अब तो साथ खेल ले तो बोले चल बीच जा रहा हूं। अब देखना ये आएगा, मेरी आवाज सुन के आएगा। वेट कर बोले, थोड़ा वेट कर, वो आएगा मेरी आवाज सुन के। चल शेयर करना, पीक मत करना। ऊपर होगा शायद ब्लू। कहां बाहर बैठा हूं टनल्स के अंदर, यूटी के अंदर। ऊपर होगा? अच्छा वहां, ओके। क्या था ये? इंडियन क्या भी कमाल कर दिया। मैंने हग दिया यार। फक, बी शुड बी क्लियर। नहीं क्लियर नहीं होना चाहिए। क्लियर होगा कल। वॉल्स कर रहा है क्या तू? कैसे पता चल रहा है तेरे को क्लियर? ऊपर लगता है मेरा। उसने बोला 3 खेलने के लिए। अरे तो तुम दोनों में से ही कोई एक गया था ना बी की तरफ, फिर ये आ गया। नहीं मैं गया नहीं था, मैं स्टार्टिंग से मैं बहुत क्लियर था। क्योंकि तू ये बोला था, मेरे को पॉइंट आउट नहीं करना था, तू था भाई। मैं बोला था मैं लॉन्ग देख रहा हूं। सुन ना, लॉन्ग फ्लैश दो ना, लॉन्ग फ्लैश है ना फ्लैश। चलो अरे फिर तेरे को लॉन्ग जाना है तो फिर भाई ये बोलना कि मैं नहीं लॉन्ग फ्लैश है मेरे को। मैं अल्टी लर्क हूं। हां, अपना खेलो भाई। चलो फ्लैशेस नहीं, अच्छा नहीं दे रहे थे क्या? क्या बोल देते? दिए एक नाइस, एक ऊपर है। अल्टी है। ब्लाइंड मार। मिड ऊपर मरा गाइस, एक लॉन्ग है। हां मिड पे ऊपर मरा एक। एक लॉन्ग है। शॉट नहीं होगा, 3 लॉन्ग थे, 4A नहीं खेल सकते हो। शॉट नहीं होगा। कार की तरफ अटका होगा, डबल पिक कर लो। अभी नहीं। नाइस, अब एलिवेटर है। रुको रैन का है, रैन को टाइमिंग मिला। नाइस, बस फ्लैश है, बस फ्लैश है। ऊपर इधर ही तरह है। सिटी दिख रहा है। बॉम्ब्स रिकवरेबल। चलो आवाज आई कहां? हॉट की क्या? अरे ठीक। हार्ट राउंड मिल गया टी साइड, बढ़िया। हां सही है। सिटी इजी है ब्रो। यस आराम से खेलेंगे ना, लॉन्ग लेग कंट्रोल लेके। पहले राउंड ना वो मिड दो लोग भी खेलना बे, मिड पे ज्यादा भसड़ मत मचाना। ये मारने दो भी खेलो। हां सही कह रहा है। इसके चक्कर में एक कार वगैरह से जो भी है। मैं बी जाता हूं, मैं साइड आ जाऊं। मैं आता हूं।
एक कौन खेल रहा है? मैं लॉन्ग जा पोजीशन रहा हूं। बोलो यार, फटाफट पोजीशन बोलो। मैं लॉन्ग जा रहा हूं, ए लॉन्ग। लॉन्ग लो ही मत, छोड़ दो। ठीक है, शॉट लेते हैं, शॉट बूस्ट ले। लॉन्ग नहीं लेना तो एक बंदा शॉट बूस्ट ले, फिर दो बंदे जो भी। कहां बैठोगे शेडी? मैं काट जाता हूं। लॉन्ग फ्लैश ए लॉन्ग पुशिंग। चल मैं जा रहा हूं इन्फो साउंड पे खेल। मैं लोग हेल्प करने जा रहा हूं। वॉक इन कर रहा हूं गाइस। एक ही है, मत जा, वॉक इन मत कर, छोड़ दे। लॉन्ग 2 है शायद। मुझे एक दिखा। बी पे कोने में बैठा हूं। शेडी टनल स्पीक मत करना। मार मैं तो पीक। नाइस हो गया बी कह रहा है। मैं बोल रहा हूं बे, एक ही है। एक ही है, ठीक है। फालतू का तुम एक शॉट है। टनल शेडी। टनल ठीक है। नाइस भाई बचा लिया। नहीं दिखा मेरे को। ओ आ गया भाई। चिल ओले चिल तेरे सामने। ओह नाइस शॉट। कैसे आवाज नहीं निकाल रहा? तुम लोग क्यों बोल रहे हो? और भी है कोई नहीं? नहीं सैम भी था, उसने फ्लैश दिया था ना। हां वो दूर से फ्लैश दिया था बोले। हाँ लॉन्ग ही था, हाई मिड आया तभी तो। प्लीज लॉन्ग फ्लैश देना। मैं तो नहीं आना है मत आओ, बस लॉन्ग फ्लैश देना। मैं दे रहा हूं। हां शेडी कोई। अरे भाई मैंने क्या ले लिया है? बोले साथ चला जाओ उसके। बस आएंगे नहीं लोग। फ्लैश देते रहना। और एक फ्लैश लेके गया हूं तो। बस छोड़ दो। एक हाई मिड करके छोड़ो। नहीं एक हाई मिड है। मेरे पास M4 नहीं है, शॉट मेरे को SMG से खेल रहा हूं मैं लॉन्ग रेंज। किधर स्मोक किया है शॉट? एक हाई मिड है। लो 2 मोर लॉन्ग आउट। एक 60 टैग है ब्लू बॉक्स। कौन दे उसे? एक और हाई मिड है, हाई मिड लेफ्ट साइड था। प्लेटफॉर्म पे M4 लॉन्ग देखना। लेफ्ट में अभी भी है ना ओले? था पता नहीं। वाह किधर? लॉन्ग। वेट कर ले। तेरा ही होल्ड कर रहा है ओले। पीछे ही देख रहा होगा वो। नाइस सुकी एग्जिट देख रहा है, अब तुमने इधर देखा। बम मैं लो हूं। ओ ऊपर पड़ी है ओले। मिल गए जिसके बाद अच्छा तो जी कहां है? वो पहुंच मिल गया। बहुत दूर है। ले स्ट्रेट ड्रॉप दिया लॉन्ग ले। पुली को ताके उनका नहीं। लॉन्ग फ्लैश तो मैं डीगल फ्लैश हाफ बाय था, अभी बाय होगा। लॉन्ग पे फ्लैश दो, हम लेते हैं। नहीं दिया फ्लैशिंग एक दिया। बंदा मैं दूसरा दे रहा हूं। और एक फ्लैश। नो वन आउट। ए शॉट स्मोक है। स्मोक करके जा रहा हूं। ए शॉट मॉली कर दे जल्दी से। कर रहा हूं। जल्दी साउंड आएगा तो बोलना भी पे। हां ए शॉट इन। ए शॉट तो इन नहीं है अभी तक, आएंगे शायद। हाँ आ गया। एक का साउंड आया था मुझे। यहाँ पर। हाँ मैं हाइड कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तू हाइड रह। तू भी कांटेक्ट लेके हाइड हो जाइए, चलेगा। हाँ मैं हाइड हो जाऊंगा, मैं निकलूंगा ही नहीं एक फाइट लेने के बाद। भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को लग रहा है। कोई साउंड है तुझे? नहीं साउंड नहीं। मिड रोटेट कर जाओ, बी डबल खेल। ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ। मैं देख के हाँ तुरंत चढ़ जाएंगे। शॉर्ट हो तो चलेगा, आई कीप लॉन्ग हुआ तो तुम लोग रोटेट कर जाना। लॉन्ग है छोड़ रहा हूं। बोले बी की तरफ धीरे-धीरे बढ़। चलेंगे। बीट स्मोक डाला है मैंने। नहीं है कोई। चाहिए पड़ गई थी भाई। ए शॉट छोड़ रहा गाइस। छोड़ आ रहा। आने दे। सिटी कूदेगा। लॉन्ग से रीटेक हो जाएगा। फ्लैश डाल मिड एक डोर। चलो लॉन्ग से करना रीटेक, लॉन्ग से। एक डिंग द साइड पे नेट फेक मर जाएगा। लॉन्ग है ना हम पे? हां लॉन्ग है अपने पे। मैं आ रहा हूं, टनल देख। डोर्स के अंदर केयर करना बस। ब्लर करो। शॉट 2 है। नाइस क्लियर है। लेट्स गो। एक साइड एक घुस डेड घुस। एक शॉट है। एक डिंग है। एक एल्बो टैमेक्स मर गया। 2 शॉट है। 2 शॉट है। मिड वालों को शॉट से आना चाहिए। अच्छा शॉट एकदम कर दिया लेके। एक काम कर सुनो। शॉट से कोई वाला डेड है, एल्बो वाला तुम नहीं। हां एल्बो वाला मार तो लिया था हमारे सैमेक्स को। पर भाई सेटअप करा के रखना था। गेम अभी हो जाएगा इंटरेस्टिंग। एक लॉन्ग फ्लैश दे रहा हूं। अच्छा छोड़ दो, लॉन्ग मत लो, शॉट ही लो। फोर्स कर रहा है, शॉट ले लो। मुझे बूस्ट दे दो शॉट फास्ट। मैं देता हूं। मैं मिड खेलता हूं। तो लग रहा है बी रश होगा। एक्सबॉक्स स्मोक है। मुझे लग रहा है ए रश होगा।
यहाँ पर वॉक इन करोगे क्या? नहीं नहीं टॉप मिड लो ले लो ना, तुम्हें पिस्टल है। अरे क्राउच कर गया भाई, दिमाग खराब। ठीक है बोल रहा है तो ले लेंगे। ट्रेड इससे अच्छा ट्रेड खेलते हैं। मिल गया ना, मैं जाता हूँ। ठीक है रुको, आ रहा हूँ, अंदर जाओ, अंदर हो ना। लेफ्ट साइड लॉन्ग 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 लोग ये लॉन्ग अरे यार एक बस कहाँ है? लॉन्ग 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 दोनों है शायद, दोनों लॉन्ग है। शायद एक नहीं एक और साउंड आया था, एक साउंड आया था। आई जोली आप नहीं है उन पे? पता नहीं अब तो था ना। लास्ट दिखा, रैम दिखा तुझे? रैम दिखा। नाइस वन। ये था क्या? ये लास्ट टॉपर हो सकता है। सेव कर ले, सेव कर ले ब्रो। अरे ओले कॉल दे दिया कर भाई कि मैं हाइड हूं, अबे सकते हैं। ठीक है मेरे को तू शॉट ऐसा छोड़ के सिर्फ भाग के आया, साउंड होते ही बोला मैंने तुझे। लगा तू लो होल्ड कर रहा है बाहर से, वो इनको है। इको करो। देख तो सही मैं कैसे बैठा हूँ। हमें साथ में घुसते हैं ना, बोल दे दोनों कि मार मैं देते हाइड हैं बी हो वाले। सकते। तू भी बोल दे वापस आ रहा है करके। अकेला ही घुसा। मेरे को शॉट बूस्ट दोगे, मैं उसको घुस के मारता हूँ। ला मैं देता हूँ। अरे भाई देखो, बताना तो नहीं पड़ना चाहिए, बता रहा हूँ। लॉन्ग लेने के बाद एक बंदा रोटेट करके मिड आ जाता है, ए पे 2 ही खेलते हैं अगर लॉन्ग कंट्रोल है तो। हाँ और फिर ले है, डाउन लेकिन बी पे 2 खेल। वो वाला राउंड है ना, वो वाला राउंड शेडी ये बेट खेल रहा था, मतलब स्विच बेट वाला पोजीशन नहीं दिखा मेरे को। लॉन्ग फ्लैशेस भी है, लेकिन अगर मिड टू भी हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा ना। लॉन्ग घुस गए। रुको ना, हाइड कर सकते हो क्या? साइड साइड तीन कार प्लांटिंग एक कार ऊपर, एक अल्टी। देखो ऑलिव मास्टर शॉट गया। एंड तेरे 47 चलो चलो, अभी वो आया है, अभी हमारा गेम है। लॉन्ग ले रहा हूँ मैं, बस एक मॉली है, मॉली डाल रहा हूँ अपना। मैं 2 फ्लैश लिया। तो एक काम कर ज़ैपर ब्लू बॉक्स मार, मैं डोर वो करता हूँ। क्या कर रहा है डोर स्मोक दे रहा हूँ, तो ब्लू बॉक्स मारता शेडी फ्लैश दे देगा। एक फ्लैश दे दे। अच्छा नहीं, तू ही हम जाएंगे नहीं ना आगे। ना दोनों साथ ही निकलेंगे। रुक डाल एक और। अबे मॉली मारा, एक और है वहाँ स्मोक में, छोड़ रहा हूँ मैं। इस शॉट वन, इस शॉट वन है। एक लॉन्ग मिड में रहा है। एक मिड है क्या पर्पल तुम पे? मैं देख रहा हूँ ओके स्मोक किधर हो सकता है? ये स्मोक किसका है? एक बी स्मोक, डोर स्मोक आया। जा बी कर रहा है। लॉन्ग पुश करना चाहिए, लॉन्ग पुश करना चाहिए। कर रहा हूँ। 2 बी, दोनों मारे। एक और लास्ट छोड़ दे हाइड हो जा। वेरी लो। हां ठीक है भाई बच गए। नाइस वन रे भाई, इसीलिए 2। अरे भाई नूब हो क्या? तेरा स्पॉन है मेरे पास, 2 फ्लैश है, ले उसके साथ शेडी के साथ। मॉली दे दे मुझे, मॉली दे दे। अच्छा अभी वीरश आएगा, मार डाला एक फ्लैश। उनका एक फ्लैश है, नो वन फ्लैश डाला। चल मैं मिड जा रहा हूँ। तो साइड से खेलना, विंडो लगाता हूँ। शॉट बैरल। 2 मिनट का इन्फो है क्या उनको? जहाँ पर देखते रहो, मैं हाइड हूँ। रन ठीक है। टनल रन क्या दिख रहा है? ये विंडो दिख रहा है, मतलब टनल दिख रहा है। मैं तो छुपता हूँ। रन लगा ले। कितना आवाज देते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा। शॉट आ रहे हैं मल्टीपल।
विंडो से खेल रहा हूं। सिटी घुस सकते मैं हैं। लॉन्ग पुश कर रहा हूं, मिड से ए साइड आ जा। अंधा मैं अंधा हो गया मैं। साइड घुस गए 4 शॉट। लॉन्ग भी अपना है अगर लॉन्ग से रिटेक क्या है ओले उन पे गन? एक ही एनकोड हो गया, साइड गए होंगे तो। मैं शॉट जा रहा हूं, तुम में से एक लॉन्ग चले जाओ। जा रहा हूं। क्लोज है एक। हिट कर रहा फ्लैश वॉली में बस साइड के लिए। लॉन्ग का कोई गया? हां है गया। साइड है, 2 साइड। करना है क्या स्विंग? नाइस। एक और दो साइड एक और साइड। सिटी मौली कुछ नहीं डालते है बट अरे कुछ नहीं डालते हैं क्या? वॉली करा मैं उस। ठीक है चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट बाय करते हैं क्या सबके साथ? नेक्स्ट बाय कर रहा हूं मैं, एसएमजी ले रहा हूं। क्या साइड है रे? बोली कर रहा है यूटिल क्यों? डिगल देना है, येलो डिगल। थैंक यू। फ्लैश है मेरे को। आओ रायन हम वॉक इन करते हैं बीकन। अरे ओपन चला था। लॉन्ग ही लेंगे वो। वॉकर जाओ तीनों ही चलते हैं बे। हां तीनों। क्रॉस चलो अब चलो। एक आया लॉन्ग, पूरा पुश है। नाइस। गन ले। फ्लैश दिया। इतना गंदा प्ले था मेरा यार, साला अंधा रह गया। ट्राई कर रहे हो गाइस? रुको आ रहा हूं। अरे यार नहीं तू क्यों ट्राई कर रहा है? इसके पास गन है। अच्छा ये भी, अच्छा ये गन वाला था क्या अपना? मैं तो नेक्स्ट वन मेरा भाई है, मैं एसएमजी लिया था। एक किस पे सेव करता है, एक वाला जा मार बे, क्या सेव? हां मारूंगा, रुको ना यार, सिंपल थोड़ी हो। अरे यार एंटी। अरे शॉट आ रहे हैं, शॉट एग्जैक्ट शॉट में। अरे साइड से ऑफ लगा लो, डबल शॉट फॉरवर्ड खेल लो। ऑफ दे रहा हूं भाई, ले लो। मुझे दे ऑफ। मेरे को कोई M4 दे दो, ऑफ दिया मैं डालो। ऑफ कर रहा है। ऑफ फेंकना पीछे हो। डबल है ना जल्दी। हां मैं कर रहा हूं। नहीं अपन दोनों ही रेक्टर है, वो लेट हो गया, छोड़ो। कोई नहीं, लॉन्ग लगा रहा हूं। बी कह रहा शॉट ही रहेंगे हरामजादे। नाइस। एक और दो और मिड। तीन मिनट। अरे रैपर मेरे साथ आना है। कहां वहां भाई मैं कहां से आ रहा हूं शेडी, कहां से घूम के आ रहा हूं? एक तो तुम बूस्ट नहीं ले रहे हो वहां पे। अरे वो AFK है, वो कैसे देगा बूस्ट? कौन AFK? AFK नहीं था, ड्रॉप ले रहा था ना मैं। मिड है मेरे पे, मिड पीक मत करना। शॉट बीडी। मिड टू बी फ्लैश आएगा। मिड टू बी आएंगे। स्मोक आया, आओ मेरे पास आओ रन। हां यही हो। नहीं आ रहे मिड टू। लॉन्ग राइट। मिड टू बी कोई नहीं है। लॉन्ग आए। एक लॉन्ग है, एक अननोन। लॉन्ग एंड शॉट, लास्ट आ गया। लॉन्ग घुस रहा है। कार के पास होगा। नाइस, ना उठा ले। टॉप ले रहा हूं एक भाई, एक और। हां ले। एक बंदा भी अगर शॉट पे बूस्ट ले लेना, जाके उसको मार सकता। मैं दे भी रहा था शॉट पे बूस्ट। नहीं भाई वो नहीं चाहिए अपने को, फॉरवर्ड जाना नहीं था। और मैं करता हूं मेरे पे, एक बार को दे रहा बोले। मैं एल्टी बूस्ट कर रहा हूं। मैं शॉट बूस्ट देता हूं, जाओ मैं साइड देख लूंगा। क्या कर रहे हो ओले? बूस्ट लो। मैं अकेला MP9 से। अरे यार ये अकेले क्यों है? कोई भी गुस्सा भी नहीं। मिड आ रहे गाइस। दो अल्टीमेट फास्ट। मिड फास्ट। रुको, आवाज आ रही है क्या? लॉन्ग फ्लैश दे रहा है। बीन बॉम्बर। अरे यार एक ही फाइट में एक ही है। रन फ्लैश है मेरे पास। नाइस। मिड डेड। अरे यार
नाइस रे। अरे मैं आवाज आ रही है ना, मैं बोला तो था एल्टी जा रहा हूँ, फिर क्या हो गया? नहीं बोला उसने एल्टी जा रहा हूँ। एल्टी जा रहा हूँ बोला था, क्या खेल रहा? एक ड्रॉप मैं दे सकता हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। लॉन्ग फ्लैश देता हूँ। मैं ही जा रहा हूँ, मैं ही जा रहा हूँ। लॉन्ग मेरे को शॉर्ट बूस्ट दे दे भाई, मैं लॉन्ग वॉन्ग मॉली नहीं है, मैं नहीं ले रहा। मैं दे चल कोई नहीं, फिर मैं ही देता हूँ। रुको मैं ही दे रहा हूँ। तू काट सकता है। नहीं आया वैसे वो। शॉर्ट चले जा तू भी ड्राइवर का सपोर्ट के लिए। जाता हूँ। लॉन्ग फ्लैश कुछ नहीं आया। एक आया लॉन्ग। अरे तू मेरा आगे से। सॉरी भाई। दो लॉन्ग गाइस। रैंप आ गया शायद। हाँ लॉन्ग रश टाइप का हो रहा है। आया रैंप आ गया। ऑफ उठा लियो। एक और रैंप। अरे क्या बे तू इससे क्यों भाग रहा है? मेरे क्रॉस में खड़ा रहा है। भाई उनका इको था पता है ना। फक मैन। वेट कर साथ में। साइड है। पॉइंट नहीं है भाई। नेट कर दे, साइड मर जाएगा। अटका है पक्का साइड पे। गन मत कोई बात नहीं भाई। गाइस इको कैसे आ जाते हो यार? Save your molly, you can push short close if they do average smoke. हाँ यार, my bad. छोड़ो जाओ भी, मेरा फोन है फिर भी। मैं शॉट ले लूँगा। नहीं यार कुछ नहीं है। दोनों ऊपर। चलो दोनों ऊपर लॉन्ग ही रश है। नाइस भाई, लॉन्ग रश अभी मारो। लॉन्ग रश है। एक और है। एक और एल्टी दिख रहा है क्या वाले कुछ? नहीं शॉट कोई नहीं अभी। है क्या पिट? एक आया है Xbox। हाँ एक पिट है। एक Xbox। नहीं रे। एक Xbox है। एक लॉन्ग LT। नाइस। और एक बी ए चले गए थे दोनों। लॉन्ग था ऊपर पिट। आई थिंक वो दोनों लॉन्ग जा रहे थे। गन है क्या कुछ? मेरे पे मॉली है, रुको ना जापर। स्मोक भी है भाई, जल्दी सब कुछ समझ। फ्लैश दिया। एक लॉन्ग है जापर। आओ इस पे चढ़ते हैं। स्मोक मत डालना। किधर? रैंप। और लॉन्ग होल्ड कर रहा है। 97 साला। लॉन्ग पे 2 पिक मिल गए फिर मर गए। बाय कर रहे हो? सब फोर्स ही कर रहे हैं। कोई नहीं। तो 3 राउंड से फोर्स ही चल रहा है। वही ना। क्यों बताता बाय करके कौन सा भी छोड़ रहा हूं भाई। बी आ रहा है। बी घुस गए कार। 2 एक टैग। 3 मल्टीपल ऊपर है लेफ्ट साइड। यान बिना बोले खेलेगा तो नहीं होगा भाई। प्लेटफॉर्म क्या गुड गेम। Let's go, people. Laying down smoke. Flashbang. Incendiary. नाइस रॉन्ग। हाईवेड हो सकता है लेफ्ट साइड ऑपोजिट। नाइस राउंड भाई। रन ले लो सारी। जाता हूँ बी, बैठ जाऊंगा कोने में। तुम कोई और जाएगा क्या? रियन का एक के पड़ी है, एक के दी है मैंने बी की तरफ, बी वाले को। आओ एक मिनट लोग ले शेडी फ्लैश दे रहा हूं। हां मैं ले रहा हूं। नहीं देगा मैं। Throwing fire. Deploying flashbang. Throwing fire.
ऊपर दे रहा हूँ चल के मार के ऊपर है एक बी है टॉप हाँ, पर आ टनल्स के अंदर अरे है रिस्क ले लो लॉन्ग पुश कर दो छोड़ो एक टनल्स के अंदर है जीतेंगे भाई। पर्पल हाँ कौन है मैं आ गया हूँ मतलब मोस्टली मिड और बी कर रहा अरे यार क्या बीटी है होल्ड करना मैं हूँ कहता रहा हूँ तुमको नहीं बोलता हूँ प्लेयर को बोल रहा हूँ मिड देखोगे क्या ये आओ आओ मैं आ गया मिड डोर था ये शॉट हुआ ये शॉट प्लांटर और शॉट ऑफ एक शॉट ऊपर है कोई लगा कर एक शॉट है रुको रुको ओले तुम पे फ्लैश है ना दो शॉट निंजा एक एल लगी The desk comment on it as well. We saw Drop giving a rousing speech down the line. I think that's pretty mental, isn't it? Right? It's his second major. It's him trying to pump the squad up. You always assume that's going to go the way of someone like Art as really the front man, as the IGL of this team. But the fact that Drop wanted to do it, I can imagine that's inspired Art. Spirit just taking a full eco now, right? It's all they've got left in the tank, so they're just going to have to wait for these guys to come out in the next. They have beaten the smoke, but good flashes set safe up for the opener. No one's going to get cheeky in this round. Spirit have to concede. It's Hello. only Vox and Hello. casual. It was a good game. बैड गेम really bad जियोन क्यों रहता है टीम में पता नहीं क्या फालतू टिल्ट होते हैं वे लोग आजकल तेरी फालतू टिल्ट होने लग गया बहुत ज्यादा फालतू टिल्ट भाई जीता हुआ गेम स्टार्टिंग से 4-9 स्कोर में टिल्ट अपन जीत रहे 9 पता नहीं क्या हो गया लोगों का ना मेरे को लगता है पीरियड्स चलते हैं मतलब जैसे लड़कियों का चलता है ना ऐसे यहाँ पे पीरियड्स चलते हैं मूड स्विंग्स होते हैं लोगों के। ये तो श्योर हूँ मैं बहुत लोगों का मैंने यहाँ पे देखा है कैल में पागल हो जाते हैं भाई अचानक से 2-3 राउंड बाद ऊपर से रियन माँ कसम ऑफ हो नहीं फिर भी ऑफ चला रहा था वो पता नहीं होल्ड अच्छी कर रहा था जबकि भाई क्या मतलब कोई जरूरत ही नहीं किस बात का टिल्ट क्यों टिल्ट मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या टिल्ट वही करता है इसलिए मैं मन नहीं करता उसके साथ खेलने का आजकल कैल में बहुत जल्दी थ्रो कर देता है भाई वो हाँ भाई अजीब ही टिल्ट शॉट पे वो राउंड तू थोड़ा लेट था बूस्ट नहीं दे पाया मैं तो उसके लिए और तू जा नहीं तू बूस्ट दे रहा था वो जा सकता था शॉट हाँ वो गया नहीं बोला नहीं छोड़ भाई तुम लोग का एटीट्यूड है क्या मैं जब बोलना चालू करूंगा ना फिर दिक्कत हो जाएगी लोगों को और बोल रहा है ज़ैपर तो साथ में आना क्या कर रहा है अरे क्या कर रहा हूँ अजीब नहीं है भाई अजीब गुस्सा हो जाते हैं लोग यहाँ पे आजकल मैं देख रहा हूँ विदाउट एनी रीजन कोई रीजन ही नहीं मानी नहीं कर रहा है क्या मैं भी सोच रहा हूँ अच्छा खासा चलता रहता है गेम खराब कर देता है माहौल जियोन भी मनमर्जी खेल रहा था पता नहीं कुछ नहीं बोल रहा क्या छोड़ रहा है क्या कर रहा है पता नहीं क्या चूतिया है कसम से खेलने की आता है पता नहीं समझ ही नहीं आता अबे मेरे को रियोन को तो मैं म्यूट कर मतलब उसकी आवाज तो बहुत वैसे मरेली टाइप शेडी को क्या हो रहा था बे अरे वो आजकल ऐसे ही खेल रहा है आप वो प्रो टीम में है ना आजकल ये कौन से खाली किताब में लिखा है कि हर राउंड 15 का 15 सिटी राउंड अगर तुम्हें लॉन्ग कंट्रोल मिला है तो तुम्हें मिड रोटेट करना चाहिए अबे करते तो है रोटेट लेकिन वो राउंड पे घुस पे खेल रहा था वो कौन है वो बकलैंड रियोन वो बोला कि ज़ैपर तू यहाँ पे रह मैं यहाँ पे तेरे को वेट करता हूँ ठीक है घुस पे खेला तो मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था उसे बोला मुझे बोलना नहीं चाहिए मुझे सिखाना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ अबे यार क्या है भाई तो हो गया भाई हो जाता
बोल नहीं रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि बोल नहीं सकता हूँ, बोल तो मैं भी सकता हूँ। लग रहा है वो जब हार के ना, वो जब बहुत हार जाते हैं ना लोग, उनकी नहीं नहीं, वही हाल हो गया इसके, जैसे बीच में डाइस को डोज दिए थे ना हमने, वही हाल हो गया इसका। अच्छी टीम से खेल रहा है ना बड़े। नहीं नहीं, आजकल ही हो रहा है वो। ऐसे बिहेवियर क्या है भाई? गेम खेलना सिखाऊंगा तो मैं बताता हूँ कैसे लेते हैं यहाँ पे। क्या ही बोलूं। तुम सिखाओगे तो भाई फिर हम CS अनइंस्टॉल करेंगे, Valorant खेलेंगे। सब आ जाते हैं भाई यहाँ पे गुरु लोग खाने। कैरी कर लो ना भाई, मार के एकदम 30-40। सिखा क्यों रहे हो? सीख लो, कैरी कर लो। बोले तो क्यों कर ले? हाँ? Do you want to play Vertigo? I actually don't want to play any maps. I'm like dodging. मत बैन पड़ जाएगा तुझे, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ हाँ तो कर। अबे मैं अभी 2 दिन नहीं आऊँगा वैसे भी। लो मैं अभी आऊँगा सीधे मंडे अगर आज नहीं। You can play this game. Setting them up. The way they behave, right? I mean, what they can think of themselves. One day they will be like good with you, the whole day they will be with you. And the other day, this happens. This is what happens when people start losing everything. I mean, मैंने ये देखा है, जब बहुत हार जाते हैं ना लोग, तब ये हालत हो जाती है। Frustration आ जाती है। बहुत हारने में आती है, बट ये जीत रहा है। बट ये आजकल ही हुआ है, जब से टूर्नामेंट जीते हैं ना ये। अबे नहीं यार, ओले अभी तो हम खेल रहे थे यार 1 हफ्ते पहले शेडी के साथ। अरे तेरे साथ नहीं कर रहा होगा, बट वो आजकल कर रहा है। अच्छा, मतलब वो फील आ जाता है ना, जबकि मैं प्रो हूँ वाला फील आ जाता है। अबे लेकिन क्यों प्रो सोचते हैं? मतलब अगर तुम हर गेम में चल रेवन बोल दिया तो मैं समझ भी पाता हूँ कि हाँ कोई एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन सबको नहीं बोलना चाहिए। सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम रेवन जैसा, तुम रेवन के टीम में भी खेल लो लेकिन रेवन जैसा नहीं, वो अच्छा प्लेयर है, वो मार देता है 30-40, वो बोल भी सकता है वेंचर, हाँ बोल दिया कि हाँ सिखा दिया, चल ठीक है। कोई भी बोलेगा तो थोड़ी ना सुन के लेंगे बे। मुझे से अच्छे से बिहेव कर रहे हैं क्योंकि दोस्ती आ रही है। कॉल ठीक है, ये क्या खेलना है बताओ, बट ये बोलना कि तुम्हें समझाऊं मैं क्या खेलते हैं लॉन्ग पे, फिर मुझे इरिटेशन होती है उस चीज से। सही में डाइस को भी ये चीज समझाया था, वे शेडी भी वही हरकतें कर रहा। देने आते हैं भाई कहाँ से। That's only over 10 hours a day, Harry. Every day. Dexter doesn't stop. You got to admire the dedication. We saw him in the interview. पूरा गेम में माहौल खराब हो जाता है बे इससे। चिल्ला विल्ला के लास्ट के 4 राउंड हमने फोर्स बाय किया चक्कर में। हाँ वही तो। चिढ़ के लास्ट बाय कर रहा था ओले में, लास्ट बाय देख के बाय कर रहा था मैं, वेट कर रहा था पूरा। सब खरीद ले रहे थे, मेरा बी वाला जब खरीदता था वो बंदा भी लेट खरीद रहा था, कौन पता वो भी सीरियस था। ब्रांड तो भकलंड है वेंचो, और ये थ्रो कर रहा था, हो गया काम इनका। वो अच्छा लगता है, वो बेचारा तभी कह रहा था जीतेंगे जीतेंगे। हाँ वो तो अबे इसीलिए ना वो टीम प्लेयर लगता भी है एक्चुअली। वहाँ पे लोग थोड़े में ना एकदम वो कर जाते हैं। अरे पग खेलना है, अपना गेम खेलो, जाओ ना भाई, काहे दिमाग खराब कर रहे हो। Not had many ops in play either, right? Safe had one in middle, got shut out early. Spirit have had the chance to get theirs in, they have no interest. Flat rifles, knowing at any point Fury can get बात करने के बाद अगर कोई ऐसा बात करे ना फिर दिक्कत हो जाती है। One way down on ramp, but Fury are fighting in front. स्पिरिट अच्छा खेल रही है यार, मां कसम। मैंने स्पिरिट को लिया यार, भरोसा है इसको। फ्यूरिया थोड़ा चोक को कर जाती है यार। फ्यूरिया में फ्यूरिया बट वर्टिगो है, फ्यूरिया कुछ भी कर सकती है। वर्टिगो एग्रेसिव प्लेयर है ना। We are also playing on Vertigo. जीत जाओगे तुम वर्टिगो। डाइस का वर्टिगो, ज़ैपर का वर्टिगो अच्छा है। I don't know if Stan was. कौन है तुम्हारी टीम में? Stan. ऑल द बेस्ट। Stan और जोरो। जोरो खेल लेगा, जोरो तो तो आता है, स्मोक से आता है, लेकिन भाई वही है ना उनका टीम स्टैन। तो है। हाँ स्टैन एक तरफा कर देगा भाई तुम्हारा।
youngest team in the top 30 of स्टैन Counter-Strike right को now. स्टैन को सिखाना पड़ जाएगा पूरा मटेरियल स्टैन यहाँ जाओ वहाँ जाओ तुम्हारा गेम चेंजर वही है स्टैंड उधर का बगूबा है नहीं लग रही है भाई स्टैन की नाइफ भी कनेक्ट नहीं हो रही भगवा को क्या करना है बहती गंगा में हाथ धोना है इजी पर भगवा मन भी नहीं कर रहा है भाई अगर ये यार फ्यूरिया वेटिंग रूम जा रहा हूँ भाई वेटिंग स्क्वाड आ जाओ भाई कहाँ बैठे हो आईपी दे यार गाइस या तो स्ट्रीम कर क्या मैं नहीं कर रहा स्ट्रीम आ जाओ वेटिंग रूम में आ जाओ वेटिंग में मत जाना फिर ऊपर वाले डिस्कॉर्ड में जा They've still got to get past Yuri. They are not disturbed. They're still willing to press ahead with this B play into the lone man for Furia. He's done damage with the Deeg. He's given himself a chance, but Patsy's going to take it over the line. And that's 5 in a row now for Spirit. They are burning, built up and looking excellent on the T side. This creates a lot of worry, Harry. CT sides, like I said, that's where Spirit do their best work. Fury have had so many problems containing these B hits. We haven't even seen a standard smoke wall on A. This is Vertigo after all. It's all about the util game. It's all about burning out planters on that A-bomb site, wall banging with the orb. Safe's not had a chance to run his. And this round's no exception yet again. Back to flat rifles. Dex has finally pulled his in. He's going to finally go for a more standard round here for Spirit. Quick peek, almost gets caught. Flash is good or bad, depending on who threw it. It's going to be Siren overwhelmed at the top of ramp. And Spirit finally show where they've been abusing this B bomb site. That Yuri Arc combo on A is solid yet again. That's all Furia wanted, man. They wanted you to come test them over towards A. Still, Spirit are not out of the round yet. The 3v4 as it all goes silent, all goes quiet. Furia wait with their resources spread thin. And Molly's gone a little wide, so right now you're good to stay alive here. Yuri could just keep waiting in behind the sandbags. Now if they assume that Molly would have pushed him out, they're in for a harsh awakening. They don't, the nade gonna get rid of him. Art's now got to do it all alone. They are coming his way. He's essentially in a 1v3. This has got to be something out of this world. Art dead immediately. Wow. Magic's with the orbs gonna mop him up. Even though Safe comes rotating in, he's out on an island, all alone, fighting back, and he's good for that first kill. Bomb plant for Chopper, and a 1v2 to navigate. He hears Safe burning, and so he'll knock him out. Fake. Drop left to beat, he's faked the run back to short, and there's the re-swing. Drop nails it, gives him a chance in the 1v1, and he'll take it all the way to the bank. Finally, it's the new boys' Spirit to get it done, right? Drop, Safe, these guys hold strong on A. And that was a 3-on-5 the Spirit almost made happen right late into that A recommit. These guys are fighting tooth and nail for every single round right now, and Furia only just put out the fire. Oh, I mean, dude, you can see why they want to abuse the B site, right? I mean, they tried to go A that one time, they tried to test the waters there. And it does get dealt with. That's Furia back on the board. Is that the second win they're hoping for? It's just so expensive, right? You finally win a round, you finally get a rifle round under your belt, but it's 4 players dying. You don't even get that AWP into the next. Furia, they don't get a chance to relax. They have to keep the pressure on, and hey, Art's good at that. Oh, close on the short side, man. Almost got spammed out there. Still Spirit, they might be showing all this attention to the ramp side, but that's not where the bulk of this hit is coming in. It's designed to just keep Furia occupied, keep them busy. Well, this real hit, this B lean from middle again is concealed. Furia have doubled up here once more. Safe behind the sandbags. He's going to need to do something. Does find the double. Safe's dealt with the mid side. Serato out on an island of B getting pressured. They're up through the ramp. Oh, he's going to hold the line with a double. Drop swings in and saves the day. It's the Drop Safe show right now, Harry. Not the guys that we always expect to stand up. Drop with a pretty quiet performance so far these last few games. But no better time to perform. Double up in mid every single round, it feels like. Spirit, they're finally getting worked out. They're finally getting red. A flawless round for Furia gives them a bit of a bank account to fall back on. Spirit, they're running dry on theirs. They need to build back in as well.
keep that pressure on Patsy. Chopper running it up mid. Pace change now for Spirit. Yeah, this is a real change of pace. Save! Trying to hold the line with two. They try to go fast out mid, but they go running into a very safe pair of hands indeed. Man down now, Serato. They are moving up into his bomb site. He's got to stake his claim. Oh, it's a fake again. Gonna drop on out of there. Right now, Patsy is the trigger man, the one trying to get this all going. Oh, and he's quiet on this. Yuri's holding for it. Yuri's ready. And Patsy thought he'd found all the room. That's a grim reminder. They don't have as much room as they think they do. Oh, it's going to wide swing in middle with that MP9. And so Furia, this is teed up for a sixth. They're closing that gap. Finally waking up. About time. I was getting a little worried about the longevity of the series, but Furia don't want to fall quiet. Magic's now, the world is his oyster. Everywhere in the map open, Furia are tucked into their bomb sites. Art's playing for information, but he's got two things to watch. Is Magic's even going to go for this? Flowing around middle, he looks kind of interested. Just waiting to see if Furia give him anything, give him a reason to want to go for it. And someone might. I mean, Furia, they do love going for these pushes, man. They love getting stuck in. But right now, it does feel like Magic's just having to respect this one, give Furia their room. This is a sixth on the board for the Brazilian squad. Now one away from tying this up. Spirit, they might have got off to a hot start, but the times they are changing, the tides are changing. And it's starting to go back the other way. Furia, they had to figure out this mid-to-B problem. They had to figure out how to deal with these splits. And it feels like they've come up with their solution. Yeah, still, it's a great T-side for Spirit. They're not going to be turning their nose up at 7 anyway. They're just going to try and call out a little pause near the end of the half, fight for a couple more. Another broken buy, and a warmed-up Furia raring to go. You know, considering we've had Safe and Drop be the heavy men, be the big powerhouses of Furia so far, we're still waiting for the guys that we know and love. Yuri and Serato, the two of the best clutchers at this entire event with 11 combined coming into this matchup. There's still time for them to awaken as well. I mean, this little drop safe combo over in middle's been great. And, you know, when you're shutting down Patsy, trying to find those little gaps, those spaces to open up over towards the A side, that's got to feel good, right? Yuri's been a real rock in these last couple of rounds over towards that side of the map. Patsy's doing his defaulting again. It's been the same thing every round, right? Dropping that close Naphany smoke, faking it out, throwing Util at the top of ramp, keeping Furia here. And you never know when the full commit is coming, but it's not this time. Again, it's that contact, that dry walk out mid into the double setup that has so often given us multi-kills for save. Will Deja Vu strike again? Spirit want to try and deal with this double mid setup. They want to try and flush it out. Safe. What's his response going to be? They challenged his teammate, and now he's getting aggressive. He wants to try and fight for this, and right now he's got the info. They're not creeping out middle just yet. He's got that first engagement. They weren't ready for it. Chance at the trade, but it doesn't go their way. Safe doubles up, and a 5-on-3. Furia. Just need to walk this one over the line, and they've well and truly recovered this first half, but that's easier said than done. Magix gets one out of the ranks over towards that B bomb site. You kind of got to go back to A now, right? Surely, but no Util, no chance. Art, he plays it like he's got the orb, sitting in the middle of the open. On off angles, Magix will clear it. It's a lovely headshot. He's opened up both bomb sites right now. That's massive info for Furia. They know this guy's rotated out. They should be able to make a good read. Yuri's going to give it up fully because the health isn't really there on two of these three players for Furia. They can't stop a bomb plant. They've got to fight for the site. And Yuri would rather play the info game. With no util the other way, Spirit walk in. 15 seconds, the read is there. Everyone's here, but that's not going to make it that much easier. Still low on health. Going to try and swing this one together. Magix will go out. Nice. And Chopper, as he attempts to trade that, is churned up. Furia, they will tie this game up at 7-all.
Art's often the guy we expect at the forefront of these opening fights, and fair enough, he is 3-1 right now, but Safe is really joining the कम बैक कर दिया भाई इन्होंने तो and so many of ये those क्या है इस टाइम आईपी क्यों नहीं दे रहा हम with two have come with a couple double up in middle, and to think that he hasn't even used that AWP. He had it one CT round and he died to Dexter in middle. Fury, the whole point of bringing Safe into this team was to finally free up Art to get back to what he knows and loves, being that aggressive nuisance on CT sides especially. Now finally Fury, they've crowdfunded, they put all their pennies together and they've got the double AWP. Last round of the half, first तो time कुछ we get to अच्छा see आयरन it. मैन तो It's स्ट्रीम all कर रहा होगा bought into a B rush round. Might not be ideal if it comes down to the retake, right? You've lost that first man. K95's naded out. Safe here with his AWP. Good for the first. And now it starts to draw to a bit of silence. Slows down just for a moment. Do they want to go back? Do they want to try their hand at clearing this flank? That's easier said than done versus Furia. Art in mid. They learn about that double AWP the hard way. And so it's just Magic's left. If he could, he would save, but it's not an option now. Round 15, he's going for it, and he's going to walk into Yuri. We'll check for it, but that doesn't make it any easier. And so Furia, they go on to 8-7 that first half, from dire straits to a streak of their own. That's got to feel fantastic. 7-3 up at one point for Spirit. This T side was coming together, but Furia, they hold on. And they want to make this a competitive series. Yeah, hey, they're favourites after all, but that's only because we're, again, underestimating Spirit. And that's been a mistake for many a team right now. The only guys to even take them out were NIP. Or G2, rather, in that overtime BO1. Everyone else has fallen at the hands of Chopper and friends. And now, where Spirit do their best work, that CT side. You think you saw fast T rounds? You think you saw quick mid to Bs? Check this pistol for Furia. Yeah, let's see what they've cooked up, man. Art's always there, brewing something wild. Let's see, it's out into middle. All five just in a line, gonna try and run it down. They do have Chopper here, but he's dinked right away. That's gonna demand a bit of respect out of him. They're spilling over into the B site. Siren, good for the first, but he's traded immediately after. And so now Spirit are on for a retake. Not what they wanted, not ideal, but they're going to give it a go. They need to try and flush out K95 over here in mid. It might be easier said than done. Smoke in the way right now. Each second they spend on K95 is a second wasted in the retake. They try to go in. Art will deal with that first man, but there's more where that came from. They go back, they flush out the mid player. And now they got to fight forward. Now they got to try to blitz a way in. There's that first man falling. This crossfire's big. And What? Drop! They line up. I don't think he realized it. He didn't even mean to kill the back man. But 2 shots for drop and 2 headshots come flying through. That is one way to steal the pistol away. Felt like Art almost gave Spirit an option back into that round with that push up in the 3v3. Never knows when to quit, does he? But look at that double up. Furia find it, and big smiles on the young guy. 9 rounds to 7 now. Furia keep building. Force buy back in for Spirit. They want to try and be competitive from the get-go. Fighting at the short side, you know you're going to find Art here. He loves to take this pathing. And so Patsy and him will clash. These two aggro players go head-to-head. The Bulls have already locked horns. And right now it's Furia seeing red. A man down. Ramp fight did not go how they wanted it. What's the protocol going to be now? Art, who so frequently is able to hit those timings, find those gaps up through the short side, get there very, very quickly. He's been uprooted, and it's put an AK in the hands of Team Spirit. Oh, this is so nice as well. You don't even need to play many numbers on A. You're going to have that early free kill, you'd think, unless the read comes in. Considered for a second. Patsy's playing timings, but they crept up right beside him. He has no idea. Furia have the perfect way in, but finally spotted. Backpack seen. In they sneak. Spirit is still sitting on this boost, still trying to get something out of it, but Safe has shown his hand and taken 2 with him. Patsy from the short side with another, and Safe is going deep. Yeah, Safe's pushing in, right? Not worried about short. He's going to try and clear a path ahead. There's another. Magic's through CT, now plays his hand. What do they want to do about this? They're going to B. They're running at B with the bomb, but this is risky now. Magic's is here. Psych. Right now, Safe wants to try and go back to A. Magic's making noise. 20 seconds. This bomb's still trapped over here in middle. Oh, it's so close. If this kill goes the way of Spirit, it's all up in the air now. It's anyone's round. K95 low on health, low on time. 10 seconds.
And the slower he is, the more time taken. He doesn't have a lot to play with. He's running it back to A. He can't do it. This isn't a winnable round. Spirit have stolen it away on the force fire. What the fuck? What a play for Magix, man. Tried to get that gun, realized there's simply no time. He can't get that A site. K95, not the same calculations. And those are the moments where the pressure is mounting. Maybe the call is saved. But K95, that's not the K95 I know. He would have gone for it. One bullet ends that round either which way, and none is fired. Spirit. That's not the one I was expecting, especially with the antics out of safe. He did everything he could, 3 kills, and even opened up the path to B. Little did he know he was walking the path to his own demise. Furia put together what they can. Yet again, Safe saves that AWP. He couldn't really get it going CT half, but he wants a T-side AWP at least. Wants those ways in, those opening kills. Moving in towards this B-side, Siren out on an island. It is going to get sandwiched here. Luckily enough, they've got his back. They've bailed him out. That looked like he could have gotten dicey for a moment. Spirit immediately reply, and they're going to keep it flawless. The attempt at turning it all back on its head for Furia. The force buy back in, gets shut out dominantly by the Team Spirit squad. Yeah, it's rounds like that where if you don't get the first kill and start, steamrolling, start knocking over that initial domino, you're never going to get in, right? The crossfires are so solid for Spirit. They've got rifles, whereas you're only left with Tech 9s, tapping at range. Simple round for Spirit, but Furia, they want to buy back in. This is ballsy. This is crazy, and it has to pay off. Yeah, this is wild, man. This is so Furia. They're going to try and run it over middle. Oh, dead right away, right? This MP9 responds. That first man in, safe already cut out of the round. And now it grinds to a very awkward halt, man. Furia, they were hoping for that opener. They needed it as they try to group over in middle. They're going to get stuck out in a valley, man. They're on all sides. They're just bowing down upon them. And so there's the reply. Spirit, they mop up the mid-play. The overzealous force buys now have to taper off for Furia. This is desperation. This is danger. Staring Furia right in the face, and they might crumble under the pressure. Spirit, they look stoic right now. They are calm and tranquil. And Furia, they're the ones in a very, very sticky predicament. Another eco has to be called. You can't go in 3 in a row. That's one step too far. A bridge that Furia won't cross. Again, middle is the call of the port of call. Fast through the Molotov. It does catch one off guard, but here's where the M4 should roar to life. 2 for Chopper. A couple of guns gifted over. Magix doesn't want to let them get it, so he will not. Stopping K95 with a cross. Art goes back, trying to milk whatever he can from this round. Yeah, one more kill would at least make it expensive. And Art knows what he likes. Still in with that swing. Magix is not missing a beat right now. Spirit. This quiet consistency is just creeping back in on that CT side of things. Furia coming in with a pause. Good timing to do so, man. This is where Art needs to try and inspire the troops. Needs to come up with some sort of idea, some way to craft a method back in to Vertigo. It's been a wild game, right? It's not been a typical match of Vertigo, not just with these relentless forces and pacey rounds up on T-sides, kind of what we expected from these two very similar in-game leaders in some regards. But do Furia want to break the mold? Do they want to go back into what is more standard, more safe, fall back into these defaults, try and burn out the util, run these late executes that Vertigo is so often known for? And will Spirit disrupt that? They look keen to do so, right? Even in that last round of middle, just jumping over Con, chasing down these kills while they've got them. Back to mid for Furia, and the same pace we've seen all day. Yeah, not slowing down, right? Not deterred by just how much they've been outmaneuvered, outpositioned, outgunned in these rounds. You wouldn't know based on how they're playing. They're quick out into middle, but all in all, it is a little slower out of Furia here, right? Trying to play some mind games with Team Spirit. I mean, this is the team to do it against. You've got a lot of unproven players here, right? A lot of guys where the question was, how will they perform on a major stage? Patsy and Siren, they're looking real good right now. So you're going to try and put them to the test by slowing it down. That there is an overstep. Yeah. Patsy falls off. Safe with the opener. Art is up through the short side doing what he does best. Now Dexter is that nasty surprise waiting in the ramp smoke.
They're moving in. They're coming through him. They still don't know about him yet. Contact made on the short side, but it's all falling apart. Furia, that's the answer. There's the reply. They take a timeout, and they're immediately in with a flawless round. It does feel like one of those games where whoever gets a first kill just wins the round, and this time at least clean for Furia. That audacious jump through smoke for Patsy. Maybe it's not pressure that gets to him that slows him down. Maybe it builds him up. Maybe it makes him overconfident. Not a move you're going to get away with on a big stage. Furia are ready for it. And that 1-2 punch of Art and Safe that was doing everything on CT side in finding 5v4s, 5v3s, strikes again while the iron's hot. I do love it, man. Like, they take that little tack timeout. That's where, you come to the conclusion, okay, we've tried the fast style, we've tried being in their face. Let's slow it down a bit. Let's explode in the mid-round. Let them develop a sense of security, and then we'll tear it all apart. Siren and Patsy topping the board right now for Team Spirit, right? We were wondering how would these guys cope. We were wondering how would the stage affect them. Doesn't look like it has, man. These are vintage numbers out of these guys. They've been putting them up all major long, and they're not looking to go quiet here in the quarterfinal. All out in the hands of Dexter. It's back to ramp, but it is denied for a moment. It's going to be that short smoke that gives Art a bit of an angle in, a window to find another fight. Patsy takes one, but nades push him back, force a bit of respect out of Spirit. More stand around now, something we never had in the first half. A 5-on-5 with Spirit conceding the bomb site. They don't have the HEs or mollies to really stop a bomb plant. Only one remaining. But this was all a bit of a ruse for Furia anyway. With Drop patrolling the back line in the B site, Furia can double back. Spirit have adjusted their setup. They pulled the player off of middle. It's only a double B right now, and even Siren is concerned with what lurks in mid. No one for the moment, but Yuri could come in late from that position. He's holding a flank. Spirit don't want to get aggressive. They've got to wait for the hit. Oh, it's been boosted up. They put full faith in their captain to make first contact. He'll run on in. The molly will flush this backside player out, and Art is there to find him. Still going through. Art doesn't give up. Double opener. Team Spirit, 3 versus 4. Do they want to attempt this? They don't have utility. They need a kill to entice them. They need a kill to make them want to press forward, and Chopper is trying to deliver exactly that. On the other side of the generator, Drop lies in wait. Yuri with this backstab as well. That's still coming into play through A. Right now, Spirit, they are stuck between a rock and a hard place. They've got to fight their way out if they want to save these guns. Dexter's going to try and thread the needle, try to get out alive in through middle. But it's just a game of consolation prizes at this point, man. He's getting out with the AWP while Furia are putting a round up on the board, tying this game all over again. 11 all. And as they often are, when Furia do get them, it's clean. They put it 11th up with 4 still alive. That's money made over on this T side. Yeah, perfect round out of Art, more than what we expect from him, right? The guy that's taking 45% of these opening fights for Furia on T halves. He does it again, just thrown up through mollies and double kills to break open the B bomb site. Furia, who have typically been very, very aggressive and persuasive in post plants to hunt down these saving players for Spirit, they'll at least allow the AWP into the next round. But that is it for Spirit. That is all they've got to play with. Dexter versus the world. How many hours do you need to win this one? Spirit call attack, but you don't get long. Even those 30 seconds slip by in a moment. T-side woes have been a real thing for Furia, man. So they're digging deep right now to put up these rounds, to turn Vertigo on its head. Dexter's been putting them hours in, but like you say, how many's needed to pull this round out of a hat, right? He's got the solo warp surrounded by pistols. And he's looking down the barrel over in mid. Now we're going to start to rotate away, right? He's going to be super mobile. He just wants to be involved from the get-go. If there's a fight going down, Dexter wants to be there, having a part in how it's played out. Yeah,
Yeah, we haven't seen a Degster that's been going ham all tournament long just yet, but this would be the round for it, right? This is a guy that's, you know, even got a better survival rate than Jame and Shiro, the kings of save. And Degster's been holding on to this orb for a couple now, but he needs to put it to use. Unfortunately, Furia, they're the ones grouping up on the other side of the map. It's only contact for Magic's hiding at the back, given no information just yet, just trying desperately to get a spot. But this Molly, it's going to push him out of position. Furia, they've got an empty open bomb site and there's no one here. Magic's, he has to yield, he has to concede, he doesn't have a choice. And as Furia break through, 12 should be on the board. This one's as good as done, right? This is just going to sail by. The moment Degster was far removed from this exec, there wasn't a lot to play for Team Spirit. At a bare minimum, that orb still comes out in the next round if they manage to get away with it here. Furia up in the lead. And the thing that's most worrying, these last few rounds, they've kept a lot of players still standing. It's going to be a real grind for Spirit to build back into this one. And you're hoping it can all start with this AWP. You're hoping these saves are worth it. Degster, you're about to get pressured, about to get double swung. It's a tag, he does manage to get out of there. How badly do they want to take this AWP away? How badly do they want it? They're going to show him respect, they're going to let the AWP get out, but still, Furia up in the lead now. Yeah, it's one thing to start strong, and Spirit have done that on both halves of this map already, right? They were 7-3 at the beginning of their T side. After winning the Force, they went up 4-1 in the second half, but none of that's going to matter if Fury are the ones to close. It's not who can start, it's who can finish. It's a marathon, not a sprint. So Spirit do need to dig deep at this point in the map. Another buy round, a couple of ecos predicated by it, but this is the time to strike for Spirit. Hello, Art. Art's doing what he does best, man. Fast up the short side. He might need a blind, but they don't know about him still. Patsy will check for it, and Degster, trying his best to trade that out. It's safe, running up the short side, filling Art's boots, and he will get filled with lead. Chopper flies in, saves the day. A B plays all that's left for Furia here. Trying to take the site, trying to overwhelm it. Magix is at least in a spot to push him back, but the bomb is all the way at T-Bridge. They've got to run back for that. It's a big old journey right now. Drop. Goes to go grab it. Serato deep inside of the site. Left all alone here. Spirit is so hesitant. They heard that run back, but they didn't fall for it. They didn't think this was some kind of fake out. They know that this is the true intention, but K-Serato's the question. Magix drops in, doesn't know. K-Serato with one, but it's Siren to trade, and now it's all on Drop, 1v2. Stuck on the site, nowhere to move, nowhere to hide. They're running him down here to trade, and Siren puts it up alone. We've been talking a lot of Patsy, but Siren snuck up into the forefront, into the top of the team, second in the server to save. And no better time to come alive on that B bomb site. Spirit finally break the streak. Yeah, awesome to see these ex-Spirit Academy players, man, holding the line and still offering up these same big performances we had throughout every single stage now in front of the crowd, man. If anything, they're looking fired up. No one wants the lead to escape them. No one wants the lead to elude them. This has been so back and forth. Yeah, trading game. I mean, Fury got a taste of their own medicine that last round with the double up on either which way on the A site. Chopper swinging in as the third man. Safe wasn't ready for it. Hart wants to run it back, though. He wants to run it all right. Patsy will meet him right there with the MP9. Quick trades come through, and again, they favor Spirit. Will that stay the same? Dexter does it through the wall, and 4v2, Furia fall. And you've seen this one before, Drop and Serato, the only players left again, the two that lean towards B, now have to try and craft the 2v4. That bomb is once again all the way in the backline. Furia, even if they get this room at B, they've still got to go back and grab that bomb. Serato fighting tooth and nail to regain some element of control here, but he's cut down. Chopper moves in to lock that one in for Team Spirit. And I've got to say, this clash of Art and Patsy down on the short side, it's been a sight to behold. Yeah, I've never seen anyone challenge him quite like it, right? And at a time like this, in quarterfinals of a major, the first major for Patsy, and not just him, 4 of his team.
That's the thing that's so wild, right? Art's been doing this for as long as Vertigo's been in the pool, for as long as Fury have played it. He's been keen on taking these short side spawns and trying to run amok. And right now, Patsy is besting him in that head-to-head. Easier said than done, without a doubt. Going to be churned up, though. It's the nade to do it, not just the spray. That certainly helps. Dexter, he's going to repeat. Absolute madness down on the ramp. That smoke gives him such a nice way up yellow. He doesn't care. Just peeks in deep, takes another pick, safes out of the round, and there's more for Furia. Chopper's trying to fight. That does leave him really untradeable, just out all alone. No one able to help him there. He needed to go 1-for-1. This is a perfect round for Fury. This is a round they have to win right now, with money on the line for their team as well. They've finally got an advantage, but Spirit are all here. 3 in the right place. It's going to be a brawl, and Spirit are re-aggressing. They want to fight for top ramp. They want to get involved. As that Saiyid's coming in, Siren with the mowdown. Are left in this all alone, and Dexter's going to silence him. They meet them at the top of ramp, and they live to tell the tale. Staring Fury in the face and not falling under the pressure. That's unbelievable. 3-on-4 re-aggro for Siren. He triples up, Harry. How the hell did Furia let him get away with that? Nades out, crossing with flashes, expecting a modicum of respect. They get none of it, and it's Furia calling a third timeout, feeling the burn right now. Spirit are on the edge of success, 14 in their pocket. And with Ancient coming up next, all the makings to what could be a 2-0, no matter how good that map can be for Furia, I sense something's changing. Look, man, Furia went against the grain with the style of counterstrike they play, and for the longest time it was dubbed as just a style that only they could replicate, right? This hyper-aggressive, really unique look. And in a battle of aggro, it's like fighting a reflection right now for Art, man. And Spirit are the ones coming out ahead. Yeah, they say the mirror adds 10 pounds. Well, they get pounded all right. Yuri wants to make do with this A site, finally puts Patsy to bed. It's a big opener, right? You've dealt with the aggro player. Chopper getting flashed out, wants to just escape, doesn't want to hang around. He's going back in, trying to double dip. Chopper brings it back to a 4-on-4. Furia this time, they don't want to get caught with their pants down. They are very, very cognizant of getting re-peaked here. Everyone's still just holding, waiting, hoping that Spirit feed them on the ramp side. It's going to start to taper off. Spirit will show them some respect as now Furia try to move in. Hang on a moment, surely not again. Siren up at the front, he's going to try and fight them around. We've seen this one before. It's happened before our very eyes. This time, he bows out without a kill to his name. Good damage though, and now Dex is just poised, right? Furia expecting dry fight to get some fours. It's a big AWP on the other side. Smokes it down, Chopper goes up and over, and Siren helps out with 2 of his own. How does this guy put a multi-kill after multi-kill on the A site? Furia just can't catch a break. Oh, Yuri with the first. He's going to need to ace this in the 1v3. He's got it down to a 1v2. The Siren stopped singing its song, stopped tempting him in, and now he's given a bit of room to maneuver Yuri. They're going to try and swing him, and Chopper out through CT. Nails the shot, nails the closer. Map point now for Team Spirit. And we said Chopper's not a fragger, but this guy started to step up in the most important rounds now at the end for Spirit. Just not scared of taking these deep A fights, even though he's been challenged, he's been punished for it before. This is this guy's 4th major, but he never made it out of groups, Harry. The Swiss system never gave him that success, but 3-0 in the Legend stage, Chopper leads Spirit all the way to the playoffs, and maybe more. I think they found an opening. They think they found a way in with this ramp control. This time they're going to try and couple it up with a bit of a mid-play. Too strong here. Siren. Oh, there's the first. And the second. Wrestles with the A1S. And he gets out in a 5-on-3. Spirit, this is their moment. This is their chance to close this map. Dexter, that molly. No. That molly is going to force a peak. Furia, their head in their hands. The bulk of the team watching from beyond the grave, just as powerless as you or me in how this round plays out. It is all on Art and Safe. They try to fight together, they try to go as a team, they try to make it happen as 2, but as they lean into middle, Spirit, they will have bodies here, they will have players in position
to start to hold the line. The info now gained. Molly out for Chopper just to slow them down. Doesn't want to let them get pacey. Doesn't want to let them get this control. They are sandwiched in CT, out on an island. Spirit looking to close it in style with a flawless last. Okay, playing the trigger discipline. This is only one. Chopper turns. Follows up with a double. But the trade is there, and Spirit lock Vertigo in. These kindred spirits step up. They stare danger. They stare fury in the face, but they don't back down. They step up to the plate. Map pick of their opponent, locked in for Spirit, and Ancient to follow. This could be a 2-0 upset on the stage for the first major for this squad. Yeah, man, I mean, dude, it's so convincing. Like, Siren topping the charts, 27 and 18. Guy had over 100 ADR. Was so pivotal, was so involved. Him and Patsy, it's the guys making their debut up here on the big stages that really performed in this game. And it gave everything to Spirit. Couple that up with a decision to play that T side out first with a clear plan to exploit the B side, man. Spirit came into this prepared. There is no doubt about that. Oh yeah, and I'm scared of what we've got in store as well, moving forward to a second map of this series. Right now, Spirit are poised to run away with this game. And I don't know if Furia have a response. We had a great start from players like Drop and Safe, but they got cold, they got quiet when crunch time hit, and that can't afford to happen in a quarterfinal. There are no second chances. No, definitely not. I mean, it's even worrying when you look at Art. We always credit him as like the speed demon, the W holder, the guy who gets up in your face and finds those timings to exploit. But it felt like Patsy had his number through and through. It was like watching two identical pieces, two identical styles clashing with one another. And you would always give the edge to Art as the more experienced player there. But Patsy was showing him up time and time again. What a crazy game to start, you know, for Chopper on his 4th major as well. 3 group stages in a row, just gone with nothing, and now running all the way through to the playoffs. I mean, I'm buying in, Harry. I'm buying into the Spirit storyline. I don't think I have a choice at this point. Yeah, dude. I mean, you know, with Ancient kind of locked and loaded, ready to go as the second map in this series, things are teed up for Spirit. Furia are going to have to dig deep. They're going to have to go away in this little timeout now, and they're going to have to reinvent themselves, essentially, right? It kind of took them slowing that T side down, trying to like play the mid round a little bit more, move away from their hyper aggressive style. That was where they found their limited success. But you're making Furia uncomfortable in them even doing that in the first place. So this is a true test now for these guys. Can they pick it up in the break, in this little in-between map timer, right? So yeah, I mean, that's all from us. We'll throw this one back over to the guys at the desk. What did you make of it? Thank you so much for that. Unbelievable, really. Spirit go from strength to strength. They are adding things to their toolbox as we are seeing them developing here at the major so far. We thought this was Furia's map to win. We thought they would be in this from the start to the finish, but it was Spirit at the beginning and it was Spirit at the end. Spirit were a better team. Let's be completely honest about that. We came into this matchup thinking to ourselves that, hey, maybe there's a chance that Spirit will crumble under the pressure. Maybe they're not ready for the big stage. Maybe they can't play as well as they've done so far in the tournament, but that's put to shame right now. I think they played a fantastic game here in Ancient. They were the dominant force, and as you said, Shocks, they got off to a fantastic start, and you could see the players on the stage. They enjoyed themselves. They were spiriting up right. They were playing some fantastic Counter-Strike. Spirit Bomb coming out from Siren right there. That was fantastic stuff coming out from them. I think Spirit are gaining new fans every single game that they play here at this major because this is just so unexpected. The Furia Vertigo is something that teams have feared for a long time. It's something that has literally disbanded rosters when they have won some of these games before. They blow people out regularly on that map. But I think that Spirit has to be, for me, from that performance alone, one of the hardest working teams at this major. The work that Chopper put in there from this map and the Copenhagen Flames result, massive. It looks like a completely different team. Patsy looks like a renewed player. Yeah, Dark Horse workhorses, that's what they are. When you look at the hours they put in individually, but also the work behind the scenes, and as you say, Chopper with that enormous task to replicate what they now have done already in multiple stages of this major, now in front of the crowd. Incredible. So let's break it down. It started off well, is what we said. What did Spirit do so well in the beginning of this game? I think the strange thing about this game is Spirit starting T-side. Yeah. That was a weird choice by them, but it paid off. I think it got into the heads of Furia, a team that is usually going to always win the mental mind games. I think Chopper won that this time around. The strat that I love the most, if we can jump to this one, Spirit showing something new in their playbook. I have not seen Spirit run B splits of this caliber before.
This is round 9. Yeah, this is round 9. If we can jump into that, we will see Spirit putting together something that I don't think they really had in their toolbox before. So we see early on Patsy going for this opening pick towards the ramp. Kind of a default approach, but then they swing into CT spawn. Similar timing that first pick came about. Start fighting all the way into that back area towards A, and look at how they're surrounding Furia. It is usually Furia the ones that throw rounds into chaos, but this time around, it was Spirit. I absolutely love the fact that you brought up Spirit decided to start on that T side, because we heard that he wanted to come in and he wanted to be aggressive, but there's a limitation to how aggressive can you really be on a CT side vertigo when you're playing against a team like Spirit, who also chose the pure violence, you know, who also chose pure aggression coming out right here. I absolutely love that mind game, and Spirit, they won that duel. Yes, fantastic out of them. When we look at Furia's response as the game went on, some interesting developments, right? Safe not on the op, but on the rifle, really stacking up those kills, and I feel bringing the momentum back for Furia. Fully agree. One of the few positives in this game was definitely Safe coming out from Furia with the rifle. We have a round here that's going to showcase that pretty well as well. He's doing a fantastic job. He is just constantly involved with the rifle in the round. This round as well, playing middle by himself, getting a multi-kill. This round as well, getting another one. Safe was the guy, I guess, who took charge of this game on the CT side for Furia. You look towards Yuri, you look towards Caserato, you look towards Art. The fact that it had to come from Safe with the rifle, not with the AWP, is both a surprising and a good thing for me, but also a little bit worrying. It shouldn't necessarily be him, and especially not with the rifle. There was one big moment for Safe where it felt like he was just holding middle. He missed a tripwire shot, one that I'm used to seeing him hit every single time. And then he just went back to this fallback plan of playing the rifle. And right then and there, you see that the fact that he gets proactive in those kinds of moments, like on this round number 14, this is what was so impressive. Jiggle peeking into the angles, now holding a new off angle that Spirit thinks they already cleared. This was fantastic stuff from Safe. Fantastic from Safe, and he was the guy who kept them alive. He was the guy that kept the hope alive for Furia in the first half. They fought back well, but that was mainly down to Safe's rifle work. Yeah, and Art even picked up the op at one point there. I don't know what was going on, but then you think, all right, Furia, you have been pushed against the wall by Spirit here, but now you're moving on to the T side, where usually you feel very comfortable. That aggression, this is where you can really make it shine. What did Spirit do that disallowed Furia from being their aggressive selves? Spirit kept Furia out of their comfort zone. It's something that is so unthinkable, because everybody usually, when it's Furia, they either try to meet the play of Art, or they just try to play a style where they give them the space. They'll retake that sort of space. This time around, Spirit kept playing at the top of the ramp. They kept fighting back from space. Anytime Furia indicated they were taking a part of the map, Spirit said, we're going to meet you 2 seconds later. We'll let you think you're comfortable, but we're going to fight right back. And those kind of moments right there had so many multi-frags. Siren in particular, his re-aggressions, usually he's kind of a stable force, kind of an anchor player. But when he's fighting back, his form is incredible right now. This guy is one of the main reasons for me that Spirit is finding so many upset victories, because he's not always even set up for success. Half of the kills you're going to see right here, no flash, just a teammate right next to him, but they trade so well. Stan was the difference maker. Because you're so right. We always talk about A ramp. बहुत बड़ा difference last time में. Plenty of times. Chopper for that matter as well. Fight on the A ramp. Game मिल गया? Majority of the time. हाँ मुझे भी मिला. बहुत मतलब which they did at the beginning of the game. प्लेयर को बिल्कुल बेसिक मतलब 10% भी नहीं आता है ना, बहुत tilt होता है. When you have an anchor, when you have a guy that is the backup player on the आना side, चाहिए ना. like he did, and also rotate over to A and retake that bomb side, you are going to win your CT side on vertigo. So massive. Will Raven pick you? By far the most valuable player in this game to me. Yeah, Dexter was asked, I believe, in the Legends. Raven won't pick Dice for sure. If you want to see how they are adapting, watch every game and see क्या how हुआ? they're improving. Because I will throw in also. Or nervous. He won't pick me either, but he will pick Ole for sure. ना ना Ole and ये. You will take Ninja, I think. मुझे now नहीं he will take Ninja. Yes. मुझे नहीं लेगा, मुझे हराना है उसको, अपोनेंट में डालेगा. पता नहीं अपनी टीम में किसको देगा. फिर स्टैन दे देगा. स्टैन दे देगा. स्टैन जैसे खेल रहा है ना, बहुत अजीब ही गंदा खेल रहा है. क्या हुआ? ऐसा खेल रहा है पता नहीं. अब मैं भी उसको वर्टिगो मैप ही नहीं. अबे वर्टिगो लगे इतना साल हो गया, अब कैसे लोगों को नहीं मालूम यार वर्टिगो. यार वर्टिगो तो मतलब कैसा है? कितना पुराना मैप है वर्टिगो पे. अभी तक तो सबको आ जाना चाहिए. 4 साल तो हो गया. थोड़े बहुत मतलब तो पता ही चल जाना चाहिए वर्टिगो में. गलत है. ये सैम को मैंने 2 बार बोला, आईपी नहीं भेजी इसने मुझे. Game was too intense. अब स्टार्टिंग में भेजा था. 2-1 था साले.
मुझे भी पिंग किया था क्या तो? हाँ सैम को तो मैंने मैं बहुत offline ही पहले। रहता हूँ, मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आता। मैं अभी भी तेरा मैसेज नहीं पढ़ा हूँ, एक मेरे को दिख रहा है 100 चैट। मैं ऑफलाइन हूँ ना, मुझे दिखता भी नहीं, आता भी सैम नहीं को तो 2-1 में मैसेज किया था मैंने, इंटेंस मैच जबरदस्ती। ये लोग ना मिड पे मेरे को आगे जाने दे रहे थे और ट्रेड भी नहीं ले पा रहे थे फिर। हाँ वही तो वही प्रॉब्लम हो जाती है। तुम्हारा तो कुछ 14-4 चल रहा था, फिर तुमने अभी कमबैक मारा फिर। पता है कैसे मारा था पर भाई मेरे को? जो व्हाइट वाला डब्बा होता है ना मिड पे लेफ्ट साइड पे, हाँ जैसे मैंने फ्लैश करा तो वो डब्बे के पीछे एंटी फ्लैश हो गया, हाँ। मेरे को मारा और जोरो के सामने से वापस भाग गया मिड। सामने से जोरो अब वो हमारी टीम में आ गया क्या दोबारा? अरे नहीं, रे नहीं जोरो नहीं, अब स्टैन जोरो नहीं, स्टैन है। हाँ ठीक है। उसके बाद फिर भागता भागता पीछे से स्टैन आया, फिर ब्राउन बॉक्स से स्टैन को पीक लेके मार दिया उसने, और फिर भी जोरो ट्रेड नहीं कर पाया। लॉल रेवन भागता भागता आया, स्कोप करा, स्टैन को मारा और पीछे चला गया दोबारा। उसके पास तो लग रहा है हेडफोन भी नहीं है, बिना हेडफोन के खेल रहा है। कौन? रेवन नहीं खेल रहा है, हेडफोन में माइक यूज कर रहा था आज। Do you want to play Vertigo? Do you want to play Vertigo again? Yeah. We are bowling now. Works. Ban ancient. I mean anything is fine. Ban ancient. ओले की किस्मत अच्छी देखता था पर भाई, हमारी किस्मत जीतेगी आज या ओले की? अबे मेरी किस्मत गई भाई, वो चली गई ओले। मैं तो हार रहा हूँ, मैं तो लगातार हार रहा हूँ कल से। हम D2 जीता वाला मैच भी हार गए भाई। If I ban ancient, he will pick dust too. हाँ okay. But ancient is okay तुम लोग के लिए, बताओ। स्मोक्स रैपर को आते हैं बस। I can smoke mid. हाँ तो ठीक है, मैं एशियन खेल सकता हूँ। हाँ मेरे को एंशिएंट ठीक है, लगा दे कोई नहीं, मेरे को लेकिन पसंद नहीं है, लेकिन इट्स ओके। No, don't. मुझे पसंद नहीं है मैप। मैं जब पूरा गेम मैं खाली फ्लैश स्मोक करता रहूंगा, फिर मर जाएंगे, फिर 2v3 पे मैं जाऊंगा, मेरे को छेद देंगे कहीं। एंशिएंट तो बिल्कुल मत लगाना भाई। हाँ वही हो जाता है एंशिएंट में तो। बहुत मुश्किल हो जाएगा एंशिएंट तो। एंशिएंट में तो मैं चिल्ला दूंगा। क्या हो रहा है? बहुत मुश्किल है भाई। कैल वर्टिगो नहीं हो पा रहा है कैल में लॉन्डो से, एंशिएंट तो। शेडी के साथ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? पता नहीं, अलग चैट चल रही है, डैश की अलग चैट चल रही है भाई। तू कौन है भाई? ट्रीजी चौड़ा हो रहा है क्या? ट्रीजी तेरे से तो बात ही नहीं हो रही। कैसे भौंक रहा है भाई? ये भी रेवन गैंग का लौंडा है क्या कोई? हाँ अरे ये गुटका छाप है, गुटका छाप, गुटका छाप। हाँ ये गुटका छाप है। तो गुटका का मुंह बंद रख, वो वाला बंदा है ये। फिर माहौल खराब हो जाता है बहनचोद, पता है, मतलब अननेसेसरी। किसी ने इनके साथ ना कुछ बोला है ना कुछ किया, लेकिन वही है। स्पीकिंग टू द मिरर। गूगल करके आया होगा अभी इंग्लिश डिस फ्रेजेस इंग्लिश, ऐसे गूगल करके आया होगा कुछ तो। ओले स्ट्रीम कर रहे हो क्या? हाँ डरता है क्या? नहीं डरता नहीं, सुनाई देना चाहिए सबको ऐसा। तभी और फालतू बोलूंगा मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ तो। कौन पता नहीं क्या समझते हैं प्लेयर लोग अपने आप को, कहाँ के दादा हैं ये। भैया रेवन के आते पागल हो जाते लोग वैसे। सही अभी में तो भाई, कुछ इतना नहीं दिन चल मैं रहा बैठा था कहीं कसम से। जो रेवन की टीम में जाता है ना, उसका रेवन से बड़ा ही हो जाता है पता है। तो लगता है अभी तो अपन भगवान। सही में वे, मतलब कसम से मतलब गाइस 4 दिन में डिस्कॉर्ड पे, मतलब हम लोग खेलते थे 4 दिन क्या 2-3 दिन पहले अच्छे से बात करते थे, भैंचो अचानक से कुत्ता बिल्ली स्टार्ट इसका। सबकी फट जाती है रेवन के आते। अरे पैसा देता है ना, 7,000 में से देता है सबको 100 रुपए। कोई मॉनिटर खरीदेगा, कोई माउस खरीदेगा। तो इंडियन प्लेयर्स पे ऐसी क्या गरीबी है, मेरे को नहीं समझ आता था पर भाई। अबे मतलब अजीब भैंचो, अचानक से पता नहीं इनको क्या होता है बे। अच्छा वो भी होता होगा ना, इनका भी कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइप का कुछ चल रहा होगा इनका। चल रहा होगा इनका। हाँ मंथली वो चल रहा होगा। खत्म होने वाला है तो अभी गुस्सा ज्यादा है। हाँ ओके ओके हाँ। तो कैल लीडर बोर्ड पे आ नहीं रहा है ना कुछ। टीनेजर्स ब्रो, हार्मोनल लोचा हो रहा है इन सबका, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं इतना क्या पता नहीं हो जाता है इनको, सही तो रहते हैं फिर अचानक से भौंकने लगते हैं। तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें डिफॉल्ट नहीं आता। अबे डिफॉल्ट तो तुम ही बनाए हो, भोसड़ी के इन्वेंट किए हो। डिफॉल्ट क्या होता है? रेवन के दोस्त लोग इन्होंने बनाया भाई, अपने मम्मी पापा के साथ बैठ कर डिफॉल्ट बनाया। मम्मी पापा डिफॉल्ट बनाते हैं आज। मुझे सिखाओ आज वर्टिगो डिफॉल्ट क्या होता है।
अभी रेवन पापा कैल में आ गए, अभी हम भी फालतू बोलेंगे। अभी अपना टीम सिक्योर है। नहीं रेवन तो फिर भी खेल लेता है यार, थोड़ा बहुत बोल ले तो चलता है, लेकिन ये गंदे प्लेयर लोग भी बोलते हैं यार, पता नहीं क्यों। थोड़ा खराब लगता है। वही वो 28 किलो है यार, वो थोड़ा बोल भी सकता है, थोड़ा बहुत चलता है। काम का तो वो भी नहीं, लेकिन बोल सकता है फिर भी। कोई नहीं भाई, भौंकने दो अपना। तुम्हारी फ्यूरिया वर्टिगो हार गई पहला मैप। आज तो आयरन मैन भी शिप नहीं कर रहा था, मतलब मैच ही नहीं देख पाया। बोले कौन रह गया? पता नहीं, मैं तो हूँ। स्टैंड डॉज करेगा मस्त। हाँ स्टैंड ने 2 बार डॉज कर लिया। भाई आगे क्या डिफॉल्ट नोट्स वाले सारे नोट्स बना के आगे ज्यादा इंतजार नहीं। Dash 2 against Raven after a long time. हैं? Playing Dash 2 against Raven after a long time. ओह, लिखते हैं रेवन किलर नाउ। Then defaulting on 9. चलो ये फ्यूरियस 2.8 किलो है क्या? वो ऐसे खेलता है तो मैं ओपिनियन होली में अच्छा खेलता है। फ्यूरियस की खासकर ऑफ बहुत अच्छी है। वेटिंग रूम में जाएंगे आपसे, बेस्ट है। खासकर ऑफ, बाकी का पता नहीं। Ready? मैं बी जाता हूँ, 2 बी खेल लो। I'm not going LT this time. It's getting expected. Conducted. बी बनाता ही है वैसे। B, I'm going B. मैं देखता हूँ। Laying down smoke. ये लॉन्ग है हमारे पास। इस शॉट अभी आया नहीं है कोई। ठीक है। Outside B. They were trying B, I think. हाँ, एक हाई मिड है। ठीक है। Still might. एक्सबॉक्स से शॉट गया है। एक मिड डोर है। मैं डिंग को मुझे मारने आ रहे हैं। भाग क्या रहेगा मिड? हाँ एक आया, 2 शॉट हैं जाएंगे। और एक बी की तरफ है। हाँ बी मुझे कोई नहीं दिख रहा अभी तक। I'm watching mid from window. लॉन्ग भी कुछ नहीं है अभी तक। ये शॉट क्या है? Mostly a shot. ये शॉट क्या है? ठीक है। ये शॉट फॉरवर्ड एक। ऑलरेडी है? A shot one more. ये शॉट घुस रहा है। ये लॉन्ग देख रहा हूँ मैं। ये शॉट घुस गया है। साइड घुस गया है। बोले जिंदा रहो ना, छोड़ो ये लॉन्ग है मेरे पास। हाँ मैं साइड पिट से देख रहा हूँ। घुस, अब पूरा साइड आ गया। Mid. एक साइड On B. हम मैच इतना ग्राइंड करते हैं, वो कैल तो कहाँ ही खेलते हैं। इको करो, इको करो। Eco.
अरे तो म्यूट सॉरी करके खेल रहा है। कोई बात नहीं। अरे मैंने बोला शॉट यार, मेरे को लगा लेट्स सी एलटी यूटी पुश। मैं तेज हूँ अल्ट तो साइड फ्लैशिंग बी क्लियर। तो साइड में बैठा है चलो किसी के पीछे मार देते हैं। तो साइड में बैठा है पकड़ते हैं जो एक साइड आ गया ये था क्या स्काउटर? स्टिल है। कैन आई गेट द स्काउट? या ये टैग दिया शायद से मैंने उसको वॉल के थ्रू। टू लॉन्ग, टू होल्डिंग लॉन्ग। अभी इनका टैग लॉन्ग एक साइड ए रहा है यार उसको टैग कैसा टैग था बे? कौन टैग था? 47 था शेडी। टैग थ्रू वॉल निंजा। थ्रू वॉल। या थ्रू वॉल था। बट नो डिंक निंजा, आई ओनली डिंक्ड हिम 32, दैट्स इट। ना आई गिव हिम No 47 tag, शेडी। ओके फाइन, मैं लॉन्ग जा रहा हूं। लॉन्ग लॉन्ग आ जाओ। लॉन्ग फ्लैश मैं फ्लैश अच्छा चलो ठीक है मैं गोइंग बी। नहीं है फ्लैश पिक करो हमको पर भाई कुछ है तो है नहीं। सुसाइड पुश। एक और फ्लैश डाला। बी फ्लैश नथिंग आउट। फ्लैश मिड एक फाइट शॉट इन एक वन का मिड और यूटी। एक कौन है तो स्टैन? ऐसा क्यों खुला में घूम रहा है? बी 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 सैम एंड मिड आल्सो। मिड टू बी वन गेस इन बी। आई एम वाचिंग मिड टू बी। स्टैन अबे स्टैन असॉल्ट से मिड फाइट क्यों ले रहा है? सैम लेट हिम प्ले इनसाइड बी, ओके टेक हिम बी। मेरे को मिड नहीं चाहिए। आई वाज गोइंग यू बिकम द मिड बी रोटेटर। अरे वो तुझे एम पे मार देंगे स्टैन यार, तो साइड के अंदर खेल। ठीक है और तीन लॉन्ग जा रहे और ज़ैपर को ये कंट्रोल जो भी होगा हम तीनों लेंगे। यू टेक केयर ऑफ मिड एंड बी। ओले विल प्ले मिड, आई विल प्ले। हां स्टैन तो बी के अंदर खेल बस, इजी। चलो लॉन्ग देख रहा हूं मैं। यू सॉ वन सिटी। अरे तुम्हारा इकोनॉमी देख देख 4 का प्लेयर रहेगा ये। बोले लॉन्ग पुश हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। एक साइड आ रहा है, साइड दो पे है सिटी। दो हैं। एक बोले कार छेद एक देगा साइड। कोई नहीं बोले छेद। अरे यार बोले घुस गया। होल्ड नाइस 91 तो 70 में भी दिया था। आई एम सेविंग थोड़ा। नो डोंट ओके इको कर रहे हो भाई? इको कर रहा हूं। इको ठीक है। लॉन्ग लेट फ्लैश दूंगा फिर मैं। ड्रॉप एंड पिस्टल। नहीं लॉन्ग कुछ मत ले, शॉट ले लो तुम। तुम शॉट लो ना। ले लो। ठीक है। नहीं गाइस शॉट ही लो, लॉन्ग मत छोड़ दो। नहीं कुछ नहीं है। बूस्ट ले ले। बूस्टेड है डाइस। साइड नहीं जंप। लॉन्ग लिया। एक्सबॉक्स आराम ज्यादा ने लॉन्ग लिया। बोले पकड़ाएगा। यूटी है मेरे पास पूरा, बी कुछ नहीं है। छोड़ दो भी। छोड़ दे। ए शॉट इन। यू विल पिक सून। फ्लैश है मेरे पास एक शॉट के लिए। हमारा एल्टी एक और एल्टी। डोर मिड डोर। टू मिड मॉली बुझी नहीं। मिड स्मोक करा उन्होंने। दे कैन गो बी आई गेस। ये शॉट मॉली कर दिया बी के। हो सकता है साइड डोर ऑलरेडी। छोड़ दो मुझे। छोड़ दे। बी भाग क्या रहा है? एक टनल। दो भी भाग क्या रहे? सेव कर लिया। एक शॉट था। Bomb has been planted. Try to save only. We can bet 2 up. इसको मैं मार दूंगा अगर वो। सिटी आया। एंगल खराब है वो ले। चलिए। Buying one up. मैं लॉन्ग लूं? नहीं लूं। ले लो लॉन्ग। Go take long. I'll flash. But who is coming? Go be stand. Dice is coming. अच्छी करी मैं आ रहा हूं। Do not be afraid. Let's go. Flashing at. Throwing flashbang. Throwing flashbang. Incendiary out. यार मेरी वो लग गई साइलेंसर। एक और आएगा फ्लैश। इनसाइड डोर ओपन। वन वे Smoke.
Sam, you have to watch short now. शॉट देख मैं भी देख नहीं रहा हूँ। बी पे इसका इन्फो है। हाँ, इसने आवाज दे दी है, बी केयर करना। फ्री खाएगा ये। Incendiary. साइलेंसर लग गया यार। लॉन्ग रीटेक कर रहे हैं। नाइस लॉन्ग। वन मोर लॉन्ग। बंदे, एक और लॉन्ग। तो शॉट कोई नहीं है अभी। एक शॉट आ गया भागते हुए। वाचिंग शॉट। शॉट घुस गया पूरा। होल्डिंग क्या सिटी है? घुस गया ऐसा। ए वन ए लॉन्ग क्लोज हाफ वन ए लॉन्ग। स्मोक डाल तू स्मोक डाल। आया एक आया। मरा एक। राइट साइड लॉन्ग। नाइस राउंड भाई। सैम कैसे बचा? वॉली तो आने दे, पहली स्मोक कर दिया था। This smoke was for me to pick over car. ओके। अच्छा। कल हो गया था। स्टैन का वैसे लॉन्ग स्पॉन है। मॉली कर दे। स्टैन मॉली कर दे। मैं भी जाता हूँ। मैं बहुत लेट हुआ। इस साइड ऊपर राइट साइड। मरा। मेरे को ब्लू पेन वो दे दो। एक और एलटी है। मिड डेड। एक और मिड आया मिड एक। वापस जा रहा है। Help him mid. एक्सबॉक्स पे है। मैं जाता हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। नहीं डोर पे है क्लोज एक। भी कुछ स्टैन को अगर एक फ्लैश लॉन्ग फ्लैश किया ना स्टैन चीज मरेगा। यहाँ पे छुपा हूँ। Ninja likes to play short. आया हाई मिड है लास्ट। फ्लैशिंग मिड। Can push long. Stand. आवाज आएगी ना। One time में। Jump down here. लॉन्ग कह रहा। लॉन्ग क्या? You can come down. करेगा। मैं टी बेस आ गया। Only holding you stand here. मत जा ओले। मैं टी बेस पे हूँ। मरा। नाइस। ऑफ ब्लू क्या? नहीं। Now we have. You ace Ole? यस। Going B again. रेवन को डिलीट मारा मैंने सुसाइड में। फ्लैश करो। हाँ लॉन्ग डाइस आ जा। इधर स्टैंड जा। Let's go. Can't beat us actually. जंप पिक करके जाना। Flashbang. Incendiary. बी कह रहा। नथिंग। Deploying flashbang. Laying down smoke. Throwing grenade. मिड जा रहा हूँ फर्स्ट ना सब। टैन तो बहुत साइड पोजी है। Throwing smoke. आया एक भी। स्टैन भी आ रहे हैं। एक भी क्लोज है स्मोक में। Smoke. मिड टू बी केयर। देख नहीं रहा हूँ। स्मोक कर दिया मैंने। ठीक है। बस तू टनल में वो प्लेटफॉर्म में खेल, मैं तुझे कवर दे दूंगा। Smoke. एक शॉट फॉरवर्ड एक। Watching. Shady might try to jump seat. I'm coming back to A. मैं मिड टू बी देख। बस टनल देखते रह तू। हाँ मैं देख रहा हूँ। एक ए शॉट फॉरवर्ड पूरा। अरे यार मिड एक आउट मरा एक। क्या टाइम है यार। एक ए शॉट फॉरवर्ड। What? A shot in. मैसेज पढ़ने में पड़ गया। A shot in. Yeah, I think he's already ninja. Throwing flashbang. Here, one more issue. Incendiary out. एक मिड डोर है, मिड डोर क्लोज। आने दो ओले, मैं देख रहा हूँ, आगे नहीं आएगा। दो है मिड, दो मिड है। ठीक है। एक मिड एक ए शॉट। हाँ वापस गया हो। A shot. Throwing flashbang. ए शॉट फॉरवर्ड एक। मिड पे कोई नहीं है। मिड क्लियर है। मतलब मैं जहाँ तक देख रहा हूँ डोर्स। ये रेवन रहेगा एक। Both a shot. बहुत शॉट है। साइड जा रहे हैं। साइड पे। Don't let him plant push. नाइस। Off city. Elevator. City elevator. इतना कॉन्फिडेंस है भाई तेरे को जंप पे थे अपने। अरे मर जाएगा 1 HP रे। टाइटन के लिए क्या तारीफ करूं। वो तूने 1 कर दिया था क्या उसको? बहुत टैग हो रहा था। Now no long spawn boys. Now we take a short boost. अबे मैंने मोबाइल में देखा मिड पुश हो गया भाई। भगवा भाई। टेंट बी रेडी रहना। हाँ नेड डालता हूँ राउंड काम आ जाएगा। हाँ एक्स्ट्रा फ्लैश है। तू
ओले के साथ अच्छा ठीक है शॉर्ट ही आ जा कोशिश कर स्टैंड तो प्लेटफॉर्म से खेल ताकि मैं तेरे कवर दे सकूं सैम गिव बूस्ट टू डाइस आई विल फ्लैश लॉन्ग एंड कम ओके ओके डाइस गन आउट रहना क्योंकि थोड़ा मैं लेट आप लॉन्ग ले रहे हो क्या? नहीं 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 मैं खाली एक स्मोक कर रहा हूं वन वे एंड आ रहा हूं बस कि उनको फ्री ना मिल जाए पूरा थोड़ा चल मैंने मिड नहीं देख रहा हूं एक स्काउटर है मिड एक लॉन्ग आउट है स्काउट शायद एलटी पूछ लोगे? हां रुक एक एलटी हां स्मोक कर तो क्या मत पिक मैं कर रहा छोड़ दे फटाफट हम ज्यादा है पूरा वो जेंटरिस के लिए पिट स्काउट सारे गाइस आप पीछे ठीक है अरे नहीं मैं बोल रहा हूं फ्लैश है आपके पास है ब्रो ये शॉट फ्लैश दे दोगे आगे जब मैं बोलूं? नहीं गिरा रहा हूं डालो रुक बहुत दूर है वहीं से डालो डाला ये शॉट नाइस यार नाइस दे आर पुशिंग सैम होल्डिंग कार वन पुश्ड ऑलरेडी रैंप आई थिंक नाइस वन एक यूपी था लेफ्ट नहीं शॉट से खा सकता है अच्छा लॉन्ग से खा सकता हूं ठीक चल मैं देख रहा हूं अभी देख रहा हूं शॉट देख रहा हूं फिर मैं आगे देख रहा हूं मिड देख रहा है ना बोले मैं दोनों देख रहा हूं ठीक है डेड लॉन्ग गाइडेड ठीक है नाइस राउंड यार ऑफ गोस वी हैव मनी एक्चुअली बट फिर से लाइक स्ट्रीम नहीं मेरे पास है तो दे दे अरे सर पॉड कर रही है वेलकम टू द स्ट्रीम यार गाइस लाइक करो यार स्टैंड अपने हिसाब से खेल ठीक है पी पे तू अपने हिसाब से मैं तो बोलता दो भी जाओ वैसे हां मैं बी के अंदर ही चले जा रहा हूं हां गाइस आ ही जाएगा मतलब हम लोग मिड आ ही जा रहे हैं बुस्ट नहीं हो गया सब लोग पता नहीं देख लो फिर मैं वॉली करता हूं फ्लैश दिया वैसे पीछे ही दिया बहुत नहीं है लॉन्ग स्टिल लॉन्ग राइट लेफ्ट ए मिड मॉली डाली उन्होंने मिड टू हु स्मोक मैन मिड आउट मिड टू बी नाइस वन एक डोर है हाउ मेनी मोर नाइस वन लास्ट शॉट सिटी कूद सकता है नाइस वन रे यार नाइस कवर ड्रॉप यू ऑफ अच्छी टाइमिंग मिल गई कुत्तों की तरह आ रहे थे वो मारने के लिए मॉली करने आऊं ब्लू पिन कौन है दो देख लो देन जैपर ये भी छोड़ दैपर वही कौन है छोड़ दे वो बीरश के रब की बार मॉली स्मोक सब कर दे आई ड्रॉप्ड ऑफ फ्लैश वन वे स्मोक का थोड़ा ठीक करेगा हां पिक कर रहा फ्लैश कर रहा हूं डोर ओपन होल्डिंग डोर डोर स्मोक करा हां क्या ये शॉट आ सकते हैं ब्लू बॉक्स क्लियर है ये शॉट आ सकते क्लियर छोड़ूंगा आई ड्यूटी के इधर पूरा ये शॉट और मिड डोर मॉली डाला ना मिड फ्लैश आए मैंने अभी कोई दिखा नहीं रहा शॉट ये लॉन्ग रीटेक करा फ्लैश है हमारे पास सन नो रुक मैं आता हूं सैम व्हाट शॉट ऑफ रीटेक करा ये लॉन्ग उन्होंने हां ठीक है मेरे पास नहीं है नहीं करा मॉली कर दिया बॉट फक दे स्मोक डिप सिटी फ्रॉम शॉट एक शॉट मारा एक आया बी पे फ्लैश सैम आई एम लीविंग गो दे आर कमिंग शॉट शॉट फ्लैश चला गया शायद से उरे यू कैन लीव एक है सब है अपने पास सैम जिंदा रहने लॉन्ग देख रहा हूं अबे सिटी को दे मेरे ऊपर ही खड़ा हो गया वो नाइस इजी रिटेक एक ए लॉन्ग है ए लॉन्ग ऊपर एक ए लॉन्ग नाइस गाइस लास्ट बैरल होल्ड कर टाइम नहीं है कुछ कर नहीं रहा मैं सैन तेरे सामने आएगा नाइस राउंड गाइस थैंक यू गुड राउंड एनॉर्मिटी प्लेयर और व्हाट ब्रो इंटरेस्टिंग मैच यस अबे रेवर्ट को क्या गिराया अबे मैं ड्रॉप करूं ऑफ थैंक यू
I'm going B this round, huh? Double B. Stand B, मैं भी B. ठीक है मैं मिड हूँ. I would suggest take short post and हाँ take short post. Mid picking one. अरे लेफ्ट साइड है. थोड़ा जंप इस साइड तक बोल रहे हैं. जंप 50 फ्लैश भाई. लाइन में छोड़ रहा हूँ. ऊपर मार गया यार. बी पे लगा देना. ऑफ लगा दे. फ्लैश ले जा. ऑफ लेके भाग बी के अंदर. प्लेटफॉर्म डेड. नाइस वन रे. एक और पिट है. बी घुस गया होगा. केयर करना. और एलटी कुछ नहीं है. बी कोई नहीं है अभी. फ्लैश करो व्हेनेवर यू वांट. कदा आ रहा था तेरे पीछे पीछे. एक लॉन्ग है. Throwing smoke. Grenade out. ये तो एडवांटेज राइट. Flashbang. पे फ्लैश दिया. Deploying flashbang. अरे यार मेरा गेम क्या हुआ? Did not see misclick. I can walk from long. डाइसू खा सकता है. लॉन्ग से. लॉन्ग क्लोज है. One more. One more long. One more long. Money ramp. मैं एक फ्लैश दूंगा. रैम फ्लैशिंग. राइट आ गया. रैंप अभी भी. साइट है सर. राइट 1 HP. मैं चोट क्या सैड खेले यार. हेडशॉट ही खेलेगा वो. नाइस राउंड. बचा लिया. अरे वो फ्लैश नहीं डालना था रे. वो बंदा हो गया. नहीं फ्लैश भी नहीं. थोड़ा अरे ऐसे कुश्ती मारने क्यों जा रहे थे उसको? सब थोड़ा कॉन्फिडेंट ज्यादा थे. अरे मैं तो वो डाल रहा था यार कि बंदों को बचाऊंगा मैं. तो सही डाला. ठीक है पता ऐसे खुले में खड़े हैं सारे अपने बंदे. मेरे को वैसे भी मरना था चाहे फ्लैश करो ना करो. मे बी ही इज टिल्टेड नाउ. फिर से मैं बी जा रहा हूं. डबल बी खेलता हूं. नहीं लेकर हम जाते तो ऑफ पड़ी है हम पीछे. अरे बाप. Come here. सिक हो रहे हैं. नो वन मिड. बी केयर. बी रश केयर. Hello flash. Server lagging. Throwing grenade. हाँ मिड पे. Throwing smoke. फ्लैश रहेगा. Throwing flashbang. टॉप में देख रहा हूं मैं. फिर भाई स्मोक में से. ठीक हो गया. Along dead. Raven dead. One more P topper. Laying down smoke. मैं बी पुश करूंगा. स्टैन ठीक है. वो मुझे मार के घुसेगा तो उसको मारना. Watching along. Throwing flashbang. एलटी कोई नहीं है अभी. ठीक एलटी तो मार्क कर रखा ना. हाँ मैंने मार्क. ठीक है टॉप मिड देख रहा हूं मैं आपका. यही लग रहा है. बी क्लियर. स्टैंड शॉट. बी क्लियर है. Flashbang. They coming in. Good LT भी किक है. एक फ्लैश है मेरे पास. रैंप पे गोली लगा रखा मैंने. रीटेक है. साइड ऊपर साइड चढ़ो. फ्लैश है मेरे पास. हां डाइस. फ्लैश बचा के रखना. ज़ापर भाई को लॉन्ग मिल गया. एक रैंप. ऊपर होल्डिंग ले. पर फ्लैश दे रहा हूं. रुक. डाला. रैंप चलते साथ. चल रैंप पे. नाइस रीटेक यार. और उठा लेना. ठीक है. तूने पैसा कितना है? रुक तो डाइस. डिफ्यूज मत कर. पैसा कैसा है? अच्छा दो आपकी तो जरूरत नहीं है. पैसा तो है. मेरे को एक ही लेने का मन था. टेक साइड पे है. ले लो. मेरे पास है पैसा. They know we are not taking long. Yeah, now we will ना. Drop on number play. डाल दे. Expecting B ओले. मैं तो बोलता हूँ डबल B खेल. हाँ मैं डबल बी ही खेल रहा हूँ. 100% भी है. लॉन्ग ले लो आपकी बार. हाँ मैं तो ले रहा हूँ. 100% भी है. ये तो लॉन्ग होगा या बीरश होगा. Deploying flashbang. Long flashes. Long take है. I'm behind. Flash. Flashing boom. Throw. Incendiary out. I'm smoking door. Oh, behind the smoke. What? Deploying flashbang. स्मोक में घुस चुके थे. हम लोग के फ्लैशेस आते वो घुस चुके थे. स्मोक होता है क्या? मरेगा. हाँ उनका ही था. अरे नाइस. टैग. एक और मिड है यार. मिड डोर एक.
बेंचो भाई मेरे को भी स्मोक से ही मारा, स्मोक में घुसा हुआ था। आवाज चला रहा उसे। फ्लैश थोड़ा मतलब हमें जल्दी से लेना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ ये फ्लैश मार देते हैं। अरे बेंचो टोटल 3 लोग मारे मुझे लग रहा है हम लोग। 3 टोटल लग रहा है 3 या 4 लोग गए थे। अच्छा 4 लोग गए थे लॉन्ग ना? लॉन्ग ना? हाँ 4 थे। मुझे ऑफ देना, मैं M4 देता तुझे पे। हाँ दे रहा हूँ मैं। शटडाउन देना चाहिए था हमें। सुनो ना शॉट लेते हैं ना, लॉन्ग मार चुका है। ठीक है तो बी खेल। कोई नहीं मैं हूँ ना। सैम बूस्ट जल्दी मेरे पे बूस्ट लेके उसको मार। बी चल 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 बी एक दो बी एक और साइड मुझे आगे शॉट। एक और दो एक प्लेटफॉर्म में टनल है। नाइस शॉट। लो आ रहे कितना लो? मे बी वन मोर। एक विंडो के नीचे प्लांट कर रहा था। ठीक है ऑन वाचिंग मी। एक साइड पे बैठा हुआ है डाइस, जहां डिफॉल्ट पे प्लांट करता है ना वही उसके नीचे बैठा हुआ है। ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ यूटी से कार साउंड है कार। एक कार है। कार क्लियर नहीं कार क्लियर है। प्लेटफॉर्म नाइस राउंड गाइस। अरे एक इनॉर्बिटी प्लेयर भारी पड़ रहा है भाई। भारी पड़ रहा है इनॉर्बिटी प्लेयर। एक भारी पड़ जा रहा है बस। ले लेता हूँ। अब कहाँ पे है एक और? विंडो के नीचे कर देना। पैसा नहीं है। बहुत प्यारा राउंड है यार मैंने सबको टैग दिया। मैं एक और मार देता, वो ऊपर भी अंदर था। ड्रॉप हो सकता है? मैं दे रहा हूँ मैं। ड्रॉप द अच्छा उसको डालो। मैं सैम लास्ट राउंड। अच्छा आई नो व्हाट आर यू गोइंग? ओके ठीक है नो आई गॉट इट। सुनो ना 4 लोग लॉन्ग ले लें क्या ये राउंड? हाउस द न्यू मॉड इज गुड। अब थोड़ी आदत पड़। क्या चल ना 4 लोग लॉन्ग लेते हैं तो अकेला मिड है। मैं स्मोक कर दूंगा तो अकेला मिड है। ठीक है ठीक है फ्लैश वन मोर। चल के फ्लैशिंग। मैं ब्लाइंड टू ब्लाइंड। एक लॉन्ग क्लोज। वन मोर। एक और डेड। एक हाई मिड है बस। क्या साला एक हाई मिड दोनों हाई मिड है। दोनों हाई मिड। एक मिड तो क्लोज आ रहा होगा। नहीं पता उनको। एक भी नहीं है उनको नहीं पता। हाँ I'm pushing Sam. I'm also pushing. Zapper is hammered already. Care B door. Mark B door Sam. जी आगे भी flash. Zapper का क्या है? Chill. I'm holding window. Pushing. प्लेटफॉर्म में Flashing. Wait don't flash it Molly. अरे यार मैं Molly bench flash. No flash. अरे यार बेंच क्या फिर Molly? क्या हुआ? अरे मैंने स्मोक कर दिया ना। मेरे को लगा अभी फ्लैश करेगा मैं निकल जाऊंगा स्मोक से। वो स्मोक में आगे कर रहा था, लर्क वाला कर रहा था, पीछे गिर गया। मेरे को लगा फ्लैश करेगा ना, मैं सोचा कि तुरंत स्मोक करके निकल ही जाता हूं इसके फ्लैश में। I can buy P250 for you guys if you want to smoke. Buy smoke and double flash then. Flash lock. सुनो ना मैं बहुत दूर है। यूट्रस करते हैं एक लेके फ्लैश कर। मैं मिड देखता हूं जो इन दोनों के लिए फ्लैश कर। मिड पुश नहीं है किधर है? Sorry वाले। सिटी है। सिटी दो या नॉर्मल दे दूं? सिटी स्मोक दे। Just block one side. Flash पे है। हम घुस गए भाई। लर्क कर रहा है। हां ब्लॉक घुस गया। साइट आ गए। 6 hit. डॉट है। रीटेक खेल रहे हैं वो। आपका इंपॉर्टेंट हो गया थोड़ा। बूस्ट सिटी बूस्ट। They're going long. They're going long. लॉन्ग है वो। हाँ long multiple. सिटी भी एक और सिटी। long के देख रहा हूँ लॉन्ग देख रहा हूँ। दोनों लॉन्ग। Mid. निकलो। कार फाइट ले रहे हो यार। मैं निकलते यार जब ज़फर भाई ने किया था। मैं रिलोड 3 राउंड हो गया था। प्लांट थोड़ा हाइड ही रहता है यार। इजी राउंड था बे अपना।
अरे वो बूस्ट ले गए ना तो उससे पूरा हाँ तो अपना एडवांटेज हो गया उधर वो बूस्ट में, तो बूस्ट से खड़े होके छेद दे। मैं बाय कर रहा हूँ, तुम लोग इको करना है तो मैं बाय करता हूँ। बाई कर लेते हैं। मारने का मन है इनको। मुझे लॉन्ग एक कार फ्लैश देना है। किसी पे फ्लैश नहीं है? नहीं फ्लैश किसी के पास नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा था तुम लोग इको करो, मैं ट्राई करना था। मतलब टेक 9 रखता है बस, मेरी क्या गिर दो भी गए लॉन्ग 2 है। लॉन्ग 2 ही है। हाँ एक शॉट बूस्ट ले सकता हूँ। M4 भाई एक का लॉन्ग। LT है मेरे पास। मेरे पास डिकॉय है, फेक फ्लैश हो सकता है। We'll try mid to be. C4 तुम With यहीं that छोड़ के decoy. गए हो। Be ready with the decoy. I'm smoking now. Giving mid push or what? Push. मिड ले लो, बी खुल जाएगा। एक कार खेलता, बी साइड वाला प्लेयर कार। अरे स्मोक के पीछे से यार सालो C4 तो लेके जाओ यार। अरे यार पता है क्या उनको बॉम्ब का? पूरा मार के गए मुझे। हो जाता। बूस्ट लेके मारा क्या? टायर्ड हो गया बेंच। वो पहले से लेके बैठा था बूस्ट शायद से। No. Boosted left. They had long control, then they boosted him. निकल गया था शायद से वो शेडी। शायद मत बोलो यार। शायद में मेरे को लगता है सबकी पोजीशन मारूं मैं। सब 70 डैमेज। वो जिसने भी C4 ड्रॉप किया था वो ठीक डोर के सामने फेंक गया वहाँ। मैं तो किया ही नहीं भाई बहुत। रश में कैसे फट गए भाई? We will make them cry. एक लॉन्ग पुश है, 2 लॉन्ग है। The right side still. Double pick him. Again. Left side one more. Double mid. Left and right. एक सीटी एक मिड। नाइस शॉट। नाइस शॉट्स था। एक और सीटी आएगा। आयरन मैन है, देख पिक करेगा तेरे को। डॉट ऐसे ही है बेंचो। अरे ये भगवान लॉन्ग खेल रहा है क्या? हाँ तो कौन है? नहीं है बेंचो। भगवान भी चाहता है कि एक लेट लॉन्ग ले। I'll give you card flash. भगवान मार रहा है भाई। मैं यूटी रहता हूँ। डबल डिजिट पे लॉन्ग रीटेक करो, हो जाए तो बताना। रीटेक कर रहे हो क्या? बी खोल दूंगा मैं। हाँ लॉन्ग रीटेक। शॉर्ट स्मोक कर रहा हूँ मैं। Watching push. Ready. हो गया। कर रहे हो? डाल। मिड का एक फ्लैश डाला। दो। बोले एक और फ्लैश डाला मैं डीप। डाल। राइट साइड है, राइट साइड पूरा है। Dead. एक और लेफ्ट साइड है। नाइस वन। नाइस वन। नाइस। बी क्लियर। हाँ आ रहा है। स्टैंड खाली रोटेशन कट। अरे डोर पुश कर दिया बी का एक। बी पे एक है। ए जाओ भाग के जा सकते हो तो। Confirmation. देख के हाँ। One must be city for sure. Elevator के। Upstand ना? आयरन मैन है। Get goose. Get goose. Now get shot. भाई हिम्मत है भाई। ले लो ये शॉट। He's saying come में shot से। सिटी है। City one. Deploying smoke shield. नाइस शॉट। Plus city then. ऊपर था वो।
use your flash. राउंड के लिए खेलेगा, गेम जीतेगा। ओ शॉट रे, आओ बैठा ले। क्या मारा है यार स्टैंड, नाइस शॉट वे। ऐसे मारा कर अच्छा लगता। सेंसी चेंज कर रखे ना तो नहीं लगता। सुनना ड्रॉप जल्दी ड्रॉप। मुझे इस रैपर को ऑफ पकड़ा दे लॉन्ग, कब पिक है? पिक करोगे लॉन्ग? हां दो जल्दी दो। एक डाल जाए। आप गरीब हो। कोई नहीं, मैं डीगल चला लूंगा। फेंक रहे हो मेरे पे, हराम जादू। अरे रे मिड बी, एक सेकंड। मिड पुश कर रहा है, राइट साइड मिड। राइट साइड पुश कर दिया। हां राइट साइड है। You went back, Asher. Could be holding. I have a flash. Flash. Or behind. Shot forward. Shot dead. Fully off. नहीं पेपर चल। नहीं है, तू चला। बुलाऊं? मिला क्या मैं? अबे नहीं, मैं पागल है क्या? अरे डीगल है बस। Go shot. One mid. अरे रेड था सैम, एक मिड दो। नाइस वन। एक और लास्ट भी मिड आ जा। ये लॉन्ग मिड ओले। अरे Take me ESC behind you. ओले ऑफ क्यों नहीं ले रहा? यहाँ पे लेना। अबे गंदी थी, कहता रहा हूं। भाई साहब मैं ओले को दे के थक गया भाई। अरे मेरे पे कोई गन नहीं थी। ऑपिंग पे मैं अबे गन नहीं थी। मेरे को पता है नहीं थी, मैं डीगल मांग रहा था तेरे से तब से। मैं बोला डीगल दे। मैं ड्रॉप दे। Should be go. ये शॉट पुश किया रहा। Getting long. Double net drop. या लॉन्ग नीड हुए हैं। शॉट लगा रखा One pushing long. दू क्या फ्लैश वाला? Give him sound of running back after the molly. शॉट फ्लैश दे सकता हूं मैं। वो लोग शॉट ही हैं। You can take a shot, we will execute a shot. Wait. Chill. I'm not going short. Wait. मिड भी फ्लैश दे सकता हूं। हां। अरे इसने डाला। मिड का फ्लैश दे। रुक जा। डाला। C4 TVS. LT के। ये स्मोक में छुपा हुआ है। अरे यार वो स्मोक में छुपा हुआ है। मत नहीं। एक एल्टी। नाइस वन। मिड। नाइस वन स्टैंड। बस भगो। हां इजी। किस्मत है मेरी भाई, कसम से। Mid door. Smoke it. He might take off and save it. तू ऐसे क्यों करता है इतना पहले से? सॉरी, फ्लैशिंग आउटसाइड आया। नाइस राउंड है। क्यों करेगा वो? ये छूट जाएगा थोड़ा सा, मतलब भाई ऑफ से नहीं कोई भी आता भाई नेक्स्ट राउंड भाई उनका क्या करेगा वो? 1v1 था भाई। गेम भी ऑफ ले। मेरा थिंकिंग अलग है। पास करना जरा स्टैंड। बूस्ट दे सकते हैं वैसे। ना बूस्ट। मरा भी एक। Give me card flash. मैं दे दूंगा। एक मिड ऑफर है, मिड मत जाना। एल्टी के मिड पुश कर स्टैंड। तेरे बोलते डाल दूंगा सैम। Flash now. डाला। ऊपर मिड यार, बच गया, जस्ट बचाओ। बोला मैंने। हां नहीं मतलब मैंने स्मोक के ऊपर एक एल्टी है शायद। फ्लैश किसने करा? He was right side. उसी ने किया होगा। मैं जाता हूं। ये शॉट स्मोक डाल रहा हूं। But why? We have advantage. We can stick together. Go anywhere we want. आओ बी बनाएंगे। बी पे ऊपर एक। बी पे ऊपर है विंडो, रेवन ओपनिंग कर रहा है। नहीं जा सकते बी पे। हां हो सकता है प्लेटफॉर्म आ गया हो। रीके है उसका इजी। मार्क कर रहे हो क्या ओले? अब तो चल सकते हैं, चल आ जा। मेरे को C4 पे आगे चल। कहां है यार? नीचे से आ गया वो। टाइट पे। ठीक कर आ गया। छोड़ ऑफ नहीं करने। सुन मैं बी फ्लैश करता हूं स्टैंड। साथ में चलते हैं, ज़ैपर भाई को लर्क करने दे। ठीक है मैं लर्क करूं। मैं अभी आ ही रहा हूं। आ जाओ। राइट डोर करो क्या? प्लेटफॉर्म आ गया वो। अरे यार कहां लेफ्ट प्लेटफॉर्म राइट प्लेटफॉर्म डीप प्लेटफॉर्म। बड़ा है प्लेटफॉर्म यार, जल्दी बता। तुम लोग को जिद्दी में ना मैं खेलना नहीं चाहता, पता है? मना के मत जाओ बी पे, फिर भी तुम जाते हो। फिर भी तुम, अरे वो छोड़ो, मैं मना कर रहा हूं मत जाओ। I'm saying मत जाओ। Why do you want to like speak like a fool entire? मत जाओ, मैं वही मना कर रहा हूं। छोड़ो उनको। एक ही बंदा है वो ऑफ कर रहा है, तो क्यों तुम उसको जा रहे हो मारने? गंदा कर लेते हो यार तुम। ओवर कॉन्फिडेंस में मत मारो। और ये क्या एंट्री है? तुम लोग आता ही नहीं भी घुसना क्या? आराम से छोड़ देते हो उसको। मैं तब से बोल रहा हूं।
लॉन्ग फ्लैश है मेरे हाथ में। डाल 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 डाल। अरे यार पूरा घुस के अंदर हो। मिड का स्मोक डाला है कोई? रीटेक कर। अच्छा शॉट लेते हैं, शॉट लेते हैं। साला इतना गंदा लग चल रहा है यार। हम मार के सकते हैं। आप ट्रेड में एटलीस्ट। मेरे को नहीं मेरे को लेना ट्रेड, मेरे को मैं जा रहा हूँ आगे। डीगल है मेरे पास। एमरेड एचपी दिखा तुझे लेफ्ट साइड। टैग हुआ एक बिट एक। रुको मैं स्काउट ले आता हूँ, ट्राई करता हूँ पे मारने का एक। बी डोर पे ऑफ है यार। डाइस लॉन्ग पुश आएगा। यही होता है यार, सब अलग जा रहे हैं हम। इट्स अ फोर्स भाई, इट्स ओके चिल। नो नो इट्स 3 ए पे है ठीक है। आई एम गिविंग सम कॉल्स ना, यू हैव टू लिसन टू एक 2 शॉट फॉरवर्ड थे और एक पीछे की तरफ था बॉक्स। Thing is, we could not trade even one guy. That was the problem. Okay, there is no problem. Like, if we play like this, we will lose. At least give some damage to the economy. Now they have 10k. Take care of yourself. करो जैसा। मैं LT जा रहा हूँ। LT का कॉल देना। LT कोई देख नहीं रहा। मिड मॉली आई है। मिड डोर ओपन। लेफ्ट साइड पे ऊपर था। स्टिल टीपीएस हमने ए कंट्रोल ले लिया है। मैं C4 ला रहा हूँ। स्मोक है अपने पास? We have smokes? नो। बी पे 2 अंदर चले गए। फ्लैश भी नहीं है। कुछ नहीं है। ओले मैं जंप करता हूँ, साइड वाले को मारने का ट्राई करता हूँ। क्या करना, आना कहाँ है? ए शॉट पे साइड वाले को मारने का ट्राई। लेट्स गो। अबे चल घुस मरा घुस वाला मर गया। गन ले। आए बॉ मैं लॉन्ग से आ रहा हूँ। अरे बहन चोद। C4 लेने गया था यार, था ही नहीं। लॉन्ग केयर हो सकता है एक लॉन्ग डोर। लॉन्ग शॉट भी क्लियर घुस है लॉन्ग है। लॉन्ग बैठा है लोडू का। एक और मिड डोर एक। ओके एक मिड डोर एक। राइट साइड मिड डोर लॉन्ग पिक हिम नियर ब्लू बॉक्स आई थिंक। थोड़ा रुकना। मिड स्मोक में, सीटी स्मोक में मिड एक। लॉन्ग गाइस सोलो। यस C4 नाइस वन लास्ट राउंड। मेरा सिटी वाला बस ब्लॉक को लो। कहां जाओ? आ रहे हो? साथ में चलते हैं। डाइस को आने दे। डाइस नियर ब्लू बॉक्स साइड। यहीं पे क्लोज लॉन्ग की तरफ भाग रहा है। आपकी तरफ से। नाइस राउंड यार। नाइस को यार। क्या निकला भाई को। अबे जब वो शॉट से गए तो लॉन्ग कैसे जा सकता है? अरे मैं C4 लाया ना, मैं मिड पे मरता अगर मैं पकड़ा जाता तो इसीलिए। वैसे वो मिड पे भी मरता है। सही बात। हाँ इसलिए मतलब मैंने ट्राई किया कि लॉन्ग चलो, क्योंकि फिर C4 वो ऊपर देखता ना, फिर वो नहीं दे। शॉट स्मोक कर दे रहा हूँ। LT दो ऊपर रहेंगे उनके। ऊपर पिकिंग में। शॉट स्मोक नहीं हुआ। लॉन्ग ले लिया 2 लॉन्ग लिया उन्होंने। मिड फ्लैश करा है। टेक ए शॉट गाइस, विल एग्जीक्यूट। फ्लैश करोगे? बी पे एक भी यूटिल नहीं आई है उनकी। बी पे यूटिल नहीं आई है। आया शॉट आया। स्मोक कर दिया। फ्लैश करोगे? ये शॉट स्मोक के थ्रू। मेरे पास नहीं है। गंदा स्मोक है। तेरे पास है बे। मैं पीछे दे रहा हूँ डाल दिया। ठीक है ये शॉट है। नॉट केयर लॉन्ग पुश। लॉन्ग पुश क्या करो यार? एग्जीक्यूट कैन करना वॉच फ्रॉम LT आई मेड। एवेंगर दे दो भाई। एवेंगर कर रहे हो ले। वो डाल रहा है। मैं सिटी डालता हूं फिर। क्रॉसिंग कौन डाल रहा है? ठीक क्रॉसिंग। यू डू क्रॉसिंग गाइस। उन्होंने मिड स्मोक करा है। चलो लेट्स गो 3 2 1। फ्लैश भी तेरे पास है डाइस। फ्लैश कर रहा हूं। सिटी कूद रहा हूं मैं। एक सिटी राइट साइड। स्मोक के पीछे। लॉन्ग एक लॉन्ग है। लॉन्ग डेड। सिटी C4 ड्रॉप। शॉट प्लांट। अच्छा C4 प्लांट। नहीं ठीक। फिर से पुश लेंगे, केयर करना। पुश केयर। शॉट है। नाइस। वरना मत। अरे नाइस। लेफ्ट साइड। प्लांट कौन सा है? तेरा प्लांट नहीं है। लेफ्ट में है। अच्छा आ रहा है वो आयरन। अभी नहीं कर सकता वो। कर सकता है डिफ्यूज। लेफ्ट कर रहा है। नहीं कर सकता, मैंने मॉली डाल रखी थी। नहीं वो भी बाजू में था बोले। मॉली कितना ही फैल जाएगी। मॉली खत्म हो गया ना अब तो। हाँ नहीं नो आवाज आ रही है। ड्रॉप देना। बच गया। एक ड्रॉप डाला मैंने।
वो गधा पता नहीं वहाँ क्यों गया था पूरा। वही तो समझ नहीं आया वो। अरे लॉन्ग गया था। फ्लैश दो के लॉन्ग मुझे। हाँ मैं देता हूँ, मेरे पास दो डोर वाला दूँ, कार वाला दूँ या कौन सा दूँ? ऐसी नहीं चल लॉन्ग फ्लैश दो। पुशिंग LT आई थिंक गाइस। ये कौन सा फ्लैश डाला भाई? लॉन्ग आए बेटा, एक लॉन्ग यार चूतिया पाए मैं। I'm inside B side. I'm inside B side. I'm inside छोड़ B side. दो बी साइड चले जाओ। One could be tunnel. टनल हो सकता है, एक बिग बॉक्स हो सकता है B साइड पे। मैं डोर के पास हूँ। We have to do whatever we want. We have to do फ्लैश fast. करना नहीं आता हमारी टीम। आ जाओ, भाग के आ जाओ। टनल के बस B पे कोई नहीं है। नाइस शॉट रे। एक और LT आ रहा है भाई। स्मोक करा डोर रुको। एक और LT आ रहा है। अरे आ गया LT। आउट डोर एक डोर स्मोक स्पैमिंग नहीं। दो बाहर है। कितने जिंदा है? एक और दोनों बाहर गया? शायद नो आइडिया। वाचिंग विंडो है, एक तो है। एक आया टनल। यार टनल देखो सम। टनल विंडो एक टनल देख रहा। हील मी। नो किट। नाइस। अरे डाइस क्या खेलता है यार। गुड राउंड। I was at 8 HP. बट सैम का शॉट भी अच्छा था काफी। ड्रॉप दे दो डाइस। एक ड्रॉप मुझे नहीं छोड़ो। Now they can buy. दे सकता हूँ, एक के दे सकता हूँ। अरे डाइस दे सकता है ना, ले लेना। मैं निकालूं क्या एक बार? लेता हूँ। आजा लॉन्ग लेते हैं। मैं LT हूँ लर्क। फ्लैशेस दे दो लॉन्ग। बहुत फ्लैशेस थोड़ा ज्यादा डालो रे। No need to take fast. छोड़ दे स्टैंड, छोड़ दे। तीन बंदे मैंने सब दे दिए। सुनो फमास है एक बी पे। Scouter mid. फमास है एक ही बी पे, बी बना सकते हैं हम। ठीक है बी आ जाओ। लॉन्ग एक पुश शॉट है ना? लॉन्ग पुश मार कर। लॉन्ग पुश रहेगा 100%। ये शॉट देख रहा हूँ मैं। बोले मैं बी पुश कर रहा हूँ। एक टनल पुश किया ना। हाँ बी स्मोक आया। वो प्लेटफॉर्म है या वहाँ है कहीं? मुझे फ्लैश और स्मोक्स चाहिए होंगे। मेरे पास है सब कुछ है, मैं पूरी लूट ले। छोड़ दे स्टैंड, आजा भाग के आजा। बी आ जाओ। एक है कहाँ तेरी? ये रही। बी दो मिलेंगे लेकिन दिक्कत वो है। नहीं वो डोर पे ही है, स्काउटर है वो। डोर स्मोक आता है? करो। हाँ मेरे को आता है, मैं देता हूँ। चल ठीक है, मैं फ्लैश दूंगा। जल्दी मैं एंट्री करूंगा पहले। जल्दी दे देना तुरंत फिर। मैं दे दूंगा। चल डालो। चलो फ्लैश डाला। Smoke is left. Blind as fuck. I cannot see shit. कुछ नहीं देख रहा हूँ। विंडो वाला विंडो। कार केयर। अरे कार एक और। नहीं तो कितने थे? कार होल्ड करा। हम पूरा HP रे। अरे ये smoke वाले। तू यहाँ, अरे क्या कर रहा है? कोई नहीं बात करो, खेलो। आया क्लोज। दिखा पैर उसका YouTube पे। दिखा हेड 10 सेकंड हो गए। मैं पूरा ब्लाइंड हो गया, मैं गंदा ब्लाइंड हो गया मैं। क्या मैं बोला भी लेफ्ट साइड फ्लैश। हाँ तो मैं तो राइट, मैं तो स्ट्रेट ही जा रहा था। गाइस ये राउंड इको कर लेते हैं। कैसे लगा फिर? इको करना है, फोर्स करना है? नहीं ये फोर्स यार, कैसे इको करेंगे ब्रो? नेक्स्ट राउंड हम किससे खेलें फिर? आओ शॉट चलो। Let's go short. Please calling. रुक जा ले, तेरे पास ही गन है। I can buy some. एक LT कह रहा। आया LT आया। मर जा भेंचो, दो खा गया वो। QT खाया। एक ही पड़ी है, उठा ले सैम पीछे से। Are you coming to trade me, Sam? Yes, wait. What's up, Ola brother? What's up, Zowie? King Fancy, hello. No. You abanga? Ramp पे।
शॉट्स नहीं लग रहे हैं बे मेरे अचानक से। 72 दिया शिटी को यार। ये वाला कर लो फुली को। मैं पूरा इको रख रहा हूँ, ऑफ निकल सकती है ठीक है। ग्लॉक्स में क्या लॉन्ग रीटेक हो जाएगा? ग्लॉक्स पे एक फ्लैश ले ले स्टैंड। मैं ले रहा हूँ उसको, मैं कर रहा हूँ। 4 फ्लैश कर देना तो फिर वही। लॉन्ग रीटेक करेंगे साथ में सब चढ़ के। मेरे कॉल पे फ्लैश दे देना। 2 फ्लैशेस है ये वाला भी। इधर रुको, नेड आएंगे तो सब मर जाओगे। इधर रुको, मिड देख लेना वाला। देखो जिगल कर। अब आ जाओ डाला। राइट साइड नाइस वन। हेड आर्मर नहीं था क्या आयरन मैन के पास? नहीं था। अरे राउंड निकल गया। ऑफ है अपने पास? ड्रॉप नहीं है मेरे पास है ऑफ। ड्रॉप वाले सुन ना, मैं मेरा स्पॉन नहीं है। टाइम तेरा स्पॉन है। लॉन्ग का पिक है। लॉन्ग का पिक कर। उसको एक ही फ्लैश देना, ज्यादा यूटिल्स बर्बाद मत करना। मेरे पास यूटिलिटी नहीं है। एलटी क्या ना राइट वो। हां मैं कर रहा हूं। अटैक देम। गिव मी द असिस्ट। एलटी नहीं मेरे को कोई दिखा तो नहीं वैसे एलटी आते हुए। अबे नेड क्या मेरे सामने दिखेगा कैसे? एलटी लगाया लोग, मैंने शॉट लगा रखा। वाचिंग एलटी लगा रखा है ना अभी भी। मैं जाऊं उसको ऊपर से मारूं? मारते हैं, साथ में मारते हैं ना। अरे सुनो ना, लॉन्ग एक बिल्कुल इधर है, कुछ चिपक के है दीवार से। लॉन्ग देख बस। मैं नेड करके आया था बे अभी। वे कहां गया? स्मोक रखा था क्या डोर? वॉको बॉय होल्डिंग लॉन्ग अलोन। वापस चला गया। या वहीं पे होल्ड करके लास्ट राउंड किया था उसने। मेरा शॉट मार्क करना एक बार पे। हां ये शॉट मार्क करो मेरा। मैं मार्क कर रहा हूं। मिड डॉल लेता हूं मैं। यूट्यूब फ्लैश है? किसी का फ्लैश है एलटी वाले का? नहीं फ्लैश। आगे तो कुछ नहीं है। शॉट नहीं, शॉट के लिए फ्लैश चाहिए था। देन नो योर शॉट। ये शॉट एग्जीक्यूट करोगे क्या करोगे? वी कैन टेक वगोबा लॉन्ग रे, मतलब वो चिपक के खड़ा है। मिड वाला शॉट गया। मिड टू भी करे? मिड टू भी कर लो, अभी कर लो। हां स्मोक तेरे पास है राइस। आई एम डूइंग। मैं कर रहा हूं। करो मैं एलटी से आ रहा हूं टायर्स का। बात क्या है सर? फाइट विद मी। सिटी एक हां एक है। रुक जा। केयर बूस्ट। रुक रहे। क्लोज लेफ्ट। छेद दिया। स्मोक से निकला एक। लेफ्ट साइड। ट्रेड ही नहीं हुआ भाई निंजा। मैं ट्रेड नहीं कर पाया उसको। अरे वागोबा कोई लॉन्ग लेना था यार, वो अकेला था। तू हैक बैक वॉल कर रहा है क्या? तेरे को कैसे मालूम चल रहा है सब? आवाज आ गई थी ना उधर। वागोबा के वागोबा ही होगा वो, और कौन लॉन्ग जो आया है। अच्छा लॉन्ग वॉन्ग कहीं एक लेना पड़ेगा बे फास्ट। ट्राइंग टू किल। लॉन्ग के बिना गेम नहीं बन पा रहा है। फक मैन। लॉन्ग में क्रॉस में डाल सकता हूं, कुछ निकलना पड़ेगा। करो स्टैंड को फ्लैशेस दो। वी शुड रीटेक लॉन्ग इन माय ओपिनियन। या रीटेक कर लो, छोड़ो सही कह रहे। ये शॉट लो, रीटेक कर लो। एक्सबॉक्स दे दो। 2 क्रॉस। मैं स्टैंड का ट्रेड लूंगा। आ जाओ ये शॉट, आ जाओ मेरे साथ कोई। बी पे कुछ नहीं स्मोक वॉक किया है। दे टेकिंग लॉन्ग। ऑपर होगा वो। बिकॉज़ 2 गाइस क्रॉस्ड ऑपर। फ्लैश दे रहा हूं शॉट का। विल गिव यू कार्ड फ्लैश। फ्लैश दे शॉट। फ्लैशिंग नाउ। ये शॉट है अपने पास। केयर 4 है। नहीं ले रहा हूं उन्होंने शायद। रीटेक हुआ लॉन्ग मिल गया। ए स्प्लिट है, पूरा ए स्प्लिट कर रहा है। पिट है का। ठीक है ये शॉट फ्लैश कर रहा हूं। हेलो आई वाज लाइक आई सॉ 2 गाइस क्रॉसिंग सो ए शॉट ही लॉन्ग दोनों है अपने पास। तो फिर तो अपना ए शॉट एग्जीक्यूट। ए शॉट एग्जीक्यूट कर लो। कम क्विकली डू ए वेंगर सम। डू ए वेंगर। I'm throwing smoke. Smoking. नाइस वन लॉन्ग है। फ्लैश दो ऊपर से कोई। Flashbang. ऊपर मार। किल हिम। कार ऊपर। लॉन्ग ऊपर। बड़ा लॉन्ग कर रहा है मरा। घुस। अरे यार अरे राम। भाई क्या हुआ बे ये राउंड? कैसे जा रहे हो तुम लोग? शिट मैन। मतलब क्या एक्सपेक्ट करके जा रहे थे? सीरियसली मतलब रैंप और घुस से मार गया भाई 3।
What happened? Who disconnected? I was disconnected. I was like Sam भाई ये क्या भाई ट्रेड ही नहीं हुआ। मैं मिड लगा रहा हूँ हाँ। 3 मार रहा है भाई आयरन मैन, पूरा राउंड निकाल लिया। ये अपन जीत गए थे, उसने अकेला बोला कल जीतना, आज नहीं। नहीं जीतेंगे क्यों नहीं। एक टैग हुआ बी पे एक टैग है। गाइस बी मैं नहीं गया हूं हां ये राउंड। Then I will flash. You just go out, okay? Wait. I know. Xbox स्मोक किया क्या गाइस? हां डाला है। Tick. ओ भाई Pushing. मिड टू बी देखते हैं जो मिड क्लोज है। नहीं राउंड में एक सीटी है एक बी वाला टैग है एक। नाइस वन मर गया। तू देख रहा है ना विंडो? एक डोर एक। मैं प्लेटफॉर्म लगाता हूँ। विंडो। अरे यार ओले क्या खेले ये हम? हाँ मैं प्लेटफॉर्म ही लगा रहा था यार। दोनों दिखे मैन इतना खराब खेल रहे ना। क्या खेले भाई ये राउंड समझा ही नहीं। Who is pausing man? रेवन लो था यार 54। फक मैंने क्या खेले वे? मेरे को लगा तू पूरा लगा के रखा है कोई आया नहीं है। नहीं मारा ना मैंने एक दूसरा ट्रेड लेने आ रहा था। मुझे पता नहीं था तू हाइड किया है वहां पे। नहीं हाइड नहीं। And you give me card flash. Okay. Raven push long last round. अच्छा है अपना निकालो एक राउंड निकालो बस। तू लॉन्ग ले रहा है? माचुदा बीलर दिलवा स्टैंड को लॉन्ग दिलवा। Yeah, he knows, right? You guys are giving that flash. Easy for him. हाँ उसको पता है। उसको पता है ना वो फ्लैश देके लेट आते हो तो वो पहले से नाप लिया वहाँ पे। फैन तेरे को अगर It's a win-win for him. I mean, if you even spot him, you cannot kill him because there is a molly in front of him. अगर सैम फ्लैश आउट है ना तो तेरे को डोर पीक करके रखना पड़ेगा। तेरे को ये भी तो देखना है कोई लेफ्ट क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं वो तो मैं देख ही रहा था, एकदम से आया और उसने मतलब मेरे को देख के सैम का ट्रेड लिया डायरेक्ट। तो तेरे को किल नहीं मिला फिर उसका? अरे डोर के थ्रू दिया ना उसने मेरे को, मतलब मैंने उसको डोर के थ्रू दिया, उसने मेरे को डोर के थ्रू दिया। मैंने उसको कितना 54 दिया मैंने उसको 2 हिट में। कोई बात नहीं, लॉन्ग ले फास्ट ले लो लॉन्ग। कॉर्नर स्मोक दे दो बोले। कॉर्नर स्मोक तो अच्छा ठीक है। और तो कोई देगा नहीं ना। मिड का मैं देखता हूं जंप स्पॉट वगैरह जो भी। वो स्मोक वहीं पर ही डाल। अच्छा चलते हैं। फ्लैश है सैम दो। One flash. किसके लिए कहाँ के लिए चाहिए? लॉन्ग। यहाँ पर 2 फ्लैश हैं। ले एक और फ्लैश ले पीछे। ये लो एक और दिया। पीछे घूम भाई। हाँ लो। चाहिए तो ले लो भाई। यूटी ले लो ना आप। Stretch, you can do it. कुछ फायदा नहीं हो रहा है एक्चुअली यूटी लर का पता है? नहीं ए साइड जाएंगे ना आपकी बार फिर कम आएगा। मतलब मैं यूटी ले लूं बोल रहा है। पूरा सेफ हो जाओ आप चलेगा। ठीक है मैं वही हो रहा हूँ लेकिन आफ्टर प्लांट खेल दो छोड़ो। वैसे भी 4 हम मर गए तो क्या ही करोगे। आफ्टर प्लांट खेल लो हम लॉन्ग साइड चले जाएंगे। और एक यूटिल लेगा क्या नहीं है तेरे पास? कितने फ्लैश हैं? इधर सब पड़े 2 लॉन्ग फ्लैश ड्रॉप कर रखे इसने। यहाँ पे 2 फ्लैश पड़े हैं। यहाँ पर नहीं। यहाँ पर भी 2 फ्लैश हैं, एक स्मोक और डिकॉय है। ठीक है छोड़ चलो। क्या चाहिए भाई इनको? 17-15 पे कौन पॉज करता था फिर भाई? देखो ना कसम से मैं मुझे तो बड़ी गुस्सा आ रहा है यार। हराम जादे लोग। अरे पढ़ना भी तो भूल जाता हूँ भाई। पेपर है कल सुबह। इजी यार कल पेपर है? सुबह 8 बजे पेपर है भाई। ख्याल खेल रहा हूँ मैं 2:30 बज रहे हैं। What the fuck? फक भाई थोड़ा इम्पोर्टेंट पेपर है। आता भी नहीं मेरे को कुछ। इनको शायद पता भी हो सकता है लॉन्ग है कि बहुत लेट पॉज किया इन्होंने। हाँ तेरा पूरा स्ट्राइड देख के कर सकते हो। है भी वैसे ही ये लो। क्या हाँ देख LT आया। नहीं आया। LT यूटी पुश। हाँ लॉन्ग फ्लैश करता फ्लैश डाला मैंने।
अरे लॉन्ग मिड डैश नाइस साइड डिफॉल्ट एक शॉट है शॉट आ रहा हूं शॉट आ रहा हूं केयर लॉन्ग समवन टैग्ड हेवीली टैग्ड ये शॉट डेड गुड राउंड शॉट में हूं लॉन्ग कह रहा लॉन्ग ऑपर में भी नाइस अच्छा ये लोग वो किए थे बे यूटी और एलटी पुश ये राउंड में टनल यूज कर रहे थे। दो लोग यूटी आए थे और एक टनल आया था ऐसा था। चलो सेम खेलते हैं अपन जो खेल रहे थे बट सैम व्हाट डू यू वांट टू डू? I should boost. I will try to kill high mid or LT. Okay, I'll boost. मेरे को तो क्यों फील आ रही कि वो बी रश करने वाले हैं। चल मैं चल रहा था मॉली डाल दे। Smoke. Throwing flashbang. Marking LT. They smoke this. बड़ा था Night. रेवन एक और टनल है नाइस वन मिड जा रहा हूं I'm just pushing. नाइस अच्छा नाइस वन रेस्ट टाइम Can be near smoke. एक मिड डोर एक पता लास्ट वन और नहीं क्या मैं वो मिड वाले को मार रहा था। You're watching high mid, right? हां मैं वॉच कर रहा हूं यूटी हो सकता है हां ऊपर हो I'm holding LT. ए लॉन्ग क्रॉस कर रहा है मुझे लग रहा था क्रॉसिंग देख रहा है कोई? हां मैं लगा रखा किसी को ऑफ चाहिए क्या मतलब नहीं Watching your ramp up. क्रॉस लगा रखा कार पे मैंने लगा रखा ना बस हां सैम हाई मिड लगा हां यहीं पे आ गया कल बेटा जंप बम कल करना जंप कर रहा है बी ऑफ लेके आया था रेवन मार्क का सब पूरा अंदर नहीं वो अच्छा था वो उसका लॉन्ग चलना है क्या गाइस? पागलों की तरफ चलते हैं लॉन्ग सुनो ना 4 लोग लॉन्ग लेना है क्या? हां ले लो हां चलो मैं मिड पे स्मोक करके आ रहा हूं ठीक है वो लेके ले सम डू पैचेस कुछ सुसाइड दिखा नहीं ये शॉट आ नहीं सकते मैंने मॉली डाली है हेवी लॉन्ग एक आउट है ब्लू विन एक है वन ब्लू विन Can flash one more. Pushing behind. चले जाओ छोड़ दो एक शॉट टैग है Holding a shot. एक बंदा रुक गया Someone run B. Yeah, I'm going. मिड डेड है Deploying flashbang. हाई मिड एक है राइट साइड Do you have a flash Sam? No. Okay. ऊपर है वो एक एक ए लॉन्ग आउट सम मार्क ए लॉन्ग कैन यू Marking. He expecting me. Correct. वापस गया went back बी केयर नाइस Open not dead. हां ऊपर जिंदा है अभी भी मैं पुश करूं क्या? Might try to save. नहीं आएगा वो ए लॉन्ग ऊपर We have money. आउटसाइड ए लॉन्ग Around. मैं बी छोड़ दूं क्या? नहीं शॉट आया Holding shot. मिड पे मत मरना मैं तू मरा तो साइड खुल जाएगा तो हाइड रह यूटी देख Is coming. He can अबे flash. बेंचो what the fuck man नाइस शॉट है रे राउंड है रे टैग था यार ये बाप रे बाप ऐसे 7 सेकंड में आके भाई सबके सब जले वो मॉली से 50 मेरे को लगा मेरे को ही निकल जाना था टेक शॉट बूस्ट डोंट टेक लॉन्ग ले हां नहीं सो गया हूं चलो शॉट करते हैं शॉट ले लो मेरे को पता नहीं क्यों बी रश लग रहा है दो बी के अंदर खेलो जा रहा हूं मैं ये शॉट नहीं देख रहा मैं लॉन्ग नहीं लिया उन लोग ने शॉट किया Shot dead. मिड फ्लैश है वन एक्सबॉक्स ओले मैं पूरा हाइड हूं ठीक है तुम अरे ऐसा हाइड मत तो Yeah, marking left. मिड कोई नहीं दिख रहा है ना
एक स्काउटर है टनल। ऐसा मत हिल। Scouter है Go back Sam, flash for me when I tell you. Okay. Don't go long. A shot flash कर Mid दोगे flash भाई? है। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। Mid एक। मैं एक मॉली कर दिया, डाइस पीछे आ जा। Mid to be nice take on। ये तो ज़फर भाई। B हो गया। एक एचडी है। Aim close। लास्ट साइड है। ऑपर हो सकता है वो। नहीं स्काउटर। विंडो देख रहा हूँ मैं। अरे ऑपर है, ले लिया। Coming counter. विंडो ऊपर। एडवेंचर। Nice try, good game। ओ भाई इसने सुना क्यों नहीं रेवन इसको? अरे बह रहा है मादर। रियली नो। सब बह रहे हैं यहाँ पे। डिफॉल्ट्स लग रहा है सीखे नहीं है ठीक से। थैंक्स फॉर कैरी। अरे नाइस प्ले यार। इस समय अलग काम आ रहा है। भाई दूसरा वाला भी मारना था यार मुझे। वो मार देता था यार, ग्रेट ऑफ यार। भाई मैं बनाना भाई मेरे को कोई कुछ नहीं मिलेगा जानता। कैल पे मैच यार। अब नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा भाई। मैं पता है कितनी चैन से खेला हूँ ना, मेरे को पता है। गाली नहीं दी करके तुझे हमने। नहीं भाई, राइडर होता ना अभी मैं 50 गालियां खा चुका होता और मैं कुछ कर भी नहीं होता। जैपर सैम और चले गए हो। टाइस अच्छा वो नहीं खेलेंगे। टाइस का तो पेपर है, कल वो नहीं आएगा। एक मिनट आया मैं। पेपर है कल इसलिए न्यू टाइम बॉक्स क्या रे मेरा कि गेम ओ भाई डाइस का खेला यार। कसम से भाई। नाइस प्ले यार। एक इनॉर्बिटी भारी पड़ गया। हाँ तुम्हें भारी पड़ी है। दो किंग पिन बट भारी पड़ गए। मेरे को बहुत गंदे शॉट मारे यार, मेरे मजे आ गए। काल हो गया बेटा काल। लॉन्ग पे जो होल्ड करा था ना डाइस ने, सही में बहुत अच्छा होल्ड था। हमने कब का हम जीत जाते, वो जो 3-4 वो आयरन मैन बहुत परेशान कर दिया भाई। बहुत गंदा वो किल ले लिया। वो राउंड सबसे सैड हुआ था जिसमें हमने घूस ही नहीं चेक किया यार। वही ना। हाँ मेरे को तो और उससे ज्यादा टिल्ट था मैं वो राउंड पे हो गया भाई। कौन सा मतलब हम दोनों का कॉम्स इतना खराब था बोले वो राउंड पे, वो जो 2v3 था। नहीं कुछ पता ही अरे नहीं था हमें क्या नहीं करना मैंने है। कॉल दी, तूने सुना नहीं। मैंने इसको मारा, फिर मैंने बोला एक डोर क्लोज है, फिर मैं पीछे हट रहा था, तब तक वो टनल वाला भी आ चुका था। साला तो म्यूट कर दिया होगा। नहीं म्यूट नहीं किया। स्मोक नहीं था ना, स्मोक चला गया था शायद डोर का, कुछ तो हुआ था। हाँ मैं स्मोक खत्म हो गया था। नहीं मैंने विंडो पे लगा दिया था, विंडो वाला मरा नहीं मेरे से, उसने मार दिया मुझे। नहीं डोर पे स्मोक ही नहीं करा था, मिट्टू भी आए थे आप लोग। डोर स्मोक ही नहीं था। हाँ मिट्टू भी आया था करेक्ट। आपने बोला डोर क्लोज है, जैपर डोर देखने लगे, उतने में यूटी वाला आ गया और विंडो से आ गया डोर वाला। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना। अगर डोर स्मोक्ड होता तो वो राउंड अपना था। हाँ मैं दोबारा रिपिक की सोच रहा था, फिर मैंने सोचा एडवांटेज ना मिल जाए इसलिए मैंने पिक नहीं किया थी। मैं मार देता शायद उसका। और मैं तो श्योर था कि वो आ रहा है साला टनल वाले को भी लकी वो तो मैं श्योर था 100%। अरे मैं टनल वाले के लिए ही जा रहा था रिपोजिशन करके, मैं प्लेटफॉर्म लगा रहा हूँ कहाँ तब तक वो इसीलिए फेंका था क्योंकि वो मिड पुश किया था ना, लॉन्ग पुश किया था सारे राउंड में। लेकिन टनल वाले को अच्छा लकी शॉट मिल गया आपके ऊपर, मस्त। हाँ अगर टनल वाला जैपर को नहीं मार पाता तो शायद राउंड निकल जाता। मैं दोनों में वो ऐसे फंस गया था कि टनल मारू वहां लगाऊं, वो विंडो वाला भी सीधा घुस गया भाई, देखा कि मैं वहीं पर ही था करके। हे ओले आई एम बैक, कांग्रेस ऑन लेवल 10, यू वर ऑन क्या जीटी एंड ब्रो व्हाट। अच्छा लगा खेल के। लेवल 10 तो कब के बन गया यार। ये D2 बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा खेला। काफी भारी मैप पे भाई। तो ओपोनेंट बोलते कि भाई इनको डिफॉल्ट करना नहीं आता। कौन बोल रहा था? अरे भाई यार एमएम प्लेयर लोग बोल रहे थे जो अपने करियर एमएम पे बिताए बहुत ज्यादा। Raven is typing. कुछ तो लिख रहा है भाई वो। तेरे स्ट्रीम पे होंगे ना लिखने तो भाई, इनको गंद करना है तो गंद ही होने दो। चलो
कभी कभी अच्छी ओपनिंग कर लेता हूँ मैं भी। You are an op. तंबाकू वाले ने भी कुछ नहीं लिखा। मैं सोच रहा हूँ ऑपर ही बन जाता हूँ वापस। तंबाकू वाले ने तंबाकू वाला वो पूरा गेमिंग का टिल्ट कर दिया होगा, मुंह नहीं खोला होगा। तंबाकू वाला सही में कुछ नहीं बोला। कुछ बोल दे, अरे लॉन्ग ऐसा बोल दे और पूरा पूरा पिचकारी स्क्रीन पे गिर जाए। स्क्रीन पूरा चुद गया। स्क्रीन पूरा वाइट रेड। बताओ पिच ए लॉन्ग पिच। इतना बड़ा क्रॉसर दिख ही नहीं रहा क्रॉसर गायब। लॉल अरे वो क्या कर रहे हो, अरे यहाँ पे क्या कर रहे हो, बोर्ड हो गए हो, ऐसा बात करता है। तंबाकू गुटखा वॉरियर। आज तो रेवन को देख के बस्टर आया ही नहीं भाई खेलने। क्यों? बस्टर आए कहाँ खेल रहा है आज रेवन सुबह से खेल रहा है ना। बस्टर ने प्लेज ले रखा है क्या? शेडी चिल मैन, दे गिव देयर बेस्ट एंड वन। अरे शेडी, अरे उधर कोई स्ट्रीम नहीं कर रहा था क्या? नहीं यार, आयरन मैन कर ही नहीं रहा था, मैंने उसको बोला था। और यार आयरन स्ट्रीम करता तो अच्छा लगता। वो जानबूझ के लिखा थे कि हमें हमने अपना बेस्ट दिया इतना तभी जीत पाए ये। नहीं बेस्ट कहाँ दिया यार भाई, मैं 2 दिन से तो लैपटॉप से खेल रहा हूँ मैं। स्पिरिट जीत गई, व्हाट द फक। भाई मैंने चूज किया था भाई स्पिरिट को। आज 2 मैच है, आज 4 मैच है। 2 मैच भाई, कल 2 आज 2। ओके लिख दो क्या? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मोर ऐसा कुछ लिख दो। डिफॉल्ट सही से करना चाहिए। नहीं छोड़ मत लिख यार डाइस। नहीं लिखूंगा ना। बोल के डिफॉल्ट थोड़ा डिफॉल्ट पे वर्क करो ऐसा। अरे कंधे में दर्द हो गया, 42 मारा है भाई, कुछ तो लिख। भाई रेवन डाइस टाइपिंग चालू हो गया डाइस। मैं जा रहा हूँ, मैं चालू हो गया। कितने ही हरामी है डाइस, बट जो भी उसके आते लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है यार कसम से। नहीं यार इस बार तो डाइस ने कुछ किया ही नहीं था। नहीं डाइस का कुछ अरे इस बार तो मैंने कुछ करा। अबे रेवन रेवन की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ यार वही तो। हाँ बे ये लोग सब क्या है, कुछ नहीं हो रहा था, सब चिल खेल एकदम रहे। सही से बिहेव कर रहे थे, अचानक से पागल हो जाते हैं। रेवन भी तो डिस्कॉर्ड पे आया था, हम लोग बात करके खेले भी थे मैच वैच, बातचीत भी सही चल। रेवन के साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेन है कि वो इसके वो चल रही है, इसका प्रॉब्लम हो रहा है, इसको दिक्कत हो रही है। रेवन भी वैसे कुछ बोलता नहीं है ऐसा तो। हाँ वो कुछ नहीं बोलता। उसको देख के लोग मेरे को लग रहा है एक्साइटेड हो जाते हैं ज्यादा। जो एक्साइटेड हो जाते हैं सर आए, सर को इम्प्रेस करने के लिए कुछ कर लेते हैं, चलो ऐसा। स्टैंड भी मस्त खेला यार आज तो, जो राउंड मारा था उसने वो 2 शॉट तो वो ये शॉट्स है वो अच्छा मार गया भाई। वो कितना ओपन में था, डर मेरे खड़ा हुआ है भाई सच में। स्टैन भाई डाइस, अबे स्टैन सुन ना, मैं एक राउंड स्टैन के साथ खेल रहा था, ठीक है। स्टैन एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स जंप कर रहा था, ठीक है। मेरे को लग रहा था एनी टाइम आएगा रेवन प्री मारेगा इसको बॉक्स पे। अबे सोच डाइस से तो छुपा रहता है, उसको मार दिया था उसने। वो छोड़, तू ये सोच स्टैन का अच्छा परफॉर्मेंस था तो सोच ले तू वर्ष कैसे खेलता होगा हमारे साथ। हो तू तो खेला नहीं था सीधा भी ढंग से। मैंने कहा स्टैन का को खेल के आया था लास्ट गेम। नहीं वही मैं कह स्टैन के साथ भट्टी को खेल के आए थे भाई। वही तो मैं कह रहा स्टैन का तो अच्छा परफॉर्मेंस था ये। बहाने बनाता है रामजादा, क्या सेंसिटिविटी बदली है मैंने। वो पड़ेगा। मैं 2 दिन से लैपटॉप में खेल रहा हूँ भाई, 120 हर्ट्ज लैपटॉप। अभी तूने लैपटॉप में खेल रहे हो क्या? हाँ क्यों? क्या 120 हर्ट्ज लैपटॉप भाई? क्या बात करते हैं भाई, एक्चुअली हाँ भाई मॉनिटर, मैंने नया मॉनिटर मंगाया है, BenQ 2546। वो कितना डाइस खरीद ले, ओनली 26,000। कौन सा मॉनिटर? कहाँ पे? Amazon हाँ कौन सा वाला? ऑफर चल रहा है। यस आफ्टर वो जो कार्ड के बाद कोई भी कार्ड यूज कर ले, कोई भी कार्ड, बहुत सारे कार्ड पे ऑफर है। अरे बाप रे, ये तो अच्छा बताया यार आपने। कौन सा मॉनिटर? 240 हर्ट्ज? हाँ 2546 सेम एज योर्स। अच्छा मेरा वाला आपने के लिया नॉर्मल लिया क्या?
के लिया है या नॉर्मल लिया? नॉर्मल वे के बहुत महंगा है भाई, के जरूरत नहीं बजट है ना का। के की कुछ। मैं क्या ही करूँ के ऐसा का? डिफरेंस नहीं है बे ऐसा कौन कुछ। सा जरूरत भी होगी तो मैं खेल के वहाँ पे के में के कर दूंगा। के बाद कौन सा हमें वहां जाना है वेजर? ये तो वैसे भी बहुत सस्ता हो गया 28,000। कल के मैच में है तू? कल की टूर्नी हाँ? में तू है? कल क्या है? कल ये कैल वाला जो टूर्नी चल रहा है तूने कल ही है जिसका क्या भेज ये? कल परसों है, सॉरी परसों 21 मतलब हाँ परसों। परसों नहीं कल रात, परसों रात को। हाँ परसों रात को है ना। हाँ हाँ हूँ। मैं इसीलिए आऊंगा सीधा परसों खेलने। मस्त 24 यार जबर भाई, ये 24 आऊंगा मैं, 23 ओके। गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस, कम ऑन शेयर भी कर दो। मैं परसों तुम लोग ब्रोकन खेलेगा तुम्हारे से परसों तो। कौन? मैं खुद नहीं खेल रहा हूँ। ऐसा मत कह यार, परसों आ हाँ जाना। भाई, अबे मैं मेरे पास नहीं है, मैं कैसे खेलूं बता? अरे तो 20 में ही खेल कहाँ ले से? यार, आज भी तो मार ही रहा है। अबे भाई वो 120 भी नहीं है, वो मैं जो 75 हर्ज है। अरे थोड़ा कोई इज्जत नहीं। रखने के लिए 27 इंच है। अरे उस मेरा पे तो मैं खेल रहा हूँ। मेरा शो है परसों, मैं फ्री हो गया तो मैं आ नहीं जाऊंगा यार थोड़ा। ओले, ऐसा नहीं यार। परसों सच क्या मैच है? कौन सा टूर्नामेंट है? ये जो कैल का डाला है, कैल वालों ने ऑर्गेनाइज कर रखा जो। अच्छा। सही तो है। नहीं यार, अभी मैं सोच ही लिया था कि आदत इतना सस्ता पड़ेगी में यार तो। एक दूसरे का गेम प्ले थोड़ा, टीम का। तू हाँ ऐसी तो खेलना दिया हमें, तो कम हाँ से कम भाई। टूर्नामेंट में ही खेल हम लेंगे तो साथ। मैं तो सोच रहा था कि कैल में ही कोई बस्टर वस्टर सबके साथ ऐसे ही टीम बनाओ, खेल लो रैंडम। हम लोग ज्यादा उनके साथ खेलते हैं भाई, टीम के साथ कहाँ खेलते हैं हम कभी, कुछ नहीं खेलते। मेरा बड़ा मन था यार, मेरी परसों का टाइमिंग ऐसा अबे फिक्स तू हुआ। बोले तो तेरे बहाने, तेरा हर अरे बार शो, कुछ ना कुछ होता है अरे भाई। शो है बोल तो रहा हूँ, नहीं तो 10:30 बजे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे वो वही शो क्या जिसमें रणबीर कपूर आ रहा है? नहीं नहीं। रणबीर कपूर शो में अबे लोकल मैं भी शो आ है, जाऊंगा देहरादून यार। का, देहरादून का शो है यार। अबे ये बोले तूने कुछ तो पोस्ट डाला था ना, फाइनली गॉट अ हाँ चांस टू एक्चुअली, मीट यू हाँ ऐसा वही करके। वही वही वाला वही हाँ हाँ। तो किसको मीट यू, मतलब उसमें रणबीर कपूर का फोटो लगा था। अरे मुझे लगा उन्होंने, रणबीर कपूर आ रहा है, बोले का नहीं देख नहीं रहे। वो उन्होंने पोस्टर बना रखा ना बॉलीवुड नाइट करके। तो कोई मीट डर, यू फाइनली गॉट अ चांस टू मीट यू किसके लिए लिखा था तो? मैंने नहीं लिखा है, किसी ने तो लिखा है भाई, उसके वो ऊपर पूरा उन्होंने एकदम बड़ा। उन्होंने डाला होगा। अच्छा, तेरे को मीट करने के लिए वो खुश हो रहे हैं? ओ बता दे भाई, भाई, भाई फेमस। देख रहे डाइस? क्या? ओले 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 से अबे मिलेंगे बोल के लोग खुश हो रहे हैं अबे भाई, जो मुझे लोग नहीं मिलेंगे, ऑर्गेनाइजर्स हमें बता दे किसके लिए ऑर्गेनाइजर्स डाला है। खुश हो रहे हैं ओले को हमें देख के। हमें टैग किया था बे, हमने शेयर किया है बस वो। अच्छा मस्त रे। अब कहीं तो वो है यार, फेमस चलता है इतना तो यार लोकल में। हाँ यार आप तो यूट्यूब पे भी फेमस हो, प्रोफेशनल सीएसगो प्लेयर। हाँ भाई, इजी यार फेमस ओले। फेमस डाइस तो खरीद रहा है ना मॉनिटर कि नहीं शायद खरीद रहा है? पापा भाई से इससे पूछना तो पड़ेगा कल इससे सुबह। ज्यादा सस्ता तो मिलेगा भी नहीं तुझे। सही में इससे इतना सस्ता सस्ता तो नहीं नहीं होने मिलेगा। वाला। इतना सस्ता सेल में भी नहीं था, अमेजोन वो वही जो और सेल चल अरे रहा था और उसमें। ऑरेंज भी कह रहे हैं उनको 144 चाहिए एक और लगाने के लिए। ऑरेंज को उनको ये 144 चाहिए? उनको ये बेच दूंगा मैं। बेच दूंगा? बेच बेच दूंगा, दूंगा। अच्छा। बेच दूंगा। आओ यार वैलो, 29,000 है? क्या बोल रहा है? मैंने कहा वैलोरेंट चले क्या? चलना है क्या? चलना है अरे क्या रे? पागल वागल हो क्या? अबे पेपर है नहीं मेरा, मैं यार, नहीं आऊंगा, आप लोग जाओ। नहीं यार बोले सही में मेरे को मजा नहीं आ रहा है खेलने का। 2 दिन से मैं 2 दिन भाई मैं, पता 2 दिन में ऐसा हगा हूं ना जब से खेल रहा हूँ। ओ भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गेम में लगातार हग रहा हूँ मैं। 8 गेम हो गया हगे जा रहा हूँ। और लोग बहनचोद देखते देखते थोड़ी ना, वो तो भरेंगे ना भोसड़ी के, तू कैसे नहीं मार रहा है ये तो गेम है में भाई। आके, लोग तो भर देते हैं सीधे। इसलिए मेरे को मन भी नहीं कर रहा खेलने का। अब मैं आऊंगा ओहो, परसों। मैं भी 17 पाऊंगा, मैं सीधा 30 को, तू आएगा? सीधा 28-30 को। क्या I'll बात be कर alone रहा in है? Kel then. हैं? I'll be alone in Kel. एसजी खेलेंगे यार, सेम ऐसा नहीं है यार। Okay. मैं समझा नहीं, तू कहाँ, तू मतलब कितना कब जा रहा है, तू जा कब रहा है? जा, अरे परसों ही शो है, कहीं जा नहीं रहा परसों हूँ। शो? अच्छा परसों शो है, तो फिर ऐसे क्यों बोल रहा है कि 28 को आऊंगा? अरे कैल नहीं खेलेगा। अच्छा कैल नहीं खेलूंगा, ओके ये बोल रहा है। सीएस ठीक कहाँ है ठीक है। छूटेगा यार। हाँ वही मैं सोचा कि तू कहीं जा रहा है और कैल भी फैम नहीं, के साथ लैपटॉप में खेलेगा। कैल भी नहीं छूटेगा भाई वैसे तो, वो तो बोलने की बात हुई बस। देखते हैं कल से। सैम आजकल रूटीन सही कर दिया, अब सैम के साथ ही खेलना पड़े।
रूटीन सही कर दिया। सैम अबे ये सही है। जो मैच कर दिया वो रूटीन सही हो जाता है। अबे नहीं सैम कितने बजे सैम कितने बजे सो रहा है बता तो जरा एक बार। सैम कितने बजे सो रहा था? इस वाला रूटीन में सैम 12 बजे दिन में सो रहा है भाई, इसके लिए तो सही है ये। अच्छा फिर तो ठीक है भाई ये। वही तो बोल रहे हो 12 बजे दिन के हिसाब से तो ये ठीक है, बेटर है। बेटर है ये भालू पे उठता भी नहीं है, सीधा 1 बजे उठता है रात को 2-3 मैंने बजे। तेरी तारीफ की है बे, डाइस टिलर यू आर अ गुड प्लेयर, उसको रियलाइज हो माय गया। गॉड अब की नेक्स्ट टाइम से तू उसका फर्स्ट पिक। स्टेडी नहीं बनेगा क्या उसका फर्स्ट पिक अभी? नहीं तेरे को ऑफर आएगा जल्दी अब। तुझे अगर ऑफर आएगा क्या करेगा बे? जाएगा? 32 रिएक्टेड विद पागल हो गया। बहुत अच्छी टीम है मेरी अभी, बहुत बहुत अच्छी टीम है तो सही यार। अरे डाइस डीलर लोग के पास एक रेवन टाइप ऑफर नहीं हाँ रेवन नहीं है ना तुम्हारे पास, ले अधूरी है। अरे ओले को ले लो बे अपनी टीम में ऑफर। ठीक हो रहा भाई। ओले गेमिंग को आप मजाक समझ रहे हो क्या? ओले को तो ऑफर करा गया था। नहीं नहीं मुझे कहाँ ऑफर किया गया था बे? मैंने तो बोला था आपको। जबरदस्ती निको को कर दिया होगा तूने। इतना खतरनाक ऑफर भी नहीं चाहिए। ओके गाइस गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय स्ट्रीम। अच्छी टीम बनेगी लेकिन एक ऑफर तो चाहिए होगा भाई। हम जल्दी बन के बनाए, हम जल्दी मोनेटाइज हो। लेट्स सी, कोई नहीं। गुड नाइट गाइस।